very cheerful good morning to one and all present over here. It's so wonderful to see you all here on this sunny day. Respected Principal Sister Nancy Joseph, Special Instructor Sister Anu, respected resource persons, Manindra Kumar Mishra Sir, Faculty of DAV School, and Navneet Singh Sir, Principal Bal Bharati School, Nogachia, Principal of all Hub School, and all the facilitators joining us. It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to all of you present here on behalf of the Josephite family. I would also like to express our gratitude to our esteemed resource persons, Manindra Kumar Mishra Sir and Navneet Singh Sir, who have accepted our invitation to preside over this in-house training program on life skills. Now I would like to request Girish Sir and Thomas Anthony Sir to do the honors. Today's topic is life skills. It's a form of education that focuses on cultivating personal life, skills such as self-reflection, critical thinking, problem solving, and interpersonal skills. It makes the individual able to improve his knowledge, develop values and views. We are honored to have such a distinguished group of teachers and facilitators joining us. Today's event promises an engaging and enlightening experience for all of us. Let's open our mind and hearts to new ideas as we come together to learn new facts and share knowledge. With these words, I would like to hand over the podium to Manindra Kumar Mishra Sir. Sir. Good morning to all of you. First of all, I am very thankful to Principal Ma'am and my other resource person sir, Navneet sir, and my dear teachers. This is a very auspicious day for us to inculcate the knowledge regarding life skills. Nothing but we know that it is a skill which is very important for our day-to-day life, as we know that there is a time which is changing day by day, and some changes has been occurred and observed by the CBSE. The things which gives us more value, and it is very useful not only for us but for the development of the new skill in the field of education. Also, it has been observed that since a very longer time that the scenario of surroundings is going to be changed in these days. In this way, it will also affect our teaching learning process. Day to day, we are facing new challenges, new problems, and when we are attending parents-teachers meeting, we also face some new type of problems. We know that we all are gathered here to grab some new skills regarding this life skill. As also one more important thing is that the CBSE, in the guidelines of CBSE, it is observed that whatever the changes is going on,
It includes not only in the syllabus, but also it gives a chance in the form of new techniques regarding training. In this training, it is a part of it, and we know that we have some skills, but these things are more important in the corresponding to the CBSE phenomena. Whatever the new changes are there, whatever the new traits, skills are there, that we have to grab. So, before starting the session, I am going throughout these PPTs and some hands-on experience, which is the part of it. So, let us start the setup of this live scale. Thank you. This program is designed on the basis of capacity building program. So many trainings we have attended, but this CBP is a part of, or you can say it is a curriculum of CBSE. Capacity we all have, but the thing is that how it would be inculcated and how it would be given us more benefit. We know that the scenario of children is going to be changed. In very earlier time, the child was only for doing their own work. But as it is changed the system, the child his skill is more faster than the new learning teachers. His mind is observing new things, new ideas, and also doing some different tasks. Either it could be boring or it could be interesting. But the system is that this child, whatever he or she is doing, it could be based on the system of the school management. But nowadays, it has been seen that these type of problems, some new type of systems is not effective for the children. Recent time, you can take the example, some data is there, like in board exams, still the graph of suicide rate is very high in some of the states, some of the schools also. Regarding some challenges are there with respect to the subjects also, like in mathematics, science. In social science, we have observed that the teachers, whatever imparting the knowledge, but the student is not taking much more interest on the particular subject. These are the common problems. In junior section, some other type of problems are there. The student is not giving much more attention in the study. So many problems are there. The list is long lasting. But the situation is that what is the new skill and how we can change the mind of the student to grab these skills. That's why these programs has been designed in such a way that it would be more beneficial for us. Not only for in this training program, but it could be beneficial for long lasting. The ideas what we are going to inculcate, it could be, I think so that it could be beneficial for a longer time. So let us start the session. The program, the aim. The aim is that the primary aim of education is not to enable students to do well in school, but to help them do well in the lives they lead outside school. Actually, this capacity building, it means that how energetic we are, how we can do the task with more efficient. We know that this is a human
system that sometimes we feel tired, sometimes we feel bored, but the some tricks, some techniques, some methodologies are there by which it could be designed in such a way that it could be more beneficial as time we have spent in these fields. We know that this is the part of psychology. So many theories are there, so many methods are there. But the thing is that in a particular scenario, in a particular situation, how it could be utilized, how it could be developed in a particular moment of time. Particularly in a classroom, before entering the class, we have to change the mind also. Like, if whatever we are doing in the classroom for a particular subject or a particular topic, it could be changed nowadays. We have to apply some methods, some skills in different types. The thing is same, the book is same for all the students, but the knowledge, the skill, whatever imparting at the same time, it could be different. On the same time, the methods according to the time it could be changed, and the activities, whatever designed for that, it could also change. We can take the example of, in this respect, blended learning. It is a time for your participation. How many of you know this term, blended learning? Please raise your hand without hesitation. One, any other from teachers, ladies teachers side? Some examples are there. Blended learning, art integrated learning, experiential learning, virtual learning. In these lists, how many you all are aware of it? Please raise your hand. Only one hand is there, and it is for sir. Sir, please explain it. One of the best examples we have seen during the COVID time, this blended learning was very beneficial. Actually, it is a hybrid learning. It is a combination of online along with the offline learning. This is a blended. Thank you, sir. Actually, this term has a broad meaning. The word is blended. It means that not only is a part of the offline and online, but it could be not only gives the ideas. Sir, you want to say something? Blended learning, as far as I am concerned, we see that it is a combination of so many subjects that we go on knowing it and then we try to get it for our practical use. So it will be beneficial not only to teachers but also to the students, and it will be useful in the practical learning basically. Thank you, sir. Sir, you want to say something? Please. Good morning. Regarding branded learning, as far as I concern, branded learning gives a new technique through which we can implement them for their value. And blended learning, I have not so much idea about blended learning. Besides that, if you want to raise any questions, I will give an answer. Thank you, sir. The term blended is nowadays it is very important. Before we have faced the situation of COVID-19, that was the time it was very hard for us in the field of not only education but so many situations are there. It is not only affected the system of education but whole market as well. So I was talking about blended learning. It is a system. It is a type of virtual learning. So many ingredients are there
regarding blended learning. It is a skill which is based on some techniques of skill based, some technical, tactful based, and some design oriented skill. The situation of a particular thing. Suppose I am giving an example of how can you coordinate the skill with, suppose, a teacher who is very good in mathematics and he wants to design a music. Can it be possible? Can it be possible? Raise your hand. If he has skill in music also. It's possible if he is skilled in music also. If he has the talent. Thank you, ma'am. We have learned a theory of Howard Gardner. I think you all are aware of the name, a great scientist. He has given the theory of multiple intelligence. I think you all are aware of it. So many skills are there. Basically, he has given 8 skills. According to him, if you have a skill in mathematics or science, you can design according to your choice. If you are habitual in playing games, or you are a good interest in music field also, dance also, you can coordinate it with. It gives you a new test, new skill. You must try, because a situation is there. The mathematics or science is that type of subject which you can coordinate with some new threads or new subjects. We know that the time is changed. The students don't want only rote learning method. It is outdated. Just lecture method. It is totally outdated versions nowadays. Because no one wants to take interest on that time. Suppose that if I am not giving any type of designs, any type of thinking, it could be also monotonous. So it could be better that your active participation is much more needful. Then it could be more interesting. It will be more interesting. So here the thing is that we should try to cooperate or coordinate the new skills according to it. We should design the way of thinking. It could be different because the mind of a student is diverted at the same time. Then our active style is that how to motivate them, how to engage them on a particular moment of time. Because I have given the example of blended learning. In the same way, a new pattern is there, art integrated learning. The name is very clear, art. And integration is a technique of calculus in math. But in today's time, it is a system. You have to coordinate it with new skills. Suppose you are teaching some theoretical part, but you have to, at the same moment, design some activity. These have some benefit because students, first of all, don't feel bored, and your designing of activity is given some new skill. The hardest part of it that we have to design according to the topic, according to the lesson. That is our primary task. Before entering the classroom, not only we have to maintain the lesson plan. According, just I told you that the time is going to be changed. We have to also change in the part of our lesson plan also. Because life skill, one of the important skill. And our primary task is that before entering the classroom, before starting the particular subject, how it could be correlated to that particular subject. I am not asking a specific particular subject.
whatever you are teaching in the classroom, you must have tried to design your activity, your curriculum in such a way that these 40 minutes, whatever you spend on the classroom, it could be memorable for the student. That is the primary task for us. And the hardest part of it that we have to search in some our technological sites. We could take the part of Google, YouTube's, Wikipedia, Encyclopedia. We have to search it because it is one of the method, one of the skill that it could be correlated to each other. And this part is taken by our Namit sir. Thank you, sir. And first of all, in this morning, as we are having topic life skills, I would like to ask you that what is life? What do you consider what is life? Life is all about anyone? Journey. It's a journey. Yeah. We can say. Life is all about learning. Life is all about learning. Yes. We do consider this also. Anyone else? What about the life? Any philosopher? Because every school has that. A good philosopher who can just happiness. Life is about happiness. It is. Life is about struggle also. We all are struggling? Yes. We all are struggling for happiness sometimes. It happens. But though we see ultimately life is hard sometimes. Sometimes it's hard. It's about the things, how we see the things. You know, sometimes it happens that things we think, like initially those things are not good for us, but gradually it is good. It happens. Sometimes we were in need of something, but it is not with us. We are happy right now. You all can go back and think about it. You are very desperate for that particular things once a while. But right now you are happy without that also. Is it? Yes. Everybody is able to relate this? Yes. Life is about two alphabets. B to D. Birth to death. Literally it is, na? It is about the birth. And it's about, everyone is happy, someone is in between this, ultimately, one C is there. Isn't it? C is there. B to D, a C is there. C is about to choose. C is always about to choose. What you want to choose. Always in our life, we see that whatever the things are happening around us, sometimes we are not happy with that, but people in the worst situation, they are happy with that. Whatever you are having, you are not happy with that, but the person who is not having that is happy with that. Happiness is, everyone is having a different opinion for this word happiness. Someone will get food, it is happiness for him or her. Isn't it? We all are getting food, but we are having other desires. The happiness, everyone is having different definition of that things. People even here begin to say that Ambani and Adani are not happy with their. Yes, they must be having a lot of stress. Yes. But they are having other kind of problems. Everyone seeks like that. He is better than me.
she is better than me. My sister is earning more than me. We compare with others. We do comparison. This is the human nature. Is it? You all are able to relate what I am saying? Yes, yes. So in this between B to D, we are having option to choose. We can choose our happiness in small things. We always think like whatever we are thinking, that अगर ऐसा ही होता तो बहुत अच्छा होता. Isn't it? Like NEP is nowadays very effective when we are coming to these things. Ultimately, we all need to come how to think. We all have to make our students future ready. If just only knowledge is not the thing, only knowledge is not the thing to become successful, is it? Only the knowledge is the thing one can be successful in life. So many things are there in life that the way to see the life, it is very important. If the individual is not happy, you have seen people around you, किसी भी चीज में खुश नहीं रहते. They are not happy with that. Especially the position is like working higher. जो boss होते हैं, they are not happy with that. They always say that no, it could be better. It can be better. But they are also having their way. They want you to somewhere motivate, but they are not able to. It is the way that how you take work from others, isn't it? It is a skill. It's a really skill that how you are taking work from others. It's literally a skill. So in this between B to D, we are going to see the things that what are the important things and how the life skills take part. Life skill, literally I'm telling you, it's about very important thing it is. With the help of this, we'll be able to see the life in a better prospect. We'll move ahead to the session. So life skills are abilities for adaptive and positive behavior that enable individual to deal effectively with the demands and challenges of everyday lives. In everyday life, we are having many problems, isn't it? Daily we are having any kind of problem. Sometimes we are not getting what we are expecting. Sometimes we are not happy with the behavior of others people around us. Sometimes we are not happy in our relationships. But there can be problems. We always seek for I want this, I like this, I don't like this. Maybe the problem is this. But things are not going to happen according to you. You are saying I want this, I don't like this. Isn't it? It happens. You always think it's better to think in the other prospects also. In one prospect, I'm just thinking, I don't like this, I don't want this. In the other prospect, if you think, if I say I, what the other will do? They are thinking about their self. If you are going to see the things from their side, the things will be clear. If you are having this objective in your mind, that people around you are having something different. So that things are going to help you in making the things easy. According to World Health Organization, life skills are ability that facilitate the physical, mental and emotional well-being of an individual. This is according to WHO. Life skills, if we talk about, so whatever the skills are required in life, that can be considered as life skills. Like someone is having good cooking skills, good accounting skills, good teaching skills, that is also a kind of
Life skills. Whatever the person is good and it is related to life, that can be considered as life skills. Someone is good in accounting, someone good is in biology, someone is good in any kind of thing, gardening, harvesting something. That can be considered as a life skills. In this life skills, we can see that it's about social skills, emotional skills, and thinking skills. In the कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. Like what we are having difference in animals and human beings? We are social. Pets are also social in nature. We can't live without talking and interacting. We share with one another. Yes, we share, but they are also having, I think so, a big communication part. वो communicate कर लेते हैं just because of. They also think. You know, I personally believe I'm having one pet. German Shepherd is there with me. And he always know when I get ready for going somewhere. He get to know before that. That means getting ready, definitely he is going somewhere. My pet is going about every day. We can study, sir. Animals are not with this studies and all. They pick up very fast. We hire trainers for even dog trainers are there, horse trainers are there. We do have these kind of trainers are there. They are well trained, we can say. They are not learned, but they are well trained, we can say. But ability they have learned. We have got good Pavlov's theory. Pavlov's theory we have gone through. They are good classical conditioning theory. Yes, it is. Ultimately, what I think is that among animals, no one is there to say, देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है. Maybe in their own language. No, they are not very focused on their future and all. He's graduate or not? They don't. We have a lot of expectations. We are having a lot of expectations. In our society, even attires matters a lot. If someone is not going to have that good attire, the people will start saying, देखिए आपका बच्चा जो है ना, even you people do like this. You'll ask to your parents, देखिए आपका बच्चा ठीक से साफ कपड़े पहन कर नहीं आता. You do. We say each other and we see each other. This is the difference between what I feel is between animals and human beings. वो इसलिए परेशान है कि मेरे बेटे का पैकेज कितने का है. वो अगला परेशान है क्योंकि उसको बताना है आपको कि मेरे बेटे का पैकेज कितना है, इसलिए आपके बेटे का पैकेज वो पूछ रहा है. इसको बताना है कि आपका बेटा पैकेज. It happens. You are seeing. It happens. हाँ जी. Yes. You can say, but ultimately, like we have to feel that we are better. We are supposed to feel this, that we are better. Females are having this kind of attitude. They say that if they want compliment for their sari, they will say, "आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है." Like definitely, the other one will say, "नहीं आपकी बहुत अच्छी लग रही है." Isn't it? ये जानवर वानवर के साथ नहीं होता है. They are not having these kind of complexes. That है ना कि someone will feel inferior and someone will be superior. है ना? They all are having same kind of things. है ना? No lion will say to other one that you are a little bit big, you have good muscles. But in human beings, people are going to say, yeah, you are going to gym continuously. You are working hard. Very good. Your physics is good now. So ultimately, to survive in this society, to prove yourself better, we all need to have skills. Skills about the life. These are the most important things. As I said, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. सोशियोलॉजी का ये बड़ा सोशियोलॉजी में इसी के बारे में बताया जाता है सबसे पहले. आई एम नॉट स्टडीइंग सोशियोलॉजी, बट परिवारों से समाज बनता है. Individuals are having families and that become a society.
in society, we are having norms to survive in the society, we are having norms to live in the society, we are going to feel inferior or superior somewhere. We have to show ourselves somewhere. Isn't it? Etiquette, manners, it matters a lot in the life. How you make people feel, how they are feeling with you. If people are not comfortable with you, so you are not a social animal. You are not a social animal. If people are not happy with you, around you, if you are not having good relationship, I am talking about personal relationship also, I am talking about professional relationship also, you all have seen that people around you are there. They are not good in those things. But somewhere, the thing is this, people are going to bear with that particulars. They do bear. But ultimately, what the things are there in the social skills and in the emotional skills and the thinking skills. Like, we all are supposed to design the things how to think. Thinking process sometimes it's, it's on the sumoto basis. It's go automatically. We are having here, we have heard about science teachers. How many are there science teachers? Raise your hands. हम लोग involuntary और voluntary actions के या involuntary muscles के बारे में बात करते हैं, isn't it? Yes. Some things are under control and some things are not in our control. We do talk many times about these. But usually, in psychology, thinking process is also involuntary. It's not like that where you will go in your thinking. It automatic. It comes continuously. Somewhere sitting in front of me and you are thinking about your personal problems. That I am having train 3:30 around. I have to go. My son is. Many things are there. But, like just with the father, how many of you worry about your family? Raise the hands. I want to see. How many of you worry about your family? All almost. ये कौन सा सवाल है? Everyone is saying like this. ये कौन सा सवाल है? They worry about us. They family also worry about us. है? सवाल गलत है, isn't it? ठीक है, मान लिया सवाल गलत. But instead of worrying about the things, can we care about the family? Care also. But I think so instead of worrying, we should care. Worry कैसे होता है? We care, that is why the worry comes. Worry में positive things आएंगी क्या? नहीं. Worry में positive things आएंगी क्या? Worry का मतलब ये होगा कि my parents are having diabetes, so I feel like diabetes से this can happen. This is worry, isn't it? Isn't it? And care is all about, I just might take my father regular 6 months for the checkups. This is care. This is a thinking. It is involuntary, as you said, sir. It is involuntary. But the thing is, these things we can design. We can. है ना? Instead of just worrying about कि मेरा बेटा फ्यूचर में क्या करेगा, इसकी मैथ्स नहीं अच्छी है, इसकी मैथ्स नहीं अच्छी है, वरी है, क्या करेगा. We can do care instead. Isn't it? Care क्या होगा, कैसे होगा? If one is not good in mathematics, care कैसे कर सकते हैं? हम वरी कर सकते हैं, इंतजार में हाँ. बट केयर कैसे कर सकते हैं अगर किसी का बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है तो? Maths come from practice, I think so. Maths is all about the practice and clearing the concept, isn't it? तो अगर वरी को हम लोग उठाकर थोड़ा सा केयर पे आ जाएंगे ना, तो हमारी थिंकिंग में थोड़ा सा चेंज होगा. Because worry is all about the things negative. Like someone is traveling, so what you will worry about? That he has खाना खाया कि नहीं खाया?
You worry about Or something will happen. something will happen. This is about the worry. But I think so it's a better option. It's about the thinking process. कि हम लोग care करें worry की जगह पे. Isn't it? It's a good thinking skill. है. आप देखिए worry को अपने change करके देखिए care में. थोड़ा सुकून मिलेगा. You feel calm on that period of time. Like somebody worry about I'm not becoming IAS. For becoming IAS, it's a big goal. One is supposed to have, first of all, to reach that particular goal, small objectives. To reach that particular goal, it is important to have step-by-step objectives. Like, let us hear. Isn't it? By getting worried, anyone can become IAS? There is a way. One is supposed to have that particular care about the things, have to achieve the objectives about things. So we'll move ahead in the things, social skills, emotional skills. Emotionally, if someone is weak or emotionally someone is good, what you will consider? Emotionally good आदमी कैसा हो सकता है? Will be a happy person, will lead a healthy life. Sometimes we show that we are happy, but we are not. We can face the challenges more easily. Yeah. Many things are there in that. But ultimately, we are supposed to manage our emotions somehow. Whatever we are feeling, we are not supposed to express every time, isn't it? But it never possible sometimes. Sometimes it is not possible, not never. Sometimes it is not possible that we are thinking something and we want to express something else. It shows, दिख रहा है कि मैडम को अच्छा नहीं लग रहा है. It happens. Anyway, in this prospect, we are not able to pretend actually. हम pretend नहीं कर पाते, है ना? तो ये भी हमारे इमोशंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम इमोशनली कैसे चीजों को हैंडल करें. नेक्स्ट थिंग्स विल कम. Like here are the things which is very important for the life skills: self-awareness, effective communication, problem solving, critical thinking, interpersonal relationship, creative thinking, empathy, decision making, coping with stress, managing emotions. These are the very important life skills. Just we'll move ahead with the things. Here, the life skills are, as we have before talked about the thinking skills, the social skills, and the emotional skills. These are the part. In this, first part that comes is self-awareness. You know, in the interviews, it is a very common question. You all have gone nowadays, you know, IS interviews, many of the IS interviews, very frequently they come to our Facebook and YouTube. Very frequently see these things, that interviews are going on, mock interviews are going on. So mainly, the person is very good with the things where a particular knows that what one is having positive side and what one is having negative side. Isn't it? It will be easy for us to deal with the situation. Suppose any task is given by the principal in your school. We are talking about the school prospect only, and that is about the craft. That is about the art. And you don't have any idea, you are not having any idea about art and craft. Are you able to do that?
you'll be able to do that. This is the things, and somewhere it's talk about the choice, whatever you are having. If you are going to have the option that I am going music and you are going music, it will be easy for you. Always one should understand that what are the ability that particular is having and what the things he or she is good with and what the things he or she is not good with, isn't it? You all are here just because you all are having ability to teach. You are an effective communicator, we can say. A teacher need to have always, teachers are considered good if they are good in elaborating the things. Isn't it? Teachers are always creative. If they are going in the regular method of teaching, they will be not able to transform the things. They are not able to give the things. Nowadays, and in 80s, the teaching was different. Nowadays, students are coming after the Google. They try to find that particular teacher who is coming with the 3D images in you. Isn't it? We all need to update that. If in a condition that many platforms are there continuously, which is like having many kind of videos. They come with that and they ask, when they ask, you get to know that he is seeking for that answer, whatever he is having in mind, isn't it? Some kind of happens, we are teaching and the one question a student is raising. We are saying that particular thing in other words, but he is seeking that whatever he or she has seen in the YouTube video last time. He is seeking for that particular answer. Here the comparison comes. So we all also need to update ourselves in these things, in these prospects. So ultimately we came to this profession, that's teaching by choice or by chance. Isn't it? Many of you are there, I think so. I'm not just saying in the general words. I always ask whenever I interview the teachers, you are by chance teacher or by choice teacher? Don't take it otherwise, people coming after doing BTech and MBA in teaching. What do you think? They are by chance or by choice? By chance. Don't bother about, I'm also MBA. But I did my MBA after my BA. That is the other thing. I was having this hands-on experience in those things also because I worked for, in the initial stages I worked for I was having zeal to learn about these things. That is why I did my MBA. That is the other thing. But continuously, you all have seen that people are doing BTech and directly coming to this profession. I think so they are not self-aware. That what the capability, what the potential, what the ability they are having. They have learned something else, they are teaching something else. And they are saying that I teach all subjects up to 8th class. Isn't it? Maybe you all have seen people around you. One can teach. But it's about the proficiency. That you are good in social studies, one can be good in Hindi, one can be in English, it's about. One teacher continuously start teaching a particular subject, he'll be good in that. It's not like that. It's come from practice. Teaching is like that. One cannot be a good teacher in a day, in a year, in a decade. It needs practice. One will do and become more versed about this. So self-awareness is the thing, ultimately we can say that what the potential a particular is having, how he can just be good in his or her future about those particular skills, whatever is having, a knowledge kind of things one particular is having, how he or she is going to utilize those things in life. It's all about that knowing ourselves, self-awareness. One is knowing him or herself. Self-awareness is the ability to focus on yourself
and how your actions, thought or emotions do or don't align with your internal standards. Self-awareness is recognizing of self, our character, our strength. Strength and weaknesses I am talking about. Everyone is having weaknesses. Somewhere everyone is having weaknesses. Everyone is having strength. But if we are going to analyze about these things, और बच्चों के अंदर भी पता है क्या होता है? What happened? Continuously. Students is not good in particular maths or science, but he is good in drama, dance. We always think like parents are always saying like they'll be, like simply we can say सचिन तेंदुलकर को अगर गाना गाने के लिए कहा जाता तो आज शायद इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं है, isn't it? He was having that particular skills. No one is going to bother about that he's graduate or not. Anyone is knowing that Sachin Tendulkar is graduate or not? No one is going to bother about that because he has just proven himself. Many of the universities are ready to give him or her many kind of PhDs. Yes, they gave honorary doctorate. They gave. Mahendra Singh Dhoni is having many other doctorates. Amitabh Bachchan is having many other doctorates. Many universities are giving them honorary doctorate. So ultimately, what we seek for? We seek for degrees sometimes. Here degree हो जाए, degree is a bit. You have seen people around you, they are BA, but they are not able to define the education properly. Isn't it? That degree will work. They'll seek for, they'll be in the line of seeking jobs. But the person who did that particular thing, ultimately two things are there, knowledge and skill. We are supposed to acquire knowledge and turn those things into skills. हमने BA इसलिए किया था, we all have done, to understand how to teach. But some of them have done, will get job easily after doing BA. Isn't it? So many things are there, differences are there. The four dimensions of self-awareness. Self-awareness, awareness of what others say and think about you. The first dimension of self-awareness is being aware how you impact other people. Awareness of the thoughts and feelings you have about yourself. Awareness of who you really are. Awareness of who you want to become. कभी भी हम लोग सोचते हैं ना कि what someone will do with motivational speakers, what they'll do. They always say, think positive, think positive, think positive. Nothing will happen. But if the things will happen, you'll be happy. Like people who are having 1,000 crore company, they also seek for these things, motivation and all. They always hire a good motivator, a motivational speaker, because they want to do that 30x. They do. And people around us, we think like, what will happen with this? Nothing is going to happen. A word can change the life. Definitely, it happens. When I was working as a teacher, so sometimes the teachers around me were there like that. They say, why you are getting over smart? Always you do whatever the principal say. Say that I don't know how to do. They are still the PRT working there, working as a PRT. And more than a decade I am working as a principal. More than a decade. In 2013 I have started my journey as a principal. They have hide the potential, they have hide their ability, they have not expressed. Just because if the principal will know that you are good in typing, he or she will ask to type something.
somewhere, sometime. If he get to know that you are good in making arrangements, so he will give you. If he knows that you are versed with the CBSE norms, so he will give you the CBSE work. How people are going to value you? If you are good in the things, if you are going to able to make the things fix, if you are able to fix it out, you are having ability. If you are not able to fix it out, if you are not a problem solving बहुत बड़ा business है आज के टाइम. People hire. Why we pay to people actually? Because whatever we are not knowing, हम एक एफिडेविट बनाने के लिए वकील को तभी पे करेंगे जब हमें एफिडेविट बनाना नहीं आता. हमारा राइट और रॉन्ग. हम तब तक दवा अपने से ही करते हैं जब तक वो एक्सट्रीम पे ना पहुंच जाए. Isn't it? हम होम रेमेडीज सब आंटी आती है बता के जाती है दवा, चाय की पत्ती पी लो, खा लो, चीनी खा लो, लूज मोशन विल गेट स्टॉप. हम ट्राई करके ही डॉक्टर के पास जाते हैं. Isn't it? Isn't it? All have experienced these kind of things. और आधी चीज तो आप गूगल कर लेते हैं वेरी इजीली. होम रेमेडीज फर्स्ट स्टमक एक. Isn't it? We do ना. बट जो प्रोफेशनल बैठा होगा उसने 10 साल खर्च किए हैं, वो 5 मिनट के गूगल से आपको कुछ नहीं होगा. The professional, I'm talking about lawyer, I'm talking about the engineer. एक घर बनवा लिया सबको सलाह देते फिरेंगे घर कैसे बनता है. You can see people around you. है ना. एक काम करिए, एक काम करिए, एक काम करिए. अरे इतने ज्ञानचंद है भैया, एक घर क्या बनवा लिया समझ रहे हो. It happens. छोटा सा ऑपरेशन कराने आएंगे सबको ऑपरेशन की सलाह देते रहेंगे. वही हॉस्पिटल बढ़िया है, वही अरे आखिरी वही तुम देखे ही. You don't know anything else other than that. एक ही हॉस्पिटल तुम जानते ही हो, तीसरा जानते ही हो, है ना. तो coming to next things. Next is problem solving. ये जो एबिलिटी होती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इट्स ऑलवेज अबाउट द पर्सन दैट हाउ ही और शी डील्स विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. Sometimes we are not able to recognize the problem actually. Wait, something it was there, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे, ऐसा कुछ है. हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं रिकॉग्नाइज हो पा रही. धूल कहाँ है, चेहरे पे है कि आईने पे है. हम कई जगह we are not able to diagnose the things properly. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो है, what is problem solving skills? Problem solving is a complex skills. It involves critical thinking, decision making, creativity and information processing. Effective problem solvers use a systematic approach that allows them to break down difficult problems into smaller, more manageable parts. बड़ी सी प्रॉब्लम को आप छोटा छोटा अलग अलग हिस्सों में काट लीजिए, the problem will get solved. अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. But sometimes you have to deal with that particular. ये लाइफ में आप जान जाएंगे कि how to deal with that particular problem. उस प्रॉब्लम को कैसे आप डील कर पाएंगे. You know, I'm just telling a story. One time it happened. एक पुल के ऊपर कार का पंचर हो गई. पुल के ऊपर सब एक डील है कार के ऊपर. I'll come to place Nogachia. One bridge is there between. 7 किलोमीटर का ब्रिज है, विक्रमशिला पुल. वहां पे कार पंचर हो जाने पर 5,000 रुपए का फाइन दिए. कोई भी गाड़ी अगर पंचर हो जाए या किसी भी तरह के तो 5,000 रुपए अलग से फाइन. आपकी गाड़ी पंचर हुई, आपके साथ का प्रॉब्लम हुई है और 5,000 रुपए फाइन अलग से. पहले ये बचना पड़ता है कि जल्दी से अगर गाड़ी पंचर की तो खींच लो. वन टाइम का था वहां पे क्या हुआ, वो ब्रिज जो है हिलता भी है. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में चलने के हिलता भी. क्या हुआ, वहां पे पंचर हुआ तो स्टेपनी वाज देयर. स्टेपनी निकाली गई, स्टेपनी लगाने के लिए प्रोसेस चालू हुआ.
सारे थोड़े गए, स्टेपनी लगने ही वाली थी, तब तक जो 4 नट थे ना, वो हिल हिल के आगे जाके बीच में चले गए। अब अगला आते जाते लोग कहते हैं, अरे टायर है लगाते क्यों नहीं हो? टायर है लगा क्यों नहीं रहे? स्टेपनी जाओ आगे बढ़ो, चालान काटने पुलिस आ जाएगी पीछे। जैसा अरे वो लगाई कहां से? बोले भैया वो नट सारे जो है ना वो तो चले नीचे, अब लगाए कैसे? नहीं ना 22% की and suddenly he is dead. रुकिए होगा। बाकी के 3 पहियों में से एक नट खोला, 3 इसमें भी लगा दिया। 4 नट थे वहां पे, वो खोला, एक इसमें लगा दिया। वो कोई सोच ही नहीं रहा था कि this can also, this can also go. You all have heard about that Colgate और वो उसका पेस्ट का साइज मूवी में आया था किसी कि कैसे सेल बढ़ाएंगे कोलगेट की और सब चीज की, सब क्रिएटिव थिंकर की इसका मुंह बढ़ा देते हैं, इसका जो डायमीटर है ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लोग दबाएंगे उसी स्पीड से, पेस्ट ज्यादा निकलेगा, जल्दी खत्म होगा, हमारा ज्यादा से। You can say that this is a problem solving also, we can say this is a creative thinking also, we can say that this is a critical thinking also, it's an innovative idea, it's a creative idea, बहुत सारी चीजें। प्रॉब्लम सॉल्विंग कितना बड़ा बिजनेस है, यू कैन सी ओला उबर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ओला उबर। शादी.com लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, भले प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं? कुछ लोगों को नई शादी हो रही है तो कम से कम काम तो दे रहा है ना, ढूंढने का, उसमें सेलेक्ट करने का, स्वाइप करने का, है कि नहीं? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है लेकिन मदद हो रही है प्रॉब्लम में। अब प्रॉब्लम सॉल्व व्हाटएवर यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल नॉट गेट दैट, है ना? लेकिन प्रॉब्लम से देयर आर अर्निंग मनी। शादी.com अनुपम मित्र कितना पैसा बना रहे हैं, इज अ मिलियनियर, इजंट इट? गाड़ी देखो, कार देखो .com, वन इज शार्क टैंक के आता है, वो कार देखो, हाँ अमित जैन समझ है, हाँ अमित जैन, ये सब क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि हम ऑन रोड प्राइसिंग भागलपुर सर्च करते हैं गाड़ी का, एंड दे शो दैट पर्टिकुलर आपकी लोकेशन डालिए, ऑन रोड प्राइस जो आरटीओ चार्जेस हैं, जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं, सारी चीजों को वो वहां पे करके दिस इज अ बिग बिजनेस। दे मेड दे हैव क्रिएटेड अ मोर वेबसाइट। कॉलेज देखो, कॉलेज देखो कि उनका काम, अब देखिए क्या क्या दिखाते हैं, है ना? शादी के लिए आप गूगल कर सकते हैं, कॉलेज देखने के लिए आप गूगल कर सकते हैं, naukri.com है ये, है? You can go to find good jobs there, solving the problem, isn't it? Indeed is there, a very good website, है ना? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं कहीं पे भी, तो हम उससे बहुत हद तक आगे निकल जाएंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वी कैन सी दिस, आई थिंक सो एवरीवन इज एबल टू गेट दिस व्हाट इट इज सेइंग। ये लाइफ की जरूरी चीज है, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं लेना है टीचर्स को कोई नहीं पढ़ा सकता, वो भले होते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू। ये लाइफ की है, बिल्कुल बात नहीं होगी पढ़ाई की। अच्छा बच्चों के साथ भी ये करके देखिएगा, बच्चे से बोले आज पढ़ना नहीं है बेटा, दे विल गेट फोकस। हाँ क्या करना है, इजंट इट? जस्ट एंटर इन द क्लास एंड से आज पढ़ना नहीं है, बुक्स बंद करो। और सही में इफेक्टिव टीचिंग वही है कि बुक भी बंद है, बाहर लेके गए, उनको दिखा दिया बेटा ये देखो ये प्लांट है, ये क्रीपर्स है, लेकिन तुम्हें जल्दी जल्दी कहाँ क्रीपर्स कहाँ है, इजंट इट? दे हैव लर्नड आल्सो, उन्हें पता भी नहीं चला। चलो बेटा काम करते हैं, ये लो इसको डिवाइड करना है, दे हैव लर्नड डिवीजन, समझे? तो दिस इज द थिंग्स कि जब हम कभी भी उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, इट इज नॉट एग्जाम्पल इन दिस टर्म, पढ़ना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना, उसको डिफाइन करना, एक्सप्लोर करना, एक्शन लेना, एंड अगेन वी नीड टू लुक बैक इनटू दीस थिंग्स। नाउ इट कम्स अबाउट द डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स?
लेकिन लिटरली इट हैपेंड समवेयर some teachers were not attentive जैसे मैंने कहा पढ़ाई के बारे में नहीं they get attentive and they start writing about these things even then what sir is saying literally what are decision making skills decision making skills show your ability to select the best possible option from the alternatives available the availability to maintain good decisions helps contribute the company's goal. The process involves using information to assess the risks and the opportunity associated with each choice. Good decision makers are those that overcome biases that might affect their choice. Employers expect managers to make excellent choices based on the facts and data rather than intuitions. हमें ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, हमें ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं ऐसा होगा. Decision making facts पे चलती है. और हम decision making कैसे करते हैं? prior experience के basis पे. हम facts को कई बार deny कर देते हैं. We are biased with the things. एकदम biased है. नहीं भाई, होटल मैनेजमेंट बहुत खराब प्रोफेशन. some people are biased with these things. They are having that वो कहीं से उनका है नहीं अपना. उन्होंने कहीं डिबेट में सुन लिया था. आज तक पे डिबेट चल रही थी. किसी से वो सबसे बहस करके लड़ जाते हैं. Every party, every individual party, कोई भी इलेक्शन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, सब में कुछ ना कुछ अच्छा होता है. अच्छा इंसान वही है जो अच्छा ही को उसमें देखे और उसकी तारीफ. वो बायस ना हो जाए. वो अपोजिशन की तरफ बात ना करे. Isn't it? है ना? तो डिसीजन मेकिंग ये इलेक्शन के टाइम वाले के लिए बात बोला था. इलेक्शन के टाइम पे पार्टी कोई अच्छी नहीं होती. पार्टी फॉर टाइम में पार्टी कुछ अच्छा करती है तो सपोर्ट दैट. If that is not doing appropriate things, you are not going to support that, isn't it? तो ये भी डिसीजन मेकिंग की वोट कहाँ डालना है वो उतनी देर का वो होता है. बट कुछ लोग बायस होते हैं. कुछ ना करें यही पार्टी यही ठप्पा तो यही लगेगा. It is a biased decision. We are biased. You are supposed to see the development process, how they work. 5 simple steps. You all can see this. For decision making, actually, the critical thinking will come in. Critical thinking is the ability to analyze fact and form a judgment. It's a form of emotional intelligence. Someone with critical thinking skills can think clearly and rationally when the situation demands it. Critically सोचना भी it is important. That what the pros and cons are there of particular things. You know, emotional intelligence is a part. Emotional intelligence पे IQ से ज़्यादा आजकल वर्क किया जा रहा है. What is IQ? IQ stands for intelligence. And what is EQ? Emotional quotient. Suppose जब आदमी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा ना तो ही विल बी एबल टू डील विद द सिचुएशंस. He will not get, you know, if you think like that someone is going to become a district magistrate, है ना? अगर सोचे कि मैं गरीबी मिटा दूंगा, मैं ये करूंगा, अगर वो जाके इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मैं करप्शन एकदम खत्म कर दूंगा, माना जाएगा कि ही इमोशनल आदमी है. He will not be able to think the thing properly. He will not get selected, I think. कहेगा मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं गरीबी मिटा दूंगा. Is this possible? ये एक पॉलिटिकल आदमी का वो हो सकता है. बट आप ब्यूरोक्रेट होने जा रहे हैं. You are here for a you all have to think about the prospects, the practical things. उस पे आपको बात करनी जो हो सकता है उस पे बात करनी. ऐसे नहीं बात करेंगे कि मैं देश को जर्मनी बना दूंगा भागलपुर को. इतना स्मार्ट वैसे ही है भागलपुर. जर्मनी वाले कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट बनाऊंगा, है ना? कि जितना स्मार्ट भागलपुर है उतना स्मार्ट बनाएंगे. नहीं देख है ना?
So critical thinking, it helps to improve decision making, it enhances problem solving ability, refines your research skills, polishes your creativity, stimulates curiosity. क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ लोग तो पैदाइशी क्रिएटिव होते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी जो होती है ना, नई नई रिसर्च करने से भी आती है। सेम थिंग मैं आपको बताऊं कि एक सेम सेंटेंसेस में आपके यहां से बोलूंगा और वही चीज आप दूसरी जगह जाके एलोबरेट करोगे तो इनका तरीका दूसरा होगा, आपका तरीका दूसरा होगा, आपका तरीका दूसरा होगा। दिस इज द क्रिएटिविटी वी कैन सी। सेम थिंग वन हैव लर्न इन द सेम क्लास, आप बच्चों के अंदर देखिए, आप पढ़ाते कुछ और हैं एंड दे राइट समथिंग एल्स इन देयर ओन वर्ड्स, दे आर एबल टू डिस्क्राइब द थिंग्स, दे आर हैविंग दैट क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी अगर बच्चों के अंदर हम लोग कर दें और इन्हांस करें और इसको जो बूस्ट अप करें, इट इज रियली गुड टू फॉर्म अ न्यू वे, है ना। और वो वाले जो होते हैं कि माई वे इज हाई वे, दे विल बी नॉट एबल टू डू दोस थिंग्स। Things need to be seen from other side also, isn't it? So this is all about the creative thinking. Creative thinking का जो process होता है ना, you all can see this process. It's about the perception and facts. It's all about the ideas and it is about the solutions. These are the very important thing for thinking process of creativity. सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स जैसे मैंने अभी बात की कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के कुछ नियमों और उसके तहत हम लोगों को बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं शो करना होता है समाज को कि वी आर ऑल्सो नोइंग अबाउट दिस। हम आधा ज्ञान लेके बांटने चलते थे, अर्जल गगरी छल कर जाए। हिंदी टीचर है, 21वें सेंटेंस में यूज होता है, अधजल गगरी छल कर जाए। हाँ सर, हाँ, मतलब थोड़ा सा ज्ञान हुआ नहीं कि बांटने चल दिए। हाँ। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, आपको समाज में कई बार समाज में कम्युनिकेशन करने की जरूरत होती है। मैं सही बात बोलूं, समाज में अगर आप बोलते ही रहेंगे, सलाह ही ज्ञानचंद ही रहेंगे, वही मैंने आपको बताया ना, ये घर बना दे, जितना घर बन रहा है उसके सोचते हैं इनको सलाह दे ही दे, आपको देख के अगला कटने भी लगता है। ये आ गए ज्ञानचंद, इनके पास बहुत सलाह, वो सोशली अच्छा इंसान नहीं हो पाएगा, वो सोचता है कि हम बहुत सामाजिक है, बहुत सामाजिक है, लेकिन वो कई बार ये नहीं ऑब्जर्व कर पाता, इसको देखते ही आगे लोग भागने लगते हैं। Isn't it? तो सोशल होने के लिए दूसरों की सुननी पड़ती है, सोशल होने के लिए गलती ना होते हुए भी सॉरी बोलना पड़ता है। आजकल के बच्चों के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि वो सॉरी नहीं बोलना चाहते, they don't want to apologize, they want to prove themselves that they are right, you are wrong. And nowadays parents have also feel it like this, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, टीचर ने ऐसा क्यों कर दिया? There is question like that. Parents are raising, that is why the students are coming with us. हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं, मार खा के आए हो मार खाओगे, हाँ इट हैपेंड विद अस। हमारे ऐसा टाइम में ऐसा नहीं था, हम मार खा के आते थे तो मार ही खाते थे। They are not going to analyze, वहाँ वकालत नहीं चलती थी क्यों मार खा के आए, टीचर की क्या गलती थी, बच्चे की क्या गलती थी, नहीं होता। बट नाउअडेज पेरेंट्स आर वो वकालत करेंगे, अबे इतनी वकालत मत करिए, वकीलों की घटना पड़ेगा बात। लिटरली ऐसा ही होगा। जो अपने बच्चों को, उनको कई बार लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है, रिलेशनशिप की भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सबसे कहूंगा सॉरी बोल के हट जाइए, छोटे नहीं होंगे, छोटे नहीं होंगे कहीं पे भी। रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप में भी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में तो और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप ज्यादा ज्ञानी हैं। लिटरली सर्वाइवल के लिए डिफिकल्ट होता है ज्यादा ज्ञानी होना। एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि यहाँ 4 पिलर होना चाहिए तो सीनियर सही नहीं 3 ही होना चाहिए, नहीं सर मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए। दैट इज द थिंग यू हैव सेड योर वर्ड्स, लेट द बी 3। आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव डन दीस थिंग्स इन माय लाइफ। नहीं सर 4 ही होगा, लड़ गए, लेट इट बी, उनका है, दे आर सीनियर देन यू,
उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? कुछ भी होगा तो यू आर नॉट द आर्किटेक्ट, और दैट आर्किटेक्ट भी है तो ठीक है, मालिक को है पैसा वो लगा, ठीक है, तीन ही होगा, गिरेगा उसका गिरेगा। अगर आप उसी समय खत्म कर देंगे तो वो लंबा इन्वेस्टमेंट गिरने में तो लगेगा ना 6 महीने, 6 महीने सैलरी, पर्सन का सैलरी 6 महीने की बढ़ जाएगी, लॉन्ग टर्म में उनको समझ में आ जाएगा, है ना? सही कह रहा था, 4 होना चाहिए था, हमने 3 करा दिया, पैसा बचा लिया उस कॉस्ट में, इज़न्ट इट? है ना? तो लॉन्ग टर्म में समझ में आती है किसी भी चीजें, आप भी खुद एडमिट करिए लाइफ में अपने, आपको भी कहा गया होगा पेरेंट्स की वजह से और कई लोगों की वजह से कि तुम्हें ये एबिलिटी है, ये कर लो, आपने वो नहीं किया, दूसरा किया, आज आप सोचते होंगे उनकी चीजों को, और यही होता है लिटरली हैपेंड विद अस। जब हमें कोई आसपास के चाचा, मौसी, मौसा कोई भी आते थे, कहते थे पढ़ लो बेटा, बहुत क्रूशियल टाइम है, 9 से 11 का, यही पढ़ लो तो जिंदगी भर काम आएगा, तो लगता था प्लीज अब छोड़ दीजिए ना, आज हो गया आज का। हम उनको यही सोचते, आ गए कल, फिर अब लेक्चर शुरू, बुला के भी पूछेंगे तुम्हारा सिलेबस कहाँ तक पहुंचा, है ना, ये चैप्टर पढ़े कि नहीं पढ़े। यू आर ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ पीपल अराउंड। आज हम वही करते हैं, यही लेक्चर्स, वही बातें हम लोग बोलते हैं, बेटा पढ़ लो, बहुत क्रूशियल टाइम है, पढ़ लोगे तो और अच्छा होगा, लाइफ में काम में आएगी, है ना? लेकिन थोड़ा थोड़ा बचा लेना चाहिए, बच्चों से घुमा फिरा के पूछना चाहिए, है ना? बच्चे इससे थोड़ा सा ऑब्जर्व फील करते हैं। तो सोशल स्किल्स मतलब सोशली वेल बीइंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत जरूरी पार्ट होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दो लोगों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ये क्या है, इसमें बहुत सारी स्किल्स आती हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। एंड सोशल स्किल्स इज रिलेटिंग इन पॉजिटिव वेज विद पीपल वी इंटरैक्ट, making and people friendly relationship, maintaining good relationship with the family members, ending responsibility constructively. इसमें valuable interpersonal skills in your career. करियर में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Caring, active listening. If you're not a good listener, people will not going to interact you so frequently. कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू वे, बातचीत हो पाना। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना। हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी चीज है। आफ्टर डूइंग many of the technical courses, if one is not good in communication skills, he or she will be not able to survive in the particular field. It happens. Effective communication होना बहुत जरूरी है। आप, you know, the people come to you, it's all about, sometimes it happens, आप लोग देखते होंगे, चीजें कई बार देख के ना जाते, person is not saying something, तो body language also says it. How the person is raised up. You all are able to see the medical representative around the doctors. कैसे पहचान लेते हैं इनको? इसका बैग भी दूर रखा होगा तो भी पहचान। They are good in attire, very well dressed they are, well groomed they are, isn't it? Other person is coming to your office, you will be able to get that. वो किसी पर्पस से आ रहा है, किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। तो दिस इज ऑल्सो पर्सन इज स्माइलिंग, आपको देख के मुंह बना हुआ है, उसे लगता है कि इनको नाश्ता नहीं मिला होगा घर में, है ना? इफ समवन इज कमिंग विद छोटी सी स्माइल के साथ आ रहा है, लग रहा है कि नाश्ता करके आया है, कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसकी वाइफ भी अच्छी है, और ज्यादा नाराज रहिएगा तो सोचेगा अपनी वाइफ से कब, हाँ लिटरली, इसलिए स्माइल करिए, वो जानने के लिए कि घर में सब ठीक ठाक है ना, नाश्ता मिलता है ना? और पुलिस को ये भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि टिफिन में क्या आता है ना? टिफिन देख के क्या आते हैं कि घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं ठीक है ना? लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, है ना? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब आपका होगा तो आप प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेंगे, हमें लगता है। टिप्स फॉर डेवलपिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स: लिसनिंग, non-verbal communication, being clear, being conscious, being confident, being personable, being patient.
एम्पैथी, सिंपैथी सबने सुना, एम्पैथी कहने का सवाल, सिंपैथी, एम्पैथी, सिंपैथी और एम्पैथी. Empathy is feeling the pain of others. एम्पैथी इज अबाउट द फीलिंग. Sympathy. ठीक है, अभी एक मैं वीडियो प्ले करूंगा और फिर उसके बाद सर विल कंटिन्यू, और उसके बाद जो थोड़ा सा सेशन रह गया विल कंटिन्यू विद दैट. सर इट इज देयर, आई जस्ट सी इफ आई कैन. This one, let's see this. सबको बताना पड़ेगा इसके बारे में. एक बार फिर से प्ले कर दो हम जैसे आज की. Just you explain it a little bit. हाँ? नहीं, एक्सप्लेन आप लोगों को करना है. फ्लिप. Yes, yes. है ना? जो हाथ जस्ट रेज द हैंड हु वांट्स टू एक्सप्लेन, उसे लगता है कि सबसे अच्छा कोलैबोरेट कर सकता है. I can correlate with another example. In just one sentence, I want to say this. I can correlate. दर्द तब महसूस होगा जब अपना हाथ कटेगा. Yes. और कोई इसको और अच्छे से एलोबरेट कर सकता है? हाँ जी मैम, प्लीज. Sir, I would like to narrate a small story regarding this. Sure. There was a boy. I'll go to the next session. There was a boy, and he grew up, but he was very lazy, did not want to work. So his father was actually fed up with him. So he asked him that somehow, anyhow, I don't know how he will do, but every day you have to give me 10 rupees at the end of the day. You have to work for it and bring it. So the boy went out. Every day in the evening he would come and give 10 rupee note to his father. But his father would not take it and would ask him, throw it away. The boy would throw it every day. Continued for many days.
One day, again, the same thing happened. The boy came in the evening and he gave a 10 rupee note to his father. The father repeated, throw it away. The boy started screaming. He did not throw that money because that day he had actually earned it. And the rest of the days, somehow he had stolen it from somewhere and got it. So when the father used to say, throw it away, he would throw it because he never knew how to earn money. So one final day when he earned the money and when he was asked to throw, he could not. So this video also says almost the same thing. Every day the wife used to polish his shoes. He would just go around carelessly, put his shoes in the water and the mud and come back with the dirty shoes. One final day the wife got fed up. She just threw the shoes as it was, and that day he had to polish it himself. And that day we could see he very carefully stepped out of the water, did not put his shoes in the mud, and that day his shoes was clean. And even wiped it with a piece of cloth or tissue paper. So, moral of the story, unless and until we work ourselves, we do not know the worth of others' hard work. Acha, one more thing. Males can observe they have observed or not? Male teachers are supposed to observe very well. Otherwise, isn't it? No sir, we are not like that. We are doing. नहीं वही तो कह रहे हैं समझना चाहिए. Isn't it? We cannot generalize this. No, I'm not generalizing things, but consciousness is also a thing. One is supposed to be conscious about these things. in that way. You can change these things. खाना बनाने में ये चीज आता है, आप प्रिपेयर करके वापस लेके जाओ. That will also cook. हाँ, ठीक है. Exceptions are always there. Exceptions are always there, isn't it? है ना? But चेतावनी है ये. But we cannot generalize it. नहीं, जनरलाइज तो होती है, चीजें जनरली होती है बस. चीजें जनरली कही जाती है. आपके प्रोस्पेक्ट में दैट इज एक्सेप्शन. आपको सकता है खाना भी घरवाली का बना के आए, है ना? नहीं, किसी का पेरेंट्स का बना सकते हैं. किसी के भी प्रोस्पेक्ट से ऐसा हो सकता है. Also this that there are exceptions also. हाँ, देयर आर ऑलवेज. Can say this. कोयला भी 100% काला नहीं होता. Exactly. बस वही बात है. एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, है कि नहीं? ठीक है. I just hand over to Manin sir. He'll continue, and when my sessions will come, again I'll show you one more video about it. और एक स्टोरी के लिए तैयार रहिएगा. स्टोरी आपको सुनानी है, स्टोरी बनाइए. Thank you, sir. अगले अपने सेशन में वो स्टोरी बताओ. Sir, break, sir. So, some new skills are there also, as given the beautiful concept about life skill. Let us do something more about that. In this slide, you can see that some traits are there. Self-awareness, effective communication, problem solving, interpersonal relationships, creative thinking, empathy, coping with stress, decision making, critical thinking, and managing emotions. These are the techniques, these are the traits. It is given by a well-known psychologist. The name was Howard Gardner. He has given the theory of multiple intelligence. According to Howard Gardner, we know that 8 traits he has already given. And one more concept was that
These all skills are very important for us for day-to-day life. Self-awareness. It is called know yourself. In interview, we are facing day-to-day challenges. Tell me about yourself. Give your introduction. These are very common questions. But the effective thing is that if your quality and your skill is not correlated to each other, then it will be called a false representation. We know that whatever our skills we possess and whatever we have academics, qualifications are there, but beyond that, we have to once again overview these things. If we have any weakness or if we have committed any mistake, then we accept it. Because as sir told you that making sorry or feeling sorry is not bad. If I don't know certain thing or certain quality, then we should try to realize it. And it is very important. We know that the children is innocent and his quality is very natural. And anyone if facing a particular children, we know that we have to be very positive. Because during that time, he wants and he asks a lot of questions. One scientist stated that a brain of a child is a brain of a genius. We know that his questions is so many dimensions are there. Many type of things he want to ask at the same moment. And we are facing it day-to-day life. So, if a particular question, if we give the answer in some vague manner or ambiguous manner, then it will be very dangerous for the brain of a children. Because his brain is very sensitive. Whatever you feel, that child grab it according to the time. So why not we put the positive ideas? Why should not we put the beautiful ideas in our mind? In literature, so many good stories are there. I want to ask a question from your side. What is the need of such kind of stories and poems? Anyone? The teachers who are in the field of literature, I request him or her, please give some ideas. Why there is a need of this kind of moral stories and poems? Anyone, ma'am? Stories can convey the message. Yes, ma'am. Stories can convey the message more effectively. Thank you, ma'am. Any other teachers? There's an idea about poems and stories. Why it is very important? Anyone? Through the stories, whatever they learn, they can inculcate in their life and become a better person. It helps them to become a better person through the models that they learn. Beautiful answer. We have already studied or give some examples according to the time, like Mahabharata, Ramayana. Our ethics is that the child who possesses such qualities. If we are giving the example of Lord Rama, our perspective is that whatever the quality of Lord Rama had, a child should possess such kind of sanskaras and manners and behaviors. This all life skills is all about how we behave, how do we feel to the others. And suppose that if you have so many qualities, but the main thing is that
how you can give the reputation at the same time with your deeds and activities. These are very important. According to it, there are some the sessions of activities, so be ready for that. And this session is related to some effective activities. So, We'll go for tea break. okay, sir. So after there is a session of tea break, and after tea break, we will do some activities. Thank you. 10 minutes. After 10 minutes. After 10 minutes, We'll get back. Need to update ourselves in these things, in these prospects. So ultimately we came to this profession, that's teaching by choice or by chance. Isn't it? Many of you are there, I think so, I'm not just saying in the general words. I always ask whenever I interview the teachers, you are by chance teacher or by choice teacher? Don't take it otherwise, people coming after doing BTech and MBA in teaching. What do you think? They are by chance or by choice? By chance. Don't bother about, I'm also MBA. But I did my MBA after my BA. That is the other thing. I was having this hands-on experience in those things also because I worked for, in the initial stages I worked for I was having zeal to learn about these things. That is why I did my MBA. That is the other thing. But continuously, you all have seen that people are doing BTech and directly coming to this profession. I think so they are not self-aware. That what the capability, what the potential, what the ability they are having. They have learned something else, they are teaching something else. And they are saying that I teach all subjects up to 8th class. Isn't it? Maybe you all have seen people around you. One can teach. But it's about the proficiency. That you are good in social studies, one can be good in Hindi, one can be in English, etc. One day, one teacher continuously start teaching a particular subject, he will be good in that. It's not like that. It's come from practice. Teaching is like that. One cannot be a good teacher in a day, in a year, in a decade. It needs practice. One will do and become more versed about this. So self-awareness is the thing, ultimately we can say that what the potential of particular is having, how he can just be good in his or her future about those particular skills whatever is having, a knowledge kind of things one particular is having, how he or she is going to utilize those things in life. It's all about that knowing ourselves, self-awareness. One is knowing him or herself. Self-awareness is the ability to focus on yourself and how your actions, thought or emotions do or don't align with your internal standards. Self-awareness is recognizing of self, our character, our strength. Strength and weaknesses I am talking about. Everyone is having weaknesses. Somewhere everyone is having weaknesses. Everyone is having strength. But if we are going to analyze about these things, और बच्चों के अंदर भी पता है क्या होता है? What happened continuously? Students is not good in particular maths or science, but he is good in drama, dance. We always think like parents are always saying like they'll be, like simply we can say सचिन तेंदुलकर को अगर गाना गाने के लिए कहा जाता तो आज शायद इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं, isn't it? He was having that particular skills. No one is going to bother about that he is graduate or not. Anyone is knowing that Sachin Tendulkar is graduate or not? No one is going to bother about that because he has just proven himself. Many of the universities are ready to give him or her many kind of PhDs. Multiple intelligence. Yes, they gave.
honorary doctorate they gave. You know, Mahendra Singh Dhoni is having many other doctorates. Amitabh Bachchan is having many other doctorates. Many universities are giving them honorary doctorate. So ultimately, what we seek for? We seek for degrees sometimes. ये degree हो जाए, degree is a bit. You have seen people around you, they are BA, but they are not able to define the education properly. Isn't it? That degree will work. They'll seek for, they'll be in the line of seeking jobs. But the person who did that particular thing, ultimately two things are there, knowledge and skill. We are supposed to acquire knowledge and turn those things into skills. हमने BA इसलिए किया था, we all have done, to understand how to teach. But some of them have done, will get job easily after doing BA. Isn't it? So many things are there, differences are there. The four dimensions of self-awareness. Self-awareness, awareness of what others say and think about you. The first dimension of self-awareness is being aware how you impact other people. Awareness of the thoughts and feelings you have about yourself. Awareness of who you really are. Awareness of who you want to become. कभी भी हम लोग सोचते हैं कि what someone will do with motivational speakers, what they'll do. They always say, think positive, think positive, think positive. Nothing will happen. But if the things will happen, you will be happy. Like people who are having 1,000 crore company, they also seek for these things, motivation and all. They always hire a good motivator, a motivational speaker, because they want to do that 30x. They do. And people around us, we think like, what will happen with this? Nothing is going to happen. A word can change the life. Definitely, it happens. You know, when I was working as a teacher, so sometimes the teachers around me were there like that. They say, why you are getting over smart? Always you do whatever the principal say. Say that I don't know how to do. They are still the PRT working there, working as a PRT. And more than a decade I am working as a principal. More than a decade. In 2013 I have started my journey as a principal. They have hide the potential, they have hide their ability, they have not expressed. Just because if the principal will know that you are good in typing, he or she will ask to type something. Somewhere, sometime. If he will get to know that you are good in making arrangements, so he will give you. If he knows that you are versed with the CBSE norms, so he will give you the CBSE work. How people are going to value you? If you are good in the things, if you are going to able to make the things fix, if you are able to fix it out, you are having ability. If you are not able to fix it out, if you are not a problem solving बहुत बड़ा business है आज के टाइम. People hire. Why we pay to people actually? Because whatever we are not knowing, हम एक एफिडेविट बनाने के लिए वकील को तभी पे करेंगे जब हमें एफिडेविट बनाना नहीं आता. Am I right or wrong? हम तब तक दवा अपने से ही करते हैं जब तक वो एक्सट्रीम पे ना पहुंच जाए. Isn't it? हम होम रेमेडी सब आंटी आती है बता के जाती है एक दवा, चाय की पत्ती पी लो, खा लो, चीनी खा लो, लूज मोशन विल गेट स्टॉप. हम ट्राई करके ही डॉक्टर के पास जाते हैं. Isn't it? Isn't it? All have experienced these kind of things. और आधी चीज तो आप गूगल कर लेते हैं very easily. Home remedies for stomach ache. Isn't it?
वी डू ना। बट जो प्रोफेशनल बैठा होगा उसने 10 साल खर्च किए हैं, वो 5 मिनट के गूगल से आपको कुछ नहीं होगा। The professional, I'm talking about lawyer, I'm talking about the engineer. एक घर बनवा लिया सबको सलाह देते फिरेंगे घर कैसे बनता है। You can see people around you, है ना? एक काम करिए, एक काम करिए, एक काम करिए। अरे इतने ज्ञानचंद है भैया, एक घर क्या बनवा लिया समझने को। It happens. छोटा सा ऑपरेशन कराने आएंगे सबको ऑपरेशन की सलाह देते रहेंगे, वही हॉस्पिटल बढ़िया है, वही कह रहे आखिरी वही तुम देखे ही। You don't know anything else other than that. एक ही हॉस्पिटल तुम जानते ही हो, तीसरा जानते ही हो, है ना? तो coming to next things, next is problem solving. ये जो एबिलिटी होती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इट्स ऑलवेज अबाउट द पर्सन that how he or she deals with that particular problem. Sometimes we are not able to recognize the problem actually. Wait, something it was there, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे, ऐसा कुछ है? हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं रिकग्नाइज हो पा रही। धूल कहाँ है, चेहरे पे है कि आईने पे है? हम कई जगह we are not able to diagnose the things properly. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो है, what is problem solving skills? Problem solving is a complex skills. It involves critical thinking, decision making, creativity and information processing. Effective problem solvers use a systematic approach that allows them to break down difficult problems into smaller, more manageable part. बड़ी सी प्रॉब्लम को आप छोटा छोटा अलग अलग हिस्सों में काट लीजिए, the problem will get solved. अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, but sometimes you have to deal with that particular, ये लाइफ में आप जान जाएंगे कि how to deal with that particular problem. उस प्रॉब्लम को कैसे आप डील कर पाएंगे। You know, I'm just telling a story. One time it happened. एक पुल के ऊपर कार का पंचर हो गई, पुल के ऊपर सब एक डील है कार के ऊपर। I'll come to place Nogachia. One bridge is there between, 7 किलोमीटर का ब्रिज है, विक्रमशिला पुल। वहां पे कार पंचर हो जाने में 5,000 रुपए का फाइन दिए। कोई भी गाड़ी अगर पंचर हो जाए या किसी भी तरह के, तो 5,000 रुपए अलग से फाइन। आपकी गाड़ी पंचर हुई, आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई है और 5,000 रुपए फाइन अलग से। तो पहले ये बचना पड़ता है कि जल्दी से अगर गाड़ी पंचर हुई है तो खींच लो। वन टाइम बैठा वहां पे क्या हुआ, वो ब्रिज जो है हिलता भी है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के चलने में हिलता भी। क्या हुआ, वहां पे पंचर हुआ तो स्टेपनी वाज देयर, स्टेपनी निकाली गई, स्टेपनी लगाने के लिए प्रोसेस चालू हुआ, सारे खोले गए, स्टेपनी लगने ही वाली थी, तब तक जो 4 नट थे ना वो हिल के आगे जाके बीच में चले गए। अब अगला आते जाते लोग कहते हैं, अरे टायर में लगाते क्यों नहीं हो? टायर है, लगा क्यों नहीं रहे? स्टेपनी जाओ आगे बढ़ो, चालान काटने पुलिस आ जाएगी पीछे। अरे वो लगाई कहां से? बोले भैया वो नट सारे जो है ना वो तो चले नीचे, अब लगाएं कैसे? नहीं ना 22% की एंड सडनली ही इज डेड। रुकिए, होगा। बाकी के 3 पहियों में से एक नट खोला, 3 इसमें भी लगा दिया। 4 नट थे वहां पे, वो खोला, एक इसमें लगा दिया। वो कोई सोच ही नहीं रहा था कि दिस कैन ऑल्सो, दिस कैन ऑल्सो गो। यू आर थॉट अबाउट दैट कोलगेट और वो उसका पेस्ट का साइज मूवी में आया था एक सीन कि कैसे सेल बढ़ाएंगे कोलगेट की और उस सब चीज की। सब लोग क्रिएटिव थिंकर थिंक इसका मुंह बढ़ा देते हैं, इसका जो डायमीटर है ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लोग दबाएंगे उसी स्पीड से, पेस्ट ज्यादा निकलेगा, जल्दी खत्म होगा, हमारा ज्यादा से। You can say that this is a problem solving also, we can say this is a creative thinking also, we can say that it is a critical thinking also, it's an innovative idea, it's a creative idea, बहुत सारी चीजें।
प्रॉब्लम सॉल्विंग कितना बड़ा बिजनेस है, यू कैन सी ओला उबर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ओला उबर। शादी.com लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, भले प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं? कुछ लोगों को नई शादी हो रही है तो कम से कम काम तो दे रहा है ना, ढूंढने का, उसमें सेलेक्ट करने का, स्वाइप करने का, है कि नहीं? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है लेकिन मदद हो रही है प्रॉब्लम में। अब प्रॉब्लम सॉल्व व्हाटएवर यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल नॉट गेट दैट, है ना? लेकिन प्रॉब्लम से दे आर अर्निंग मनी। शादी.com अनुपम मित्र कितना पैसा बना रहा है, इज अ मिलियनियर, इजंट इट? गाड़ी देखो, कार देखो .com, वन इज शार्क टैंक के आता है, वो कार देखो, हाँ अमित जैन समझ है, हाँ अमित जैन, ये सब क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि हम ऑन रोड प्राइसिंग भागलपुर सर्च करते हैं गाड़ी का, एंड दे शो दैट पर्टिकुलर आपकी लोकेशन डालिए, ऑन रोड प्राइस जो आरटीओ चार्जेस हैं, जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं, सारी चीजों को वो वहां पे करके दिस इज अ बिग बिजनेस। They have created one more website, कॉलेज देखो, कॉलेज देखो कि उनका काम। अब देखिए क्या क्या दिखाते हैं, है ना? शादी के लिए आप गूगल कर सकते हैं, कॉलेज देखने के लिए आप गूगल कर सकते हैं, naukri.com है ये, है ना? You can go to find good jobs, they are solving the problem, isn't it? Indeed is there, a very good website, है ना? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं कहीं पे भी, तो हम उससे बहुत हद तक आगे निकल जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वी कैन सी दिस, आई थिंक सो एवरीवन इज एबल टू गेट दिस व्हाट इट इज सेइंग। ये लाइफ की जरूरी चीज है, पढ़ाई की ना बिल्कुल नहीं है। टीचर्स को कोई नहीं पढ़ा सकता, वो भले होते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू। ये लाइफ की है, बिल्कुल बात नहीं होगी पढ़ाई की। अच्छा बच्चों के साथ भी ये करके देखिएगा, बच्चे को बोले आज पढ़ना नहीं है बेटा, दे विल गेट फोकस। क्या करना है, इजंट इट? जस्ट एंटर इन द क्लास एंड से आज पढ़ना नहीं है, बुक्स बंद करो। और सही में इफेक्टिव टीचिंग वही है कि बुक भी बंद है, बाहर लेके गए, उनको दिखा दिया बेटा ये देखो ये प्लांट है, ये क्रीपर्स है, लेकिन तुम्हें जल्दी जल्दी कहां क्रीपर्स कहां है, इजंट इट? दे हैव लर्नड आल्सो, और उन्हें पता भी नहीं चला। चलो बेटा काम करते हैं, ये लो इसको डिवाइड करना है, दे हैव लर्नड डिवीजन, समझे? तो दिस इज द थिंग्स कि जब हम कभी भी उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, इट इज नॉट एग्जाम्पल इन दिस टर्म, पढ़ना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना, उसको डिफाइन करना, एक्सप्लोर करना, एक्शन लेना, एंड अगेन वी नीड टू लुक बैक इनटू दीस थिंग्स। नाउ इट कम्स अबाउट द डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स? देखिए लिटरली इट हैपेंड समवेयर, some teachers were not attentive, जैसे मैंने कहा पढ़ाई के बारे में नहीं, they get attentive and they start writing about these things even that what sir is saying. Literally, what are decision making skills? Decision making skills show your ability to select the best possible option from the alternatives available. The ability to maintain good decisions helps contribute the company's goal. The process involves using information to assess the risks and the opportunity associated with each choice. Good decision makers are those that overcome biases that might affect their choice. Employers expect managers to make excellent choices based on the facts and data rather than intuitions. हमें ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, हमें ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं ऐसा होगा। डिसीजन मेकिंग फैक्ट्स पे चलती है, और हम डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं? अपने प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे। हम फैक्ट्स को कई बार डिनाई कर देते हैं, वी आर बायस्ड विद द थिंग्स, एकदम बायस्ड है। नहीं भाई, होटल मैनेजमेंट बहुत खराब प्रोफेशन,
some people are biased with these things. They are having that, वो कहीं से उनका है नहीं अपना, उन्होंने कहीं डिबेट में सुन लिया था, आज तक पे डिबेट चल रही थी, किसी से वो सबसे बहस करके लड़ जाते हैं. Every party, every individual party, कोई भी इलेक्शन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, सब में कुछ ना कुछ अच्छा होता है. अच्छा इंसान वही है जो अच्छा ही को उसमें देखे और उसकी तारीफ, वो बायस ना हो जाए, वो अपोजिशन की तरह बात ना करे. Isn't it? है ना? तो डिसीजन मेकिंग ये इलेक्शन के टाइम वाले के लिए बात बोला था मैंने. इलेक्शन के टाइम पे पार्टी कोई अच्छी नहीं होती, पार्टी फॉर टाइम में पार्टी कुछ अच्छा करती है, सपोर्ट दैट. If that is not doing appropriate things, you are not going to support that, isn't it? तो ये भी डिसीजन मेकिंग की वोट कहाँ डालना है, वो उतनी देर का वो होता है. बट कुछ लोग बायस होते हैं, कुछ ना करें, यही पार्टी यही ठप्पा तो यही बैठेगा. It's a biased decision. They are biased. You are supposed to see the development process, how they work. 5 simple steps. You all can see this. For decision making, actually, critical thinking will come in. Critical thinking is the ability to analyze fact and form a judgment. It's a form of emotional intelligence. Someone with critical thinking skills can think clearly and rationally when the situation demands it. Critically सोचना भी, let us note that what the pros and cons are there of particular things. You know, emotional intelligence is a part. Emotional intelligence पे IQ से ज़्यादा आजकल वर्क किया जा रहा है. What is IQ? IQ stands for intelligence. And what is EQ? Emotional quotient. Suppose जब आदमी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो he will be able to deal with the situations. He will not get, you know, if you think like that someone is going to become a district magistrate, है ना? अगर सोचे कि मैं गरीबी मिटा दूंगा, मैं ये करूंगा, अगर वो जाके इंटरव्यू में अपने बोल रहे हैं, मैं करप्शन एकदम खत्म कर दूंगा, माना जाएगा कि इमोशनल आदमी है. He will not be able to think properly. He will not get selected, I think. वो कहेगा मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं गरीबी मिटा दूंगा. Is this possible? ये एक पॉलिटिकल आदमी का वो हो सकता है. बट आप ब्यूरोक्रेट होने जा रहे हैं. You are here for the you all have to think about the prospects, the practical things. उस पे आपको बात करनी, जो हो सकता है उस पे बात करनी. ऐसे नहीं बात करेंगे कि मैं देश को जर्मनी बना दूंगा भागलपुर को. इतना स्मार्ट वैसे ही है भागलपुर. जर्मनी वाले कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट बनाऊंगा, है ना? कि जितना स्मार्ट भागलपुर है उतना स्मार्ट बनाएंगे. नहीं देख, है ना? तो क्रिटिकल थिंकिंग इट्स हेल्प्स टू इंप्रूव decision making. It enhances problem solving ability, refines your research skills, polishes your creativity, stimulates curiosity. Creative thinking, कुछ लोग तो पैदाइशी क्रिएटिव होते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी जो होती है ना, नई नई रिसर्च करने से भी आती है. सेम थिंग मैं आपको बताऊं कि एक सेम सेंटेंसेस में आपके यहां से बोलूंगा और वही चीज आप दूसरी जगह जाके एलोबरेट करोगे, तो इनका तरीका दूसरा होगा, आपका तरीका दूसरा होगा, आपका तरीका दूसरा होगा. दिस इज द क्रिएटिविटी वी कैन सी. सेम थिंग वन हैव लर्न इन द सेम क्लास. आप बच्चों के अंदर देखिए, आप पढ़ाते कुछ और हैं एंड दे राइट समथिंग एल्स इन देयर ओन वर्ड्स. दे आर एबल टू डिस्क्राइब द थिंग्स. दे आर हैविंग दैट क्रिएटिविटी. ये क्रिएटिविटी अगर बच्चों के अंदर हम लोग कर दें और इन्हांस करें और इसको जो बूस्ट अप करें, it is really good to form a new way, है ना? और वो वाले जो होते हैं कि my way is highway, they will be not able to do those things, है ना? Things need to be seen from other side also, isn't it? So this is about the creative thinking
क्रिएटिव थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है ना, यू ऑल कैन सी दिस प्रोसेस. इट्स अबाउट द परसेप्शन एंड फैक्ट्स. It's all about the ideas and it is about the solutions. These are the very important thing for thinking process of creativity. Social skills. Social skills जैसे मैंने अभी बात की कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के कुछ नियमों और उसके तहत हम लोगों को बहुत सारी चीजें करनी होंगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं शो करना होता है समाज को कि वी आर ऑल्सो नोइंग अबाउट दिस. हम आधा ज्ञान लेके बांटने चलते थे, अर्जल गगरी छल कर जाए. हिंदी टीचर है, 21वें सेंटेंस में यूज होता है, अर्जल गगरी छल कर जाए. हाँ सर, हाँ, मतलब थोड़ा सा ज्ञान हुआ नहीं कि बांटने चल दिए. हाँ. तो ये सारी चीजें जो होती है ना, आपको समाज में कई बार समाज में कम्युनिकेशन करने की जरूरत होती है. मैं सही बात बोलूं, समाज में अगर आप बोलते रहेंगे, सलाह ही ज्ञानचंद ही रहेंगे, भैया मैंने आपको बताया ना, ये घर बना ले, जितना घर बन रहा है उसके सोचते हैं इनको सलाह दे ही दे. आपको देख के अगला कटने भी लगता है, ये आ गए ज्ञानचंद, इनके पास बहुत सलाह. वो सोशली अच्छा इंसान नहीं हो पाएगा, वो सोचता है कि हम बहुत सामाजिक है, बहुत सामाजिक है, लेकिन वो कई बार ये नहीं ऑब्जर्व कर पाता, इसको देखते ही आगे लोग भागने लगते हैं. Isn't it? तो सोशल होने के लिए दूसरों की सुननी पड़ती है. सोशल होने के लिए गलती ना होते हुए भी सॉरी बोलना पड़ता है. आजकल के बच्चों के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि वो सॉरी नहीं बोलना चाहते. They don't want to apologize, they want to prove themselves that they are right, you are wrong. And nowadays parents have also feeled like this. ये तुम्हारी गलती नहीं थी, टीचर ने ऐसा क्यों कर दिया? There is question like that. Parents are raising, that is why the students are coming with us. हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं, मार खा के आए हो मार खाओगे. हाँ, इट हैपेंड विद अस. हमारे ऐसा टाइम में ऐसा नहीं था, हम मार खा के आते थे तो मार ही खाते थे. दे आर नॉट गोइंग टू एनालाइज. वहां वकालत नहीं चलती थी क्यों मार खा के आए, टीचर की क्या गलती थी, बच्चे की क्या गलती थी, नहीं होता. बट नाउअडेज पेरेंट्स आर वो वकालत करेंगे. अबे इतनी वकालत मत करिए, वकीलों की घटना पड़ेगा बात. लिटरली ऐसा ही होगा. जो अपने बच्चों को, उनको कई बार लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है, रिलेशनशिप की भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैं सबसे कहूंगा सॉरी बोलते हट जाइए, छोटे नहीं होंगे, छोटे नहीं होंगे कहीं पे भी. रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप में भी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में तो और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं. आप ज्यादा ज्ञानी हैं, लिटरली सर्वाइवल के लिए डिफिकल्ट होता है ज्यादा ज्ञानी होना. एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? यहाँ 4 पिलर होना चाहिए तो सीनियर सही नहीं 3 ही होना चाहिए. नहीं सर, मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए. दैट इज द थिंग यू हैव सेड योर वर्ड्स, लेट द बी 3. I have observed, I have done these things in my life. नहीं सर 4 ही होगा, लड़ जाए. Let it be. उनका है, they are senior than you, उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. कुछ भी होगा तो यू आर नॉट द आर्किटेक्ट, और दैट आर्किटेक्ट भी है. ठीक है, मालिक को है, पैसा वो लगा, ठीक है, 3 ही होगा. गिरेगा उनका गिरेगा. अगर आप उसी समय खत्म कर देंगे तो वो लंबा रिलेशनशिप गिरने में तो लगेगा ना 6 महीने. 6 महीने सैलरी, पर्सन का सैलरी 6 महीने की बढ़ जाएगी. लॉन्ग टर्म में उनको समझ में आ जाएगा, है ना. सही कह रहा था, 4 होना चाहिए था, हमने 3 करा दिया, पैसा बचा लिया उस प्रोस्पेक्ट में. इज़न्ट इट? है ना. तो लॉन्ग टर्म में समझ में आती है किसी भी चीजें. आप भी खुद एडमिट करिए लाइफ में अपने. आपको भी कहा गया होगा पेरेंट्स की वजह से और कई लोगों की वजह से कि तुम्हें ये एबिलिटी है, ये कर लो, आपने वो नहीं किया, दूसरा किया. आज आप सोचते होंगे उनकी चीजों को. और यही होता है लिटरली हैपेंड विद अस. जब हमें कोई आसपास के चाचा, मौसी, मौसा कोई भी आते थे, कहते थे पढ़ लो बेटा, बहुत क्रूशियल टाइम है, 9 से 11 का, यही पढ़ लो तो जिंदगी भर काम आएगा. तो लगता था प्लीज अब छोड़ दीजिए ना, आज हो गया आज का. हम उनको यही सोचते, आ गए कल फिर अब लेक्चर शुरू, बुलाकर भी पूछेंगे तुम्हारा सिलेबस कहाँ तक पहुंचा, है ना, ये चैप्टर पढ़े कि नहीं पढ़े. यू आर हैव ऑब्जर्व्ड दिस काइंड ऑफ पीपल अराउंड. आज हम वही करते हैं, यही लेक्चर्स, वही बातें हम लोग बोलते हैं. बेटा पढ़ लो, बहुत क्रूशियल टाइम है, पढ़ लोगे तो और अच्छा होगा, लाइफ में काम में आएगी.
है ना? लेकिन थोड़ा थोड़ा बचा लेना चाहिए, बच्चों से घुमा फिरा के पूछना चाहिए, है ना? बच्चे इससे थोड़ा सा ऑब्सेस फील करते हैं। तो सोशल स्किल्स मतलब सोशली वेल बीइंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत जरूरी पार्ट होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दो लोगों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ये क्या है, इसमें बहुत सारी स्किल्स आती हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। एंड सोशल स्किल्स इज relating in positive ways with people we interact, making and people friendly relationship, maintaining good relationship with the family members, ending responsibility constructively. इसमें valuable interpersonal skills in your career. करियर में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Caring, active listening. If you're not a good listener, people will not going to interact you so frequently. Communication का मतलब होता है टू वे, बातचीत हो पाना। Effective communications, effective communication को effective बनाना। हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन को effective बना सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी चीज है। आफ्टर डूइंग many of the technical courses, if one is not good in communication skills, he or she will be not able to survive in the particular field. It happens. Effective communication होना बहुत जरूरी है। आप, you know, the people come to you, it's all about, sometimes it happens. आप लोग देखते होंगे, चीजें कई बार देख के ना जाते। Person is not saying something, so body language also says something. How the person is dressed up. You all are able to see the medical representative around the doctors. कैसे पहचान लेते हैं इनको? उसका बैग भी दूर रखा होगा तो भी पहचान। They are good in attire, very well dressed they are, well groomed they are, isn't it? Other person is coming to your office, you will be able to get that. वो किसी purpose से आ रहा है, किसी कंपनी का representative. तो दिस इज ऑल्सो पर्सन इज स्माइलिंग, आपको देख के मुंह बना हुआ है, उसे लगता है कि इनको नाश्ता नहीं मिला होगा घर में, है ना? इफ समवन इज कमिंग विद छोटी सी स्माइल के साथ आ रहा है, लग रहा है कि नाश्ता करके आया है, कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसकी वाइफ भी अच्छी है, इट हैपेंस, है ना? और ज्यादा नाराज रहिएगा तो सोचेगा कि वाइफ से कब, हाँ लिटरली, इसलिए स्माइल करिए, वो जानने के लिए कि घर में सब ठीक ठाक है ना? नाश्ता मिलता है ना? और पुलिस को ये भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि टिफिन में क्या आता है ना? टिफिन देख के जान जाते हैं कि घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं, है ना? लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, है ना? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब आपका होगा तो आप प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेंगे, हमें लगता है। टिप्स फॉर डेवलपिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स: लिसनिंग, non-verbal communication, being clear, being conscious, being confident, being personable, being patient. Empathy, sympathy सबने सुना, empathy के नहीं सुना? Sympathy, empathy, sympathy और empathy. Empathy is feeling the pain of others. Empathy is about the feeling of pain. Sympathy. ठीक है, अभी एक मैं वीडियो प्ले करूंगा और फिर उसके बाद सर विल कंटिन्यू, और उसके बाद जो थोड़ा सा सेशन रह गया विल कंटिन्यू विद दैट। सर इट इज देयर, आई जस्ट सी इफ आई
बारे में एक बार फिर से प्ले कर दो, हम जैसे आस्किंग Just you explain it a little bit. नहीं, एक्सप्लेन आप लोगों को करना है, फ्लिप Yes, yes. है ना, जो हाथ जस्ट रेज द हैंड हु वांट्स टू एक्सप्लेन, उसे लगता है कि सबसे अच्छा कोलैबोरेट कर सकता है. I can correlate with another example. In just one sentence, I want to say this. I can correlate. दर्द तब महसूस होगा जब अपना हाथ कटेगा. Yes. और कोई इसको और अच्छे से एलोबरेट कर सकता है? हाँ जी मैम, प्लीज. Sir, I would like to narrate a small story regarding this. Sure. There was a boy. I'll go to the next session. There was a boy, and he grew up, but he was very lazy, did not want to work. So his father was actually fed up with him. So he asked him that somehow, anyhow, I don't know how you will do, but every day you have to give me 10 rupees at the end of the day. You have to work for it and bring it. So the boy went out. Every day in the evening he would come and give 10 rupee note to his father. But his father would not take it and would ask him, throw it away. The boy would throw it. Every day. Continued for many days. One day again the same thing happened. The boy came in the evening and he gave a 10 rupee note to his father. The father repeated, throw it away. The boy started screaming. He did not throw that money because that day he had actually earned it, and the rest of the days somehow he had stolen it from somewhere and bought it. So when the father used to say, throw it away, he would throw it because he never knew how to earn money. So one final day when he earned the money and when he was asked to throw, he could not. So this video also says almost the same thing. Every day the wife used to polish his shoes. They would just go around carelessly, put his shoes in the water and the mud and come back with the dirty shoes. One final day the wife got fed up. She just threw the shoes as it was, and that day he had to polish it himself. And that day we could see he very carefully stepped out of the water, did not put his shoes in the mud, and that day his shoes was clean. And even wiped it with a piece of cloth or tissue paper. So, moral of the story, unless and until we work ourselves, we do not know the worth of others' hard work. Acha, one more thing. Males can observe very. They have observed or not? Male teachers are supposed to observe very well. Otherwise, isn't it? No sir, we are not like that. We are doing. नहीं, वही तो कह रहे हैं, समझना चाहिए. Isn't it? We cannot generalize this. No, I'm not generalizing things, but consciousness is also a thing. One is supposed to be conscious about We have been these brought up in that way. You can change these things. खाना बनाने में ये चीज आती है, आप प्रिपेयर करके वापस लेके जाते हैं. That also cook. I have. हाँ, ठीक है. Exceptions are always there. Exceptions are always there, isn't it? है ना? But चेतावनी है ये. But we cannot generalize it. नहीं, जनरलाइज तो होती है, चीजें जनरली होती है बस. चीजें जनरली कही जाती है. आपके प्रोस्पेक्ट में दैट इज एक्सेप्शन. आपको सकता है खाना भी घरवाली का बना के आए, है ना? नहीं, किसी का पेरेंट्स का बना सकते हैं, किसी के भी प्रोस्पेक्ट से ऐसा हो सकता है. Also this that there are exceptions also. हाँ, देयर आर ऑलवेज. Say this. कोयला भी 100% काला नहीं होता. Exactly. बस वही बात. एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, है कि नहीं? ठीक है. I just hand over to Manin sir. He'll continue, and when my sessions will come, again I'll show you one more video about it. और एक स्टोरी के लिए तैयार रहिएगा. स्टोरी आपको सुनानी है, स्टोरी बनाइए. थैंक यू सर. अगले अपने सेशन में वो स्टोरी बताओ. Sir, break, sir.
So, some new skills are there also, as even the beautiful concept about life skill. Let us do something more about that. As in this slide, you can see that some traits are there: self-awareness, effective communication, problem solving, interpersonal relationships, creative thinking, empathy, coping with stress, decision making, critical thinking, and managing emotions. These are the techniques, these are the traits. It is given by a well-known psychologist. The name was Howard Gardner. He has given the theory of multiple intelligence. According to Howard Gardner, we know that 8 traits he has already given. And one more concept was that these all skills are very important for us for day-to-day life. Self-awareness. It is called know yourself. In interview, we are facing day-to-day challenges. Tell me about yourself. Give your introduction. These are very common questions. But the effective thing is that if your quality and your skill is not correlated to each other, then it will be called a false representation. We know that whatever our skills we possess and whatever we have academics, qualifications are there, but beyond that, we have to once again overview these things. If we have any weakness or if we have committed any mistake, then we accept it. Because as sir told you that making sorry or feeling sorry is not bad. If I don't know certain thing or certain quality, then we should try to realize it. And it is very important. We know that the children is innocent and his quality is very natural. And anyone if facing a particular children, we know that we have to be very positive. Because during that time, he wants and he asks a lot of questions. One scientist stated that a brain of a child is a brain of a genius. We know that his questions is so many dimensions are there. Many type of things he want to ask at the same moment. And we are facing it day-to-day life. So, if a particular question, if we give the answer in some vague manner or ambiguous manner, then it will be very dangerous for the brain of a children. Because his brain is very sensitive. Whatever you feel, that child grab it according to the time. So why not we put the positive ideas? Why should not we put the beautiful ideas in our mind? In literature, so many good stories are there. I want to ask a question from your side. What is the need of such kind of stories and poems? Anyone? The teachers who are in the field of literature, I request him or her, please give some ideas. Why there is a need of this kind of moral stories and poems? Anyone, ma'am? Stories can convey the message. Yes, ma'am.
Stories can convey the message more effectively. Thank you, friends. Any other teachers? There's an idea about poems and stories. Why it is very important? Anyone? Through the stories, whatever they learn, they can inculcate in their life and become a better person. It helps them to become a better person through the models that they learn. Beautiful answer. We have already studied or give some examples according to the time, like Mahabharata, Ramayana. Our ethics is that the child who possesses such qualities. If we are giving the example of Lord Rama, our perspective is that whatever the quality of Lord Rama had, a child should possess such kind of sanskaras and manners and behaviors. This all life skills is all about how we behave, how do we feel to the others. And suppose that if you have so many qualities, but the main thing is that how you can give the reputation at the same time with your deeds and activities. These are very important. According to it, there are the sessions of activities, so be ready for that. And this session is related to some effective activities. So, and They'll go for a tea break. okay, sir. So after there is a session of tea break, and after tea break, we will do some activities. Thank you. 10 minutes. After 10 minutes, After 10 minutes, we'll get back. welcome back to the session. As I told you that some activity will be there, and the beauty of this program is based on multiple types of activities, by which we could try to give you some basic technical skills of this program. First of all, there is a formation of groups, because this is a group-oriented learning. So I am requesting you to all, please make a proper group by which we can distribute these sheets for your better progress. Some groups will be there. Four rows are there. I think 180 participants are there. Okay. So, what would be the idea? Idea was like we are sitting like this, we can have four other things like that. We can have. That will be more easy. No, sir, because in this way, 13 people. Yeah. See, we 30 can groups are have supposed to 4 form, people in a group. Just form 30 groups. So simple 30 groups will be easily formed. Otherwise, shifting, changing, it will take a lot of problem. So 4 sitting together, yeah, like that we can have. So the conclusion is 30 groups, and there will be a group leader for each group. You all have to decide. So better it is you have to friend it is based on your own choice.
distributed? Yeah. You have already selected your group leader. So that sheet is already there, and just do it now. Before you start the questions, first of all, write your name at the top and from which school you are from, that you have to write there. And then, yes. Group name also, yes, group name. Group name or number, whatever you feel easy, that must be there. All the participants are requested to make a group and then number is there. You have to decide number. Yeah, 1, 2, 3, and so on. Then how you only gives a number? You only give number for each. Allot a group number. Not the group number. Allot a group number, sir. Okay, sir, just I'm trying. From this one, In each group, 4 participants. yes. 4, okay. This is 1. That for 2, that is 3, 4, 5. These all rows 5. In the same way, this is 6, 7, 8, 9, and 10. And again, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17. Last 3, 17. After that, 18, 19, 20, 21, 22. These all 3, 22. Ma'am, these all. Yes. No, ma'am. Order will be changed. That's why we put the series in this way. If some man is there, please take your place. It would be better to count. No, ma'am. In this order. Yes. Then you just go arrange here. I have already given 5. Yes. No, ma'am. 1, 2, 3. Yes. 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 For this activity, the standard time is 5 minutes, and within 5 minutes, you have to solve. I have given those, just right now. Yes, I think. No, number, sir. Number. Sir, here is, just listen 1 minute. 6 is 4, 7, 8, 9, and here is 10. Then 1. Yeah, 4 members are there. Okay, and from here, 11. Okay, 11. There is 12. Group 13. Ma'am, please listen. 13. There is 14, 15, 16. Sir, 16. 17. 18. You all are 18. In the same way, 19. 4.
Passbook is 23. Okay. You all have completed your work. We must go through the time because the standard allotted time is 5 minutes and try to complete within 5 minutes because so many activities are there.
Yes or no? Okay, sir. So, ma'am and teachers, please stop it and please hand over it. If you have copied it, please pass it to me. Okay, ma'am. Ma'am, please. Name and school name. Ma'am, if copied it, please. Time up. Sir, if you have completed, then too fast. Sir, please. Time up, sir. Time up. Sir, time up. Thank you, sir. Actually, those who have not submitted, please do fast because some other activities are there. Sir, why you are giving extra time to everyone? Time up, man and teachers. Please stop. Every activity is designed and it has a specific time allotted, 5 minutes. And Otherwise, overthinking will come. That is also harmful. एक बार में जो हो गया that is good. हर चीज का बुरा अच्छा होता है. Even Supreme Court judgment also can be analyzed by someone else. That is not the perfect one. so I think everybody has completed his activity. Now, the conclusion of this activity, why it has been given to you all. You see that some questions are there. 3 common situations in which I feel stressed. Second, when I am stressed, my thoughts are. And third, when I am stressed, my feelings are. Stress affects my health in the following ways. And last one, when I am stressed, what I normally do to make myself feel better. We know that these are very general phenomena, and I think, I am sure about it that everyone is facing the same situation. Yes, because this is a peculiar problem. In day-to-day life, so many problems created. Sometimes it was different, and sometimes we are trying to cope up with this kind of situations. So this, the another perspective of this activity, that you can say that it is just like an stress management. How to manage our stress tactfully. We all are working person. We all are professionals in our different fields. And
the basic thing is that if our work and we do our work professionally, so whether we are eligible to face these challenges or not, whether my ability is capable to face such kind of scenario or not. If boss is there, whether we are able to face his anger or not. These are real life management skills. Sometimes the situation is that when someone is ready to want CL form and go to the principal chamber for coordinating the CL leave. During that time, if mood is not favorable to the principal, and during that time he fired. Why there is a need of such kind of things? You have lose your mind. You just lost your ability towards the students or the administration. So many things happen in these regards. So our skill is that it is better to say sorry if there is a guilty or if we have committed any mistake. But if I am right, my perspective is right, then we face the situation. In another phenomena, if the child or my own word is not attempting the good result, his score is not as much what we have expected during the examination. That was another scenario. Our expectation of our child is very high. One more perspective is that if during my own study I was trying to attempt in UPSC and other exams, but I was not succeeded, and this thought is transferred towards the child, and this could be just like a dream which could be going to be fulfilled from our side, our parental sides, and it could create a lot of problems. If the expectation is very higher than desired, but the situation is not favorable, then it makes us stress, and it creates some problems. Sometimes it creates our health in negative ways. So this is a situation we have to try to come back from such kind of situations. Anger is a part of emotion. But if the anger is there, we should try to make it as like a weapon wherever it is needed and at the moment when it is needful. We can face that the challenge regarding a boxer is there or a person who wants to join in an army. In this situation, the anger plays a vital role. It is just like a weapon if we use this thing tactfully. But every time facing the anger situation is hampers our health. It gives the negative result. So it is better to understand that how we can manage these emotions for our betterment. Stressing so much problem, facing a lot of challenges, it gives positive stress and negative stress. So it is better to learn how to combat such kind of situations. So these are the things. Let us do some other slides.
was talking about before the tea break, the concept of multiple intelligence. The theory, it was given by Howard Gardner. We know that everyone should know this skill and try to learn this concept for the betterment. The thing we are observing the social skills. This skill is very important, and this is all about the relationship towards parents. If we are in a school, then trying to make better relationship to the boards and also as well for their parents. If we are in our society, then doing these relations in our common sense, whether our behavior or activity or our skill is better or not. In this situation, so many situations happens. Like in parties, someone is there and facing some troubles, and he wants to possess some ideas. As sir told you that, given some examples, that in day-to-day life, our expectation and our feelings gives some examples to the teachers or the persons of the society. But sometimes it not gives the better presence. Suppose that someone is completing IIT or MBA, then the mind of the society is not thinking that whether the student is facing a lot of challenges, and in the situation of his labor, effective labor, he gives the result. The generalization prospection is there, perception is there. It was its luck. That's why he has tried in this field. Our society gives the tag of luck. They are not observing behind the labor, effort, hard working. So it was the case. If you are progressing in your life, maximum people thinks that his luck is there. They all not are observing that his determination, his dedication to the work, his modulation of his art, by which he or she touch the mark of that field wherever he wants. So these are the situations which is rising day-to-day life. And more of us, some situations are there. Suppose that many, all are doing the progress card, filling the result of the student in every subject, numbers are there. But one question is there from my side: how you know your own marks when you are in LKG or UKG or class 9? During that time, if our result was not good, so many problems were there. Now in present time, the CBSE has already banned the corporal punishment towards the children. The CBSE don't want to beat the children. Beating is not a perspective. It is not a good way for providing better education. And it is good also. But during 80s or 90s, the trend of education was that spare the rod, spoil the child. This concept was there. But still right now, this theorem is obsolete regarding the new problems when we have faced. Present time is there, a lot of problems are there. Because you know that the students are going to be very tech savvy. They know many technical skills, and they have already had these skills also. They can handle the phone better than you. They know many techniques in this computer era.
they have some interest, but the problem is that they don't know what is good or what is bad, what could be selected or what could be rejected. And the problem regarding the parents, as suppose that we all are teachers, but still there is some lackness in our knowledge. Suppose a child who is near about to adulthood age, and also the premature time, his interest is diverted during that time. We know that the particular child is studying from the internet or Google, but what he is going to search, in which part his time is going to be spent, which type of study he is making, whether it is right or not, he doesn't know. Maximum time when the problem of science or math or any other thing is there, the ability to search the answer from textbook, he does not face the thing. He just want to that thing, just like a plate is there, a dish is there, and when the type the answer comes back in a literal way. No label, no particular thing is there. He wants or go through the shortcuts. My question is that, is the way the students are going to apply these things, is it right or not? Is this right? Yes. It is the weakness of the student that he does not take the pressure of the study. Whatever the teacher gives the lecture in the classroom or whatever the assignment is given to the students, every time they try to search the shortcuts. We can take the example of project work. It is a very important part of CBSE. Not only CBSE, but higher studies also. In management, in engineering, in medical science, in law also, case studies are there. But the shortcut method is that if a person is doing LLB, his intensity is also there to give the shortcuts from the net and putting the problems to the professor. These methods is good, but in some perspective, this method is not good. Project work, in the same way, printed assignments are there. They doesn't take any kind of pressure to write their articles from searching the books in the library. Every time, just go through the shortcut methods. And during the time of submitting the assignment, they just take the printed material and submit to the teacher. But in real life, when a project is given to the student or the employee, his ability is not to do the work within time. The deadline crossed. When I was a student of management, so many programs were there, so many projects were there, and it could be done in the group work or you in your perspective. Either you purchase a book or go through the market or search some book of library and then you have to do. There is not a particular format for that particular assignment. There is no shortcut. And if the student did the same thing in real life, so many assignments are there, they can face this situation easily. My objective is that to give the better knowledge of these things. Such kind of things doesn't take very easily. These all assignments or project work is very helpful when
particular student is ready to apply for engineering or any other field. This is a time to face the challenge really, not passing the time in shortcut method. So let us do some other activities regarding it. Some other skills are there. After that, we will do an activity. Managing emotions. Here you can see various pictures of emojis. And in day-to-day life, we all are familiar with the WhatsApp or Snapchat or Instagram like that. If a message is there, instead of typing a message, we place an emoji. In real life also, we are doing the same process, whatever the students going to apply. At that time, it was the time of 70s or 80s where inland letters are there. We are on that time writing a letter, and by the process we send it to our loving ones. But this time, this present time, this habit is going to be obsolete nowadays. Whether it could be time of birthday, wedding anniversary, or any other occasion is there. That was the time when we are purchasing the cards or bouquet, and at the time of celebration we take and share to our loving ones. But this beautiful moment is just change the scenario according to the time being. Offbeat situation is there. Instead of card or bouquet, the place is taken the electronic card, electronical messages, where messages is already printed and only just we select, or free download clip is there and just only pass it to the wherever we want. This is called the digital era. We are not taking the pen, but this is not a beautiful emotion. If you are typing a letter, instead of pasting or cut copy paste method is there, you just try to use once and then find out the results. Which was more effective? The download version or the electronic card, or typing a letter, taking your some pen and passing towards the loving one. You just feel the difference. One more example. To pay the proper respect to the elders. Now this version is also going to be obsolete. Charanashpas. This sanskara is not there. Namaskar. This sense is also going to be avoided nowadays. This type of thing just taken in the way of abusive languages. In school premises, most of the students use slang words, slang languages, vulgar words. The question is that how it comes? When literature is there, beautiful articles is there, the library is full of these books, then how it happens? It happens on the way of making reels in Instagram, in YouTube. So many reels are there. Many of the students passing the time to pressing or skipping the reels. Only it is a way of passing the time. It is a situation when everyone has to think. It creates the emotionless feeling where we are
going to a seminar of CBSE, the beautiful things were there, which I want to share with you. Try to make a mobile-free zone in your home. It could be a better place. Everyone has a place, particular place, whether he wants to sit or sleep or take rest. Make it yourself. Making zones like anger-free zone, mobile-free zone, that we must have to try. We can take the example of bed. Sleeping bed is there. Just make a rule that no one come in this room with mobile phone. If you have to enter the room, you must have to keep the mobile phone from some other side. Nobody will come with that. It could be an idea or a better perspective that sometime we have to free these technological gadgets. It works just like a virus. Suppose if this training process is not there, then I am sure about that all of you very sooner will busy on sending the messages or something on the mobile phone. It happens nowadays. So if technology, my concept is that if technology is there, technical gadgets are there, then there is no place of emotions. It is not a version. We are not downloaded version of the digital era. Our feelings are there, our emotions are there, and we must have to inject the students which they are, who wants to take it in positive way. So this emotion is very important if we pay in positive way. Next is coping with stress. This situation, the activity, whatever you have submitted it to me, it was all about the stress. And I think it is too much to say about this stress. Everyone, we know that facing the stress and they have the ability how to come back with it. A concept is here, all these skills are interrelated and reinforce each other. Together, they are responsible for our physiological competence, build our self-esteem and self-efficacy, and nurture holistic development. Here is a concept all about development. It is called, in some other ways, the concept is holistic development. I want to answer from your side. Actually, what does it mean, holistic development? Anyone? Yes. In Hindi, a beautiful word is there, Sarvangin Vikas, overall development. As a point was there, when concept was that 3 triangles were there, social skill, thinking skill and emotional skills. It makes a triangle. In this real world, holistic approach is an objective. For any kind of training purpose, the concept is that how our life could be in a right path and our ability and our experience given it to a beautiful manner, and also in this kind of things, whether our ability is making the situation interest or not. So it is better to learn these things in a positive way. So these things indicates that our quality, our techniques, our skills, it could be beneficial
not only for our child but also for their holistic development. Once philosopher was there, his name was Rousseau. His concept was that learning by doing. This holistic approach makes the same sense. Learning by doing. Experiential learning. Yes, experiential learning. It is better than to give the lesson. It is better to put a situation. When the particular situation is there, it is very easy to find out the answers according to that particular person who is facing the problem. There is no need to say that there is fire. A child is sincere. If he go towards the fire, he already understood what is the nature of fire. So it is better, don't place a scenario or don't give the judgmental ideas. Just face them. Our concept is that to inspire or to motivate the children to the particular situation and give the proper space to learn. Don't give your opinion or your judgment. If you want to, a child develops in his own way, then it is a better method, it is a best method to give her more space to learn, not to give your opinion. In present time, in the classroom, the student wants what is the new concept corresponding to particular subject. They have not so much interest in your abilities or your academics or your experience. They only want the result. So it is better to prove your ability, to give the situation, put the situation, and just do some activity in the classroom. It's a better way, it is a better situation to learn in this new experience. It is a kind of, as I told you, blended learning. A method, a situation. It is also called a situation-based learning. Try to put a situation. A method is also there, problem-solving method. I want to ask a question. Name the psychologist who has given the concept, this problem-solving method. Anyone from your side? A psychologist who has given the concept, problem-solving method. Anyone? It's in Howard Turner, means he gave everything. Sorry, ma'am. Please raise your hand. No. Sorry. It is Thorndike who has given the concept of trial and error method. A father of concept who has given the trial and error method. You know very well the concept of cat. A cat was there in a cage and the piece of bread is there outside of the cage and the cat jumps inside. But so many attempts, once a time his leg just click it on the handle of the door, and at that time the bird the cat take the bread or slice of bread when his leg was onto the point of leaf of the cake. No sir. This is called the stimulus response theory is given by the bear Skinner. RS responding, it was the saliva, it was different. But I am talking about Pavlov theory. Saliva is a Pavlov. Saliva is classical operant conditioning.
Here I am talking about trial and error method. These all methods are different. In this case of cat, operant conditioning. yes, the cat tries a lot of times to taking the bread, but when his leg touch the leaf of the cake, and at that time the slice of bread comes. This situation or the condition is called trial and error. In our day-to-day life, we are facing the same thing. Attempting a question, whether it is mathematics or any other question of physics or chemistry, whatever, a student tries that particular concept and tries it to do the same theory. And in a particular moment, he is near about the result. We are facing the same scenario in our project work is there or some assignment is there. It is a very practical concept. On the other hand, he has also given the theory of problem solving method, where 6 steps is there. From your side, I want your response. What do you know about problem solving theory? Please, it's your time to give the response. Problem solving method. Actually, what is it? Anyone? Yes, sir. Problem solving method is a method through which we could mold the personality and development of the child. Thank you, sir. Any other teacher? Ma'am, also? Because it's a very scientific method. Anyone? You are free to share your ideas. Because the objective of this training program to learn some new things, to learn some new skills. So, coming back the point, problem solving method. In this method, 6 steps are there. The first is, a situation is there. This method starts with a particular situation. A situation is there. Suppose apple is there in front of a child. He wants to have it. You observe all the situation of the child. Someone tries to bite it. Someone tries to scratch the apple. Some wants to cut it. Other scenarios are there. It depends upon the child to child. It is variable in nature. Problems, if there is a problem, suppose interview, a situation, it is variable in nature. Someone facing positive, someone facing stress, someone more stress, a different condition was there. The first thing is that a situation was there. After that, suppose there is a bigger problem. The thing is that how many pieces you cut it. Or the concept is that how you are facing the same situation. What is your prospect? What do you think for that particular situation? And third, just break these all things into a small piece and go through a particular case. A bigger situation is there. You have cut in more than 10 situations, and every situation is very important. Next step is that you just pick one situation and find out the result. After crossing to go to the second one, face the situation and got the result.
This is a situation, this is a method, and finally you are very near about to the conclusion. As like the sum of mathematics. Sometimes all problems are not easier. Some are very technical and some are very difficult. The proper method is that go through the approach, go through the steps, and after making a lot of errors, finally you get the result. This concept was faced by the Thomas Alva Edison once upon a time when he just invented the electrical bulb. Once a critic asked a question, "Sir, how you can say that if you have invented an electrical bulb is a very surprising invention?" In my opinion, this invention has no importance. What do you think? Edison told that critics, "I know the 99 methods which are not favorable for making an electrical bulb. There is only one method by which the electrical bulb could be made." The concept is that if we are making some mistakes or errors, it doesn't mean that there is no importance of our life. It gives a positive energy that facing a problem and getting the result is two different conditions. Getting a result is just like an output, and facing the problem is a general concept. So the conclusion is that if anybody wants to get the result, he has to go through the same situation. And if we are making the mistakes, it doesn't mean that there is no result. It is an experience that according to Thomas Alva Edison, 99 methods is not suitable for making an electrical bulb. That is only one method which breaks the law and gives the result. In day-to-day life, it is a beautiful concept of problem solving method. All we are facing the same problem, but it is different concept, different scenario. Everyone has his own background, own culture, own religion. But the better way is that how we can cope up with this situation scientifically and effectively. So, a best method is to give the space to learn. There is no moderation. Feel the nature, feel the emotion, and find out the way for final outbreak. So this is the concept how we can coming back the situation which we are facing. On this method, there is another activity is waiting for you. Are you ready? Yes. Thank you. Just I want to show a video. It's always about that in our students, and even we'll see about our children also. We expect so much from them, but what we expect, we do accordingly. The thing is, as Sir said, that there should be a mobile-free zone, anger-free zone. We ask always, very frequently, don't use mobile. Are we doing the same? Literally, the thing is what is applicable
we need to relate with those things. Ultimately, we need to impart so many things in the students. Students के अंदर इम्पार्ट करने के लिए पहले वो हमारे अंदर होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, तो गुड़ खाने की बहुत आदत थी कि मुझे गुड़ खाना है, छोड़ना है, गुड़ खाना कैसे छोड़ो? तो उन्होंने कहा आज आप इसका जवाब नहीं दूंगा। बोले एक हफ्ते बाद लौट के आए, बोले कि पहले खुद गुड़ खाना छोड़ दूं, तब मैं इनको बताऊंगा कि गुड़ खाना कैसे छोड़ना है और क्यों छोड़ना है और क्यों नहीं अच्छा है। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, हम कई बार बहुत कुछ ऐसा फीड कर देते हैं बच्चों के अंदर कि वो भी उनके लिए अच्छा नहीं है। I'll just tell you one real story. My professors used to tell about these things. In BA, they taught us. He was sharing a real experience. I have heard about this. उनका कहना था कि उनके साथ एक रियल लाइफ की सिचुएशन ये हुई कि वो जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहां पे ऐसा हुआ कि एक बच्चा नर्सरी से लेके 12th तक हमेशा फर्स्ट आता। फर्स्ट से ब्राइटेस्ट स्टूडेंट रहा होगा, ऐसा होते हैं हमारे आसपास भी बच्चे। कभी सेकेंड पोजीशन उसने लाइफ में नहीं देखी। जो ऐसे बच्चे हैं वो फिर IITs में जाएंगे। IITs में गए, है ना, he scored well there, IITs में उनका बढ़िया प्लेसमेंट हुआ, बट पढ़ने का इसके अंदर अलग होता है। तो जस्ट ही मूव टू IIM also, he has cracked the CAT और for IIM and all। उसका फिर IIM में एडमिशन हुआ अहमदाबाद में, and he placed in a मल्टीनेशनल कंपनी और बहुत अच्छा उसकी लाइफ में सब कुछ चल रहा था, अच्छी शादी हुई, सब कुछ। बट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब गिरा था? 2007। बहुत ज्यादा उसके बाद रिसेशन आया था, जॉब्स बहुत लोगों की चली गई। 2007 में 2007 हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11 सितंबर 2007। ओके, तो वो जब हुए ना, तो सबसे पहले कंपनीज में क्या होता है कहीं पे भी कि सबसे बड़े बड़े जो बिग पैकेज वाले लोग होते हैं उनको वहां से हटाए। इनकेस कंपनी अपना एक्सपेंडिचर कम करती है दैट पीरियड ऑफ टाइम में। ही वाज फायर्ड फॉर दैट पीरियड। वो जो स्टूडेंट था IIT जिसने क्रैक किया था, IIM जिसने किया था, सबसे बड़ा पैकेज IIM का जिसका था, वो he got fired. When he got fired, in next 3 days, उसने सुसाइड कर लिया अपनी फैमिली के साथ। वो, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, तीनों उसको तो उसने दिया होगा सुसाइड कर। Can you believe? उसके पास तो इतना पैसा रहा होगा, उसने काफी दिन नौकरी कर ली, सब कुछ अच्छे से जाता और सब कुछ होता। क्यों उसने सुसाइड? Because you could not manage his emotional stress. Emotionally he was weak. Emotionally he was weak. Academically he was intelligent. Emotionally he was weak. He could not. Yeah. He could not take the challenge. हैंडल नहीं कर पाए। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम यही सोचते हैं कि ऐसा होता तो क्या हो जाता, बट अगर उस जगह हम थोड़े से नेगेटिव हो, सिर्फ बुरा हो जाता तो क्या होता है ना। Here the thing comes कि हमें अपने बच्चों के अंदर लाइफ के डिफिकल्टीज को फेस करना भी सिखाना है। हम अपने बच्चे को घर में ग्लास से पानी नहीं देते हैं, maybe it's there or we are doing it, isn't it? और मुझे लगता है जो 90s के लोग होंगे, कुछ तो होंगे, शादी में सबसे ज्यादा घर के आसपास के लड़कों को दौड़ा दिया था, सारा काम यही करेगा। हम लोगों ने तो बाइक चलाना शादियों में सीखा है, सही बता रहा हूं।
मैंने बाइक चलाना शादी में सीखा है, क्योंकि शादी में ज्यादा काम होता था, तो लड़का देख के यंग बॉय दौड़ो बाइक लेके सामान लाना है। तो बाइक चलाना, घर में बाइक नहीं देते थे, पेरेंट्स नहीं देते थे। आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, मेरे घर में मेरे फादर बाइक नहीं देते थे मुझे 7th 8th स्टैंडर्ड। लेकिन शादी वगैरह ऐसा मौका था कि काम लग जाता था, किसी के साथ कार्ड देने जाना है कहीं, है ना, दूर दूर तक in 90s बहुत दूर दूर कार्ड देने जाना होता था। किसी भैया के साथ जाते थे, भैया उसी में मौका दे देते कि चलो तो बाइक चलाओ। मोस्टली बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा शादी में, और बहुत सारे आसपास ऐसे लड़के भी देखते होंगे जो शादी वगैरह में, भैया जरा बाइक दीजिए देखें, सीख लिए वो चलते चलते ट्रायल फिरते फिरते सबके साथ ऐसा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें अभी मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जस्ट आई हैव गॉन थ्रू दिस, ये जो एक्टिविटी थी, इसमें किसी ने सुसाइड लिखा, अरे जीवन से बहुमूल्य कुछ भी नहीं। क्या हुआ होगा किसी के साथ वर्स्ट, क्या हुआ होगा वर्स्ट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, लाइफ से बड़ा कुछ हो जाएगा। आप कभी उनके बारे में सोच के देखिएगा कि कभी सुसाइड की टेंडेंसी आए, आपके आसपास जो लोग जुड़े हो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। लाइफ में कभी भी लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है, जो आपके साथ कुछ नया नहीं होगा, सारी चीजें किसी ना किसी इंसान के साथ हो चुकी हैं। You are not the only one facing that. And if someone is coming to this tendency, suicide tendency, तो लिटरली आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। पैसा आएगा जाएगा, और पता है आप अपनी वर्स्ट सिचुएशन पीछे जाके देखिए, बहुत पहले कोई वर्स्ट सिचुएशन आई होगी, अभी वही सिचुएशन को आप, जैसे अब सीधी बात छोड़िए, 10th आप जब पढ़ रहे थे तो आपके लिए पढ़ना मुश्किल था, जैसे आप 12th में पहुंच गए आपके लिए 10th इजी हो गया, isn't it? आप बीएड कर रहे हैं तो आप दूसरे को रास्ता बताने के काबिल हो गए। तो वो सिचुएशन, एक डर कई बार नहीं लगता, एक डर एक ही बार लगता है। तो ये सब सिचुएशंस के लिए भी हमें अपने बच्चों को रेडी करना है। जैसे बच्चों के अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, मुझे लगता है। ग्रेटिट्यूड क्या है, कैसे इम्पार्ट करते हैं, हम कई बार जाने अनजाने में ऐसा कर देते हैं। जैसे हम सब्जी लेने बच्चे के साथ जा रहे हैं अपने, और बच्चे से हम सब्जी लेने के क्रम में कहते हैं, तुम लोग लूटते हो यार, क्यों इतना लूट मचा के, तो टमाटर क्यों 250 रुपए का दे रहे हो, लूट रहे हो। टमाटर उसको 200 में मिला हुआ 250 में बेच रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट है, यही ट्रेनिंग है। इज इट इट? am I right or wrong? है ना? भुट्टा, अरे खेत में ऐसे भुट्टा ऐसे पड़ा रहता है, इतना सारा भुट्टा होता है, उसको हम कह रहे हैं अपने बच्चे के सामने, तुम लोग लूटते हो। हम क्या फील कर रहे हैं उसके मन में, क्या फील कर रहे हैं, ये लोग लूटते हैं, ये लूटते हैं। सी द फ्लिप साइड, बेटा देखो ना अंकल कितनी मेहनत करते हैं, टमाटर लेके आते हैं, सुबह शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं, टमाटर लेने के बाद बच्चे को से थैंक यू। एक अच्छा लेसन दे रहे हो अपने बच्चे को, टमाटर लेने के बाद एक मोरलिटी सिखा रहे हैं, अंकल मेहनत करते हैं बेटा, तो किसी की वैल्यू करेगा। इफ यू नॉट वैल्यू योर ड्राइवर, आपके आसपास ड्राइवर है अपना, आप उसकी वैल्यू नहीं करते कि वो खाया क्या नहीं खाया क्या, तो वो आपका बच्चा भी वही चीजें सीखेगा, ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। एंड वन इज वरीड अबाउट कि मेरा ड्राइवर ने खाना खाया कि नहीं खाया, यू आर गोइंग टू बॉदर अबाउट दोस थिंग्स। ऑलवेज जो हमारे आसपास बच्चे होते हैं, वो हम क्या करते हैं इससे सीखते हैं, हम क्या कहते हैं इससे नहीं सीखते। लर्निंग बाय डूइंग सर। हाँ, you can consider this। और किसी के अंदर भी कहीं पे भी बच्चे को लेसन्स बताने की बजाय उनको परिदृश्य दिखाना सीखें। कम टू द अदर साइड, मैं कहता हूं बच्चे को, हर बच्चा, सबके घर में एक प्रॉब्लम होती है कि वो खाना छोड़ देते हैं, थोड़ा सा खाने में, सबके पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अदर पेरेंट्स, वो खाना छोड़ देते हैं, होता है, लाइट्स ऑन छोड़ देते हैं, है ना, लाइट ऑफ नहीं करे, एसी चल रहा है, रूम में कोई नहीं है, कूलर चल रहा है,
रूम में कोई नहीं है तो छोड़ दो। अगर बच्चा 10 से 12 साल का है ना, तो एक प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये मैं कह रहा हूँ, आप अगर करेंगे तो लिटरली आप बच्चे को अपने सिखा पाएंगे। आप अपने अगर 12 साल का बच्चा है, 10 से 12 साल का, आप उसको घर का खर्च दें कि बेटा ये 20,000 रुपीज है, इस 20,000 रुपीज में यू हैव टू मैनेज मिल्क, जो भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं, इसको मैनेज करना। इज गोइंग टू परचेज द दाल, चावल लेके आएगा ना, चावल की वैल्यू वो जानेगा कि 50 रुपए का चावल है, एक दिन में इतना चावल बनता है हमारे यहाँ। उसको सिखाना भी पड़ेगा बेटा कि स्विच ऑफ करना, बिजली का बिल पिछली बार 3,000 आया था, इस बार इसको रिड्यूस करना। ही विल स्टार्ट टेलिंग यू कि पापा आप नहीं बंद करके आए, बाथरूम का स्विच छोड़ के आए, मम्मी आप नहीं करके आए, वहां एसी बंद करके नहीं आए, मम्मी चिमनी की जरूरत नहीं है, आप चिमनी ऑफ कर दो। तो अल्टीमेटली हम बच्चों के अंदर जो इम्पार्ट करना चाहते हैं, वो हम इम्पार्ट अपने आसपास तभी कर पाएंगे जब लेट देम हैव दोस थिंग्स। कहीं पे भी लिटरली करके देखिएगा, 10 से 12 साल के बच्चे को आप करेंगे, वो एक एक चीज की वैल्यू करेगा, वो पैसे खर्च करना अनयूजुअली छोड़ देगा। एक छोटा सा वीडियो है, सर काइंडली प्लीज, बस इसके बाद करते हैं सर। नमस्ते, ठीक हो? हाँ भैया। क्या हुआ? सामान तो काफी बिका हुआ है, पैसे कर लेंगे। हाँ भैया, वो आपका लड़का आएगा, तो मैं 5,000 ले गई। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। पापा, हाँ, एक मेरे को 10,000 रुपये देना। क्या करेगा? मनाली जाना है, मेरे को टूर जा रहा है। अच्छा, कल भी तो 5,000 रुपये ले गया था। पापा वो दोस्तों के साथ पार्टी में गया था ना, तो वहाँ पे खर्च हो गए। चल 10,000 तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। बताओ। तुझे 1,000 रुपये की सेल करके दिखानी होगी यहाँ। अरे पापा 1,000 ही तो है, अभी कर दूंगा सेल। कोई बात नहीं, आ जाऊंगा। अभी आया। ठीक है, आ जाऊंगा। ठीक है, 1,000 रुपये कमा के दिखाने आते हैं। पापा 1,000 ही तो है, अभी कमा के दिखा दूंगा। चलो कर लेते हैं, राउंड सेट कर लो। भैया, हाँ जी भैया। एक फेस वॉश दिखा दो अच्छा सा। मैं दिखाता हूँ। बढ़िया सा दिखाना भैया, जिससे फेस पे ग्लो आए अच्छा सा। ये भैया बहुत बढ़िया फ्रेश है। ये नहीं भैया, अच्छा सा दिखाओ ना, जिससे बढ़िया ग्लो आए फेस पे। कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे हमारे पास। ये देखो, इससे ग्लो आएगा आपके फेस पे ना। नहीं भैया, ये नहीं, चीप मत दिखाओ यार, कोई अच्छा सा दिखाओ यार। एवर यूज कर लेंगे। ये भैया बहुत बढ़िया है। इससे भी चीप दिखा दिया आपने तो यार, कोई अच्छा सा है तो बताओ यार। भैया अच्छा ही तो दिखा रहे हो, सारे अच्छे ही रख रखे हैं मैंने। बढ़िया बढ़िया, इससे अच्छा है कोई आपके पास? लो फिर ये ले लो, ये बहुत अच्छा है। ये लेडीज यूज करती है भैया, ये हमारे लिए है क्या? अरे भैया ये आजकल दोनों यूज करते हैं, टू नहीं इन वन है। नहीं है, ये बढ़िया। आपके पास है कोई अच्छा? नहीं भैया, मेरे पास तो यही है, आपको लेना तो लो। मतलब बढ़िया सामान रखते हैं ये दुकान पे? ये भैया सारा बढ़िया ही है सामान है। और कैसे रखे हैं सामान? बोलने की क्या तमीज है भैया आपकी? ऐसे बोलते हैं कस्टमर के साथ? ऐसे चलाओगे दुकान आप? ये तमीज है, एक तो सामान अच्छा नहीं दिखा रहा, ऊपर से बात भी करने की तमीज नहीं है, ऐसे बोलते हैं? भैया मैं सामान सही दिखाया, वो आपको आप ही कह रहे हो ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, जब मैं दिखाने लगा सारा सामान। तो जैसा मेरे को चाहिए वैसा दिखाना, मेरे टेस्ट का सामान दिखा। ये क्या दिखा रहा है? यही है भैया मेरे पास। पता नहीं मालिक में कैसे कैसे लड़के रख लेते हैं, जिनको ना बोलने की तमीज है, ना कोई नॉलेज है सामान की। यही है कैसे भैया। बंदे हैं? ठीक है भैया, पता नहीं कैसे बंदे हैं। आ जाओ। हेलो मैम,
मेरे वाइफ के लिए वो दिखा दो आर्ट में करे आज भी इधर आ जी भैया क्या दिखाने भैया? भैया मेरे वाइफ के लिए 2 आर्ट में खड़े दिखा दो दिखाते हो ये देखते हैं। भैया कड़े दिखाना, ये क्या दिखा रहा है मुझे? मैंने कड़े मांगे, चूड़ी दिखा रहा मुझे, कड़े दो जल्दी निकालो। ये भैया आपको काम करता नहीं आता? मांग मैं क्या रहा हूँ, आप दिखा पूछ रहे हो, कड़े मांग रहा हूँ, चूड़ी दिखा रहा हूँ। कोई नहीं, एक मिनट रुको। और 2 आर्ट का साइज नहीं है मेरे पास। ये क्या है? कड़े है, चूड़ी है, दुकान खोल के बैठे हो, पता कुछ है नहीं। भैया हमारे पास नहीं है। तो आपको पता ही नहीं है, दुकान आपने खोल लिया, कुछ आता ही नहीं करता है? नहीं आता भैया, नहीं हमारे पास। ये क्या बात नहीं आता है? कितने की सीट कर ली अब तक? पापा कुछ भी नहीं हमारे साथ। कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए पापा। 5 घंटे हो गए, 1 रुपये भी नहीं कमाया आपने। अगर मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ तो आप कितनी देर में खर्च कर दोगे? पापा 1 घंटा लगता है मेरे पास। 1 घंटे में खर्च कर देते हो तो आपके ये तो समझ में आ गया होगा पैसा कमाना कितना मुश्किल है। हाँ बाबा बहुत मुश्किल है पैसा कमाना, बहुत मुश्किल है। पता क्या है, 4 बच्चे ये सोचते हैं माँ बाप से पैसे लो, इन्होंने तो मिनटों में कमा लिया होगा, इनके पास तो पैसों का ढेर लगा होगा, लेकिन कितनी मुश्किल से कमाया है बच्चे ये नहीं सोचते। सारा दिन बैठते हैं, ग्राहकों के साथ उलझते हैं, फिर कहीं जाके हमारे यहाँ 2-4 हज़ार रुपये लगते हैं, उसमें से कुछ पैसे बचत होती है हमारी, जिनको आप है ना एकदम आते हो, ले जाते हो, खर्च कर देते हो। कभी नहीं सोचते माँ बाप कितनी मुश्किल से कमा रहे हैं, कितनी मुश्किल से नहीं कमा रहे। मानते इस बात को? हाँ बाबा। कभी तुम्हारा मनाली जाना, कभी तुम्हारा शिमला जाना, कभी गोवा जाना, क्यों नहीं समझ में आता तुम लोगों को? क्योंकि जो है ऐसा पापा ने बहुत मुश्किल से कमाया हुआ। मानते इस बात? हाँ पापा, मुझे पता चल आप बहुत मेहनत करते हो और मैं 1 सेकंड में पैसे उड़ा देता हूँ सर। ये तुम्हारी बात नहीं, ज़्यादातर बच्चों की सोच है ये, पापा के पास बहुत पैसा है, ढेर मार रखा उन्होंने। कहाँ से ढेर मारेंगे पापा? कहाँ से लाएंगे? पेड़ थोड़ी लगा हुआ पैसों का। बच्चे आते हैं, ले जाते हैं करीब माँ से करीब बाप से और खर्च कर देते हैं मिनटों में, वो भी बिना फालतू की चीज़ों पे। चलो कितने पैसे चाहिए आपको? पापा को नहीं चाहिए मेरे, नहीं पापा आपसे मैंने पूरी मेहनत करूँगा, रोज जुबान पाया करूँगा। बेटा जब तुम कमाने लग जाओगे ना खुद और अपनी कमाई को खर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि खर्च नहीं, थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। आपने कमाया कितना है, खर्च कितना कर रहे हो, सारा हिसाब लगा के चलोगे आप। अभी तो पापा कमा रहे हैं ना, इसलिए आप हिसाब नहीं लगाते। पापा फालतू के खर्चे बंद करके और मैं कल से अपनी दुकान पर आया करूँगा, पूरी मेहनत करूँगा। पक्का? पक्का। चलो ठीक, तुम ठीक मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, मुझे दिखाओगे कुछ करके, तो अपने पैसों में जितना चाहे खर्च कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तुम्हें भी पता चलेगा कि किस तरीके से खर्च करना है। ठीक है? चलो। There was a message, isn't it? Yes. With a small app, we can impart these things like skills. Our students, अपने बच्चों के अंदर भी हम इम्पार्ट कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहने से काम नहीं चलेगा, वी नीड टू शो देम। आप बच्चे के साथ गए रेस्टोरेंट में, उसने पानी की बोतल का पैसा नहीं जोड़ा, बड़ा खुश हो गए और आ गए वहां से, ये उसने पानी की बोतल का पैसा नहीं लिया। व्हाट यू आर गिविंग अ लेसन टू हिम, है ना? और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना? समटाइम्स जो हम बच्चों के आसपास बिहेवियर करते हैं ना, उसको कभी खुद सोचना चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा बच्चों के अंदर, है ना? नाउ सर विल कंटिन्यू विद द एक्टिविटी। तो ये जो एक ये
वीडियो था, इससे हमें इसी की तरह से आपको बताना है मुझे एक चीज जो अपने बच्चे के अंदर आप इम्पार्ट करने के लिए कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसा अभी ये फादर ने किया ना यहाँ पे, तो ऐसी सिचुएशन में बीइंग अ पैरेंट, बीइंग अ टीचर, आपको एक सिचुएशन क्रिएट करनी है, या आपकी क्रिएटिविटी है, आपको बतानी है कि स्टोरी जैसा ही है ना, क्या क्या कर सकते हैं ऐसा कि बच्चे को आप कुछ सिखा पाए, है ना। 100 सेकेंड्स हैं आप लोग के पास सोचने के लिए। मैं किसी से भी आई जस्ट फॉरवर्ड द माइक टू द अदर वन और आपको बताना, यही जो जैसे स्टोरी थी ना अभी, ऐसा ही that is sir right now he elaborate. नहीं लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, बस माइक से बोलना है यहीं पे। आपकी क्रिएटिविटी देखते हैं, यही जो चीज थी जस्ट है ना, बस बतानी है। हम लग रहा है सबका तैयार हो गया। You again. Now, please. Story, no. बन रही है स्टोरी, बन रही है। Anyone is done with that? कोई प्लीज। बच्चे को सिखाने के लिए हम क्या ऐसा कुछ आप कर सकते हैं कि उसे एक लेसन मिले सिंपली? हाँ प्लीज। There is one child in my class. He never wished to write. He has a very poor handwriting. So my mother is also a teacher. She told me one day that you do one thing, give another child to write for him. One day he was written. He was very happy that somebody has done my work. Second day again, third day again, fourth day again. Fifth day he said, coming to me, "Ma'am, मैं खुद से लिखूँ." I said, "Okay, right." And then he told the other child also that तुम मेरा मन लिखो, मैं लिख लूँ. That day I felt okay, I succeeded what I wanted to do. He felt shame कि मेरा कोई दूसरा काम कर रहा, somebody else is doing it. In this way I felt that. That's great. Someone else, please. Ma'am, please. You please. Okay. I'll come back to you again. Anyone else from the male side? हाँ प्लीज एक परिदृश्य बनाइए। कौन सर? हाँ चलिए। मेरे पड़ोसी हैं, उनके खुद वो टीचर हैं और उनकी वाइफ प्रोफेसर है। उनकी एक ही बेटी, जो भी वर्क होता था कभी भी वो परचेजिंग तक नहीं करने जाती थी खुद से। एक बार इसी स्कूल से थी वो, यानी सेंट जोसेफ स्कूल से ही थी वो स्कूल टूर पर निकली। मम्मी से पूछी, मम्मी ने पूछा कितना पैसा दे दो, क्योंकि जो भी पैसे चाहिए वो तो मैंने ऑलरेडी ट्रैवल एजेंट को दे रखा है, तो 5,000 दे दो, सफिशिएंट है इसके लिए। फिर वो निकली यहाँ से, जस्ट भागलपुर पहुंची होगी, रास्ते में जितने भी ट्रेन पर जो भी आता था पिकनिक के लिए तुरंत हाँ अपने सहेली सबको ये खाना है वो खाना है, सारे उसने जो है वो खर्च वहीं से शुरू कर दी। यहाँ से उनको हैदराबाद जाना था। हैदराबाद जैसे ही वो पहुंची, अब उसके पॉकेट में 5,000 में से ओनली 1,000 बचा था। अब जब वहां पर पहुंचती है तो कई जगह वहां घूमने का जगह मिलता है, अब उनको अलग अलग चीज खरीदने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब उसके पास पैसे ही नहीं बचे। जब पैसे ही नहीं बचे तो वो वहां से टीचर के द्वारा कॉल कर लाती है घर पर, ये जानने के लिए कि मम्मी से हालचाल जानने के लिए। मम्मी ने पूछा कि क्या
पैसे और है तुम्हारे पास? तो नहीं, पैसे तो मैंने सारे खर्च कर दिए, अब थोड़े से बचे हुए हैं, तो मैं मार्केटिंग कुछ नहीं कर सकती हूँ। जानते हैं, फिर उसके पापा को लेकर एक काम करते हैं, मैं टीचर के अकाउंट में भेज देता हूँ पैसा, ऑलमोस्ट 5,000 फिर उनको भेजा गया। लेकिन अब जो 5,000 भेजा गया, जानते हैं रिटर्न में 4,000 वापस वो साथ में लेके आ रहे हैं। उसने खर्च नहीं की, क्योंकि उस समय उसको रियल वैल्यू पता चला कि पैसे का क्या महत्व है। शुरुआत में तो उन्होंने जस्ट जैसे घर पर वो कहती थी मेला देखने का, तो वही एक उसका महत्व रखी थी। लेकिन जब वह इस टूर और ट्रेवल्स के थ्रू वह घूमने गई, तो उसको एक्चुअल वैल्यू पता चला कि पैसे का क्या महत्व है। तो ये मेरे पड़ोस से मेरा एक्सपीरियंस है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, एक टीचर स्कूल में तो बहुत शिक्षा देते थे, लेकिन जब वो घर जाया करते थे तो वहाँ पर क्या करते थे, जब एकांत पा करके वह सिगरेट पिया। एक दिन वह सिगरेट पी करके जैसे ही फेंका, एक बच्चा उसको फॉलो कर रहा था, वह गया उसको उठा करके पीने का कोशिश किया। तो बच्चे ने, पापा ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? बोला कि पापा जब आप इतना पीते हैं इसमें मजा कितना आता है, इसलिए एक बार मजा लेना चाहता हूँ। बोला बेटा मजा नहीं, ये तो इसमें सजा है। बोला क्या सजा? बोला जबरदस्त है। बाहर ले गया, वहाँ एक छोटा सा प्लांट था, उसको ईंट से घेरा हुआ देखा। बोला देखो इसे क्यों घेरा गया ईंट से, पता है? बोला नहीं, ताकि इसको कोई बच्चा तोड़ नहीं दे, छोटा में कोई जानवर इसको खा नहीं दे, इसको सेव करना अभी छोटा में जरूरत है। और ये जब बड़ा पेड़ हो जाएगा तो ये छोटे बच्चे से बचाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी जानवर से बचाने का जरूरत है। इसमें हाथी भी बांध देगा ना तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस पेड़ का। इसलिए तुम अभी प्लांट हो, इस ट्री तक पहुंचने में तुमको कुछ टाइम लगेगा। जब ट्री तक पहुंचोगे बहुत बात समझ जाओगे। थैंक यू। मतलब you have to do the same but afterwards. ये इसको थोड़ा सा और वो कर सकते थे, उसको क्या इंजोरियस कर सकते। सब टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर बड़ा बड़ा कैंसर किल्स और सब कुछ लिखा हुआ आता है, बट नो वन बॉदर्स अबाउट दीस थिंग्स, है ना। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में बच्चे ये सब चीजें काम करते हैं बिकॉज दे आर हैविंग क्यूरियोसिटी, उनके अंदर ये जिज्ञासा होती है कि हाउ टू स्मोक करना चाहिए या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। अगर उसके ड्रॉबैक्स हम पहले फील आउट कर देंगे तो वो ऐसा नहीं करेंगे, या उसका जो अदर साइड है वो फील आउट करेंगे। सर जस्ट काइंडली एलैबोरेट अबाउट द एक्टिविटीज। Thank you, sir. Actually, this activity is already submitted to you. The concept is already in the screen as well. Theme, time required, that is 5 minutes. Life skill enhanced. Materials required, objectives, mode, process, key messages, connecting with the real world, and last one is other core scholastic areas that would be utilized for enhancing the same life skills. In which point you are facing a problem? As I got the message that many participants are not doing the activity, so I want to ask you from your side, in which point you have facing the problem? As so many skills are there, you don't have to write all the skills. Go through only one and elaborate it according to the guided points. Only one skill, about one skill you have to elaborate.
It means that it is a situation. It could be a part of situation. And just imagine a particular situation and just follow the process. Game is a situation. Suppose here social skills are there, emotional skills are there. How to cope up with the stress, these skills are there. In these slides, we have gone through at least 8 to 9 skills. Each and every skill is important, but the thing is that it depends on you in which type of situation you want to put a particular skill. That is the thing. Again, there is a problem. Sir has given a lot of examples. Many videos you have observed also. The video of the shoe is a situation. Suppose that you just think which type of skill you want to inject in the student, which type of skill you want to inculcate in the student. It is a situation. Another example is that suppose your ward is not taking much more interest to the food which you cook in the kitchen. It is a situation, it is a scenario. Which type of skill you want to inculcate in worker? Just I told you, man. You have gone through several videos. Okay? You just put a situation. Suppose I am giving you an example. Many of the word is taking interest the food which is come from restaurant. And this restaurant food, how you can inject the particular skill? What do you think that the food of restaurant and your homemade food, which is good? And from this scenario, which type of skill you want to develop in your child? Involve your groups in this activity because this is a group-based activity. So I think that you must take the help of your peers also.
Is there any problem? Is there any problem? If you are not disturbing. हमारी बचपन कितना मंजीत 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 है ना Input. What are the inputs? You want to decide situation. आयुष्मान वहाँ पर रहता है आपके घर के बगल में Persons are there. The particular topic is there. Because when whether is there, नवीनगर में so confusing issues are there between two persons. That is mode. Mode means in which mode you want to present the situation. Objectives means when it is a base, you have to give the proper judgment. This is the idea. So many persons and students quarreling there for a particular issue. And what is the role of a teacher? Go through the situation and find out the solution and give the proper judgment. This is it. If there is any problem, try to ask me without any hesitation. बीच में हैदराबाद वगैरह में था ना सर आयुष्मान वो इसमें कोई नौकरी कर रहा था मेडिकल मैनेजर हाँ अभी छोड़ दिया अभी वो Suppose presentation of a topic inside the classroom. Ma'am, first of all, you just listen in that equanimity. In which type of situation you want to present this? Okay. इसमें हर तरह सपोर्ट Yes, sir. Mode means a way. Suppose teacher has given the thing like some people are quarreling. Suppose that. Then what will be the mode to give the proper judgment? चार हैवा है Yeah, it could be. Could be very. एगो Yes. एगो Completed, sir? Have you completed? ये तो सब मामला है सालगांव में कोई गाड़ी नहीं होगा जो उनका ऐसी वो वही चलाएगा सब गाड़ी पूरे करके ऐसा कोई गाड़ी Process means in which type of scenario you want to inculcate this. Just like sir, points will be there. Points are there. It could be based on a particular situation. If it could be possible, then yes, sir. Category means issues. Suppose you can take the example of fish market. The fish is there, persons are there, a scenario of market is there. In the same way, conflicting nature, different mindsets, different issues. Suppose the concept is stereotype. बात करना Materials, suppose in this activity you have to present in a classroom, and in this moment
Suppose students are there, a particular situation is there, and some articles, then you have to do this. This is a way. Real life situation, how could you coordinate with the real life situation? I can give you an example. Suppose you have gone through the shoes video. The shoes are there, some things are there. Means a case study is there. It is correlated with the shoes. A person is there and informing the activity. After all, he realized that what are the mistakes and what are the outcomes. Holistic means in which other field, like in other, suppose in social life, in family life, we have to inject the same thing. This activity, just a minute, I want to divert your mind. Yes. You are making a lesson plan. Just think differently. It is a case study. How you prepare? Just think that concept. A case study is there. Case study is different types of nature. Sometimes some videos are there. Where in second video, just right now, you have gone through the concept of the value of money. So, within 5 minutes, I will collect your activity sheet. And finally, you have to, at the top of the sheet, you have to write the group number and name also. Five minutes. Don't do the theme or choose the theme which is confusing. You can take easy theme like say electricity, say the value of food, like that. So you can better it is to give the more idea. Okay, so it's lunch time. After lunch, I will collect your sheets. Thank you. Face day. Our concept is that to inspire or to motivate the children to the particular situation and give the proper space to learn. Don't give your opinion or your judgment. If you want to, a child develops in his own way, then it is a better method, it is a best method to give her more space to learn, not to give your opinion. In present time, in the classroom, the student wants what is the new concept corresponding to particular subject. They have not so much interest in your abilities or your academics or your experience. They only want the result. So it is better to prove your ability, to give the situation, put the situation, and just do some activity in the classroom. It's a better way, it is a better situation to learn in this new experience. It is a kind of, as I told you, blended learning. A method, a situation. It is also called a situation-based learning. Try to put a situation
a method is also there, problem solving method. I want to ask a question. Name the psychologist who has given the concept this problem solving method. Anyone from your side? A psychologist who has given the concept problem solving method. Anyone? It's like Howard Kana, means he gave everything. Sorry, ma'am. Please raise your hand. No. Sorry. It is Thorndike who has given the concept of trial and error method. A father of concept who has given the trial and error method. You know very well the concept of cat. A cat was there in a cage and the piece of bread is there outside of the cage and the cat jumps inside, but so many attempts, once a time his leg just click it on the handle of the door, and at that time the cat take the bread or slice of bread when his leg was onto the point of leaf of the cake. No sir, this is called the stimulus response theory is given by the Beer Skinner. RS responding, it was the saliva, it was different. But I am talking about, yes sir? Pavlov theory. Saliva is a Pavlov. Saliva is classical operant conditioning. Here I am talking about trial and error method. These all methods are different. In this case of cat, operant conditioning. Yes, the cat tries a lot of times to taking the bread, but when his leg touch the leaf of the cake, and at that time the slice of bread comes. This situation or the condition is called trial and error. In our day-to-day life, we are facing the same thing. Attempting a question, whether it is mathematics or any other question of physics or chemistry, whatever. A student tries that particular concept and tries it to do the same theory. And in a particular moment, he is near about the result. We are facing the same scenario in our project work is there or some assignment is there. It is a very practical concept. On the other hand, he has also given the theory of problem solving method where 6 steps is there. From your side, I want your response. What do you know about problem solving theory? Please, it's your time to give the response. Problem solving method. Actually, what is it? Anyone? Yes, sir. Problem solving method is a method through which we could mold the personality and development of the child. Thank you, sir. Any other teacher? Ma'am, also? Because it's a very scientific method. Anyone? You are free to share your ideas. Because the objective of this training program to learn some new things, to learn some new skills. So, coming back the point, problem solving method. In this method, 6 steps are there. The first is, a situation is there
This method starts with a particular situation. A situation is there. Suppose apple is there in front of a child. You want to have it. You observe all the situation of the child. Someone tries to bite it. Someone tries to scratch the apple. Some wants to cut it. Other scenarios are there. It depends upon the child to child. It is variable in nature. Problems, if there is a problem, suppose interview, a situation, it is variable in nature. Someone facing positive, someone facing stress, someone more stress, a different condition was there. The first thing is that a situation was there. After that, suppose there is a bigger problem. The thing is that how many pieces you cut it. Or the concept is that how you are facing the same situation. What is your prospect? What do you think for that particular situation? And third, just break these all things into a small piece and go through a particular case. A bigger situation is there. You have cut it more than 10 situations, and every situation is very important. Next step is that you just pick one situation and find out the result. After crossing, to go through the second one, face the situation and got the result. This is a situation, this is a method, and finally you are very near about to the conclusion. As like the sum of mathematics. Sometimes all problems are not easier. Some are very technical and some are very difficult. The proper method is that go through the approach, go through the steps, and after making a lot of errors, finally you get the result. This concept was faced by the Thomas Alva Edison once upon a time when he just invented the electrical bulb. Once a critic asked a question, "Sir, how you can say that if you have invented an electrical bulb is a very surprising invention?" In my opinion, this invention has no importance. What do you think? Edison told that critics, "I know the 99 methods which are not favorable for making an electrical bulb. There is only one method by which the electrical bulb could be made." The concept is that if we are making some mistakes or errors, it doesn't mean that there is no importance of our life. It gives a positive energy that facing a problem and getting the result, these two different conditions. Getting a result is just like an output, and facing the problem is a general concept. So the conclusion is that if anybody wants to get the result, he has to go through the same situation. And if we are making the mistakes, it doesn't mean that there is no result. It is an experience that according to Thomas Alva Edison, 99 methods is not suitable for making an electrical bulb. That is only one method which breaks the law and gives the result. In day-to-day life, it is a beautiful concept of problem solving method. All we are facing the same problem, but it is different concept, different scenario.
everyone has his own background, own culture, own religion. But the better way is that how we can cope up with this situation scientifically and effectively. So, a best method is to give the space to learn. There is no moderation. Feel the nature, feel the emotion, and find out the way for final outcome. So this is the concept, how we can coming back the situation which we are facing. On this method, there is another activities waiting for you. Are you ready? Yes. Thank you. in between, मैं आपको just I want to show a video. It's always about that in our students, and even we'll see about our children also. We expect so much from them, but what we expect, we do accordingly. The thing is, as Sir said, that there should be a mobile-free zone, anger-free zone. We ask always, very frequently, don't use mobile. Are we doing the same? Literally, the thing is, what is applicable, we need to relate with those things. Ultimately, we need to impart so many things in the students. Students के अंदर इम्पार्ट करने के लिए पहले वो हमारे अंदर होना चाहिए. स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, उनको गुड़ खाने की बहुत आदत थी कि मुझे गुड़ खाना है, छोड़ना है, गुड़ खाना कैसे छोड़ो? तो उन्होंने कहा आज आप इसका जवाब नहीं दूंगा. बोले एक हफ्ते बाद लौट के आए, बोले कि पहले खुद गुड़ खाना छोड़ दूं, तब मैं इनको बताऊंगा कि गुड़ खाना कैसे छोड़ना है और क्यों छोड़ना है और क्यों नहीं अच्छा. तो एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, हम कई बार बहुत कुछ ऐसा फीड कर देते हैं बच्चों के अंदर कि वो भी उनके लिए अच्छा नहीं. I'll just tell you one real story. My professors used to tell about these things. In BA, they taught us. He was sharing a real experience. I have heard about this. उनका कहना था कि उनके साथ एक रियल लाइफ की सिचुएशन ये हुई कि वो जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहां पे ऐसा हुआ कि एक बच्चा नर्सरी से लेके 12th तक हमेशा फर्स्ट आता. फर्स्ट होने से ब्राइटेस्ट स्टूडेंट रहा होगा, ऐसा होते हैं हमारे आसपास भी बच्चे. कभी सेकेंड पोजीशन उसने लाइफ में नहीं देखी. जो ऐसे बच्चे हैं वो फिर IITs में जाएंगे. IITs में गए
है ना, ही स्कोर्ड वेल देयर, IITs में उनका बढ़िया प्लेसमेंट हुआ, बट पढ़ने का इसके अंदर अलग होता है, तो जस्ट ही मूव टू IIM ऑल्सो, ही हैज क्रैक्ड द कैप फॉर IIM एंड ऑल। उसका फिर IIM में एडमिशन हुआ अहमदाबाद में, एंड ही प्लेस्ड इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, और बहुत अच्छा उसकी लाइफ में सब कुछ चल रहा था, अच्छी शादी हुई, सब कुछ। बट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब गिरा था? 2007। बहुत ज्यादा उसके बाद रिसेशन आया था, जॉब्स बहुत लोगों की चली गई। 2007 में 2007 हाँ, वर्ल्ड ट्रेड 11 सितंबर 2007। ओके, तो वो जब गया तो सबसे पहले कंपनीज में क्या होता है कहीं पे भी कि सबसे बड़े बड़े जो बिग पैकेज वाले लोग होते हैं उनको वहां से हटाए, इनके कंपनी अपना एक्सपेंडिचर कम करती है अंदर पीरियड ऑफ टाइम में। ही वाज फायर्ड फॉर दैट पीरियड। वो जो स्टूडेंट था IIT जिसने क्रैक किया था, IIM जिसने किया था, सबसे बड़ा पैकेज IIM का जिसका था, वो he got fired. When he got fired, in next 3 days, उसने सुसाइड कर लिया अपनी फैमिली के साथ। वो, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, तीनों उनको तो उसने दिया होगा सुसाइड कर। Can you believe? उसके पास तो इतना पैसा रहा होगा, उसने काफी दिन नौकरी करी कि सब कुछ अच्छे से जाता और सब कुछ होता, क्यों उसने सुसाइड? Emotionally he was weak. Emotionally he was academically he was intelligent, emotionally he was weak. He could not negative yeah. He could not take the challenge. हैंडल नहीं कर पाए। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम यही सोचते हैं कि ऐसा होता तो क्या हो जाता, बट अगर उस जगह हम थोड़े से नेगेटिव हो, इससे बुरा हो जाता तो क्या होता है ना। Here the thing comes कि हमें अपने बच्चों के अंदर लाइफ के डिफिकल्टीज को फेस करना भी सिखाना है। हम अपने बच्चे को घर में ग्लास से पानी नहीं देते हैं, मेड इज देयर और अलिया isn't it? और मुझे लगता है जो 90s के लोग होंगे, कुछ तो होंगे, शादी में सबसे ज्यादा घर के आसपास के लड़कों को दौड़ा दिया था, सारा काम यही करेगा। हम लोगों ने तो बाइक चलाना शादियों में सीखा है, सही बता रहा हूं, मैंने बाइक चलाना शादी में सीखा है, क्योंकि शादी में ज्यादा काम होता था तो लड़का देख के यंग बॉय दौड़ो बाइक लेके सामान लाना है, तो बाइक चलाना। घर में बाइक नहीं देते थे, पेरेंट्स नहीं देते थे। When I was in 7th standard, मेरे घर में मेरे फादर बाइक नहीं देते थे मुझे 7th 8th स्टैंडर्ड। लेकिन शादी वगैरह ऐसा मौका था कि काम लग जाता था, किसी के साथ कार्ड देने जाना है कहीं, है ना, दूर दूर तक, 90s बहुत दूर दूर कार्ड देने जाना था, तो किसी भैया के साथ जाते थे, भैया उसी में मौका दे देते कि चलो तुम बाइक चलाओ। मोस्टली बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा शादी, और बहुत सारे आसपास से लड़के भी देखते होंगे जो शादी वगैरह में, भाई जरा बाइक दीजिए देखें, सीख लिए वो चलते चलते ट्रायल फिरते फिरते सबके साथ ऐसा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें अभी मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जस्ट आई हैव गॉन थ्रू दिस, ये जो एक्टिविटी थी इसमें किसी ने सुसाइड लिखा। अरे जीवन से बहुमूल्य कुछ भी नहीं। क्या हुआ होगा किसी के साथ वर्स्ट? क्या हुआ होगा वर्स्ट? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, लाइफ से बड़ा कुछ हो जाएगा। आप कभी उनके बारे में सोच के देखिएगा कि कभी सुसाइड की टेंडेंसी आए, आपके आसपास जो लोग जुड़े हो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। लाइफ में कभी भी लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है, जो आपके साथ कुछ नया नहीं होगा, सारी चीजें किसी ना किसी इंसान के साथ
हो चुकी हो, यू आर नॉट द ओनली वन बेसिकली. And if someone is coming with this tendency, suicide tendency, तो लिटरली आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है. पैसा आएगा जाएगा. और पता है, आप अपनी वर्स्ट सिचुएशन पीछे जाके देखिए, बहुत पहले कोई वर्स्ट सिचुएशन आई होगी, अभी उस वही सिचुएशन को आप, जैसे आप सीधी बात छोड़िए, 10th आप जब पढ़ रहे थे तो आपके लिए पढ़ना मुश्किल था. जैसे आप 12th में पहुंच गए आपके लिए 10th इजी हो गया. Isn't it? आप बीएड कर रहे हैं तो आप दूसरे को रास्ता बताने के काबिल हो गए. तो वो सिचुएशन, एक डर कई बार नहीं लगता, एक डर एक ही बार लगता है. तो इस सब सिचुएशंस के लिए भी हमें अपने बच्चों को रेडी करना है. जैसे बच्चों के अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. मुझे लगता है ग्रेटिट्यूड क्या है, कैसे इंपार्ट करते हैं. हम कई बार जाने अनजाने में ऐसा कर देते हैं. जैसे हम सब्जी लेने बच्चे के साथ जा रहे हैं अपने, और बच्चे से हम सब्जी लेने के क्रम में कह रहे हैं, अरे तुम लोग लूटते हो यार, क्यों इतना लूट मचा के रखते हो, टमाटर क्यों 250 रुपए कर दे रहे हो, लूट रहे हो. टमाटर इसको 200 में मिला हुआ 250 में बेच रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट है, यही ट्रेनिंग है. Isn't it? Am I right or wrong? है ना. भुट्टा, अरे खेत में ऐसे भुट्टा ऐसे पड़ा रहता है, इतना सारा भुट्टा होता है, उसको हम कह रहे हैं अपने बच्चे के सामने, तुम लोग लूटते हो. हम क्या फील कर रहे हैं उसके मन में, क्या फील कर रहे हैं, ये लोग लूटते हैं, ये लूटते हैं. सी द फ्लिप साइड. बेटा देखो ना, अंकल कितनी मेहनत करते हैं, टमाटर लेके आते हैं, सुबह शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं, टमाटर लेने के बाद बच्चे को से थैंक यू. Isn't it? एक अच्छा लेसन दे रहे हो अपने बच्चे को टमाटर लेने के बाद, एक मोरलिटी सिखा रहे हैं, अंकल मेहनत करते हैं बेटा, तो किसी की वैल्यू करेगा. इफ यू नॉट वैल्यूइंग योर ड्राइवर, आपके आसपास ड्राइवर है ना, आप उसकी वैल्यू नहीं करते कि वो खाया क्या नहीं खाया क्या, तो वो आपका बच्चा भी वही चीजें सीखेगा, ऑटोमेटिकली सीख जाएगा. एंड वन इज वरीड अबाउट कि मेरा ड्राइवर ने खाना खाया कि नहीं खाया. यू आर गोइंग टू बॉदर अबाउट दोस थिंग्स. ऑलवेज जो हमारे आसपास बच्चे होते हैं, वो हम क्या करते हैं इससे सीखते हैं, हम क्या कहते हैं इससे नहीं सीखते. लर्निंग बाय डूइंग सर. हाँ, you can consider this. और किसी के अंदर भी कहीं पे भी बच्चे को लेसन्स बताने की बजाय उनको परिदृश्य दिखाना सीखें. कम टू द अदर साइड. मैं कहता हूं बच्चे को, हर बच्चा, सबके घर में एक प्रॉब्लम होती है कि वो खाना छोड़ देते हैं. थोड़ा सा खाने में, सबके पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अदर पेरेंट्स, वो खाना छोड़ देते हैं. होता है. लाइट्स ऑन छोड़ देते हैं, है ना. लाइट ऑफ नहीं करे, एसी चल रहा है, रूम में कोई नहीं है, कूलर चल रहा है, रूम में कोई नहीं है, वो छोड़ देते हैं. अगर बच्चा 10 से 12 साल का है तो एक प्रैक्टिस जरूर करिएगा. मैं कह रहा हूँ, आप अगर करेंगे तो लिटरली आप बच्चे को अपने सिखा पाएंगे. आप अपने, अगर 12 साल का बच्चा है, 10 से 12 साल का, आप उसको घर का खर्च देते हैं कि बेटा ये 20,000 रुपीज है, इस 20,000 रुपीज में यू हैव टू मैनेज मिल्क, जो भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं, इसको मैनेज करना. इज गोइंग टू परचेज द दाल, चावल लेके आएगा ना, चावल की वैल्यू वो जानेगा कि 50 रुपए का चावल है, एक दिन में इतना चावल बनता है हमारे यहाँ. उसको सिखाना भी पड़ेगा बेटा कि स्विच ऑफ करना. बिजली का बिल पिछली बार 3,000 आया था, इस बार इसको रिड्यूस करना. ही विल स्टार्ट टेलिंग यू कि पापा आप नहीं बंद करके आए, बाथरूम का स्विच छोड़ के आए, मम्मी आप नहीं करके आए, वहां एसी बंद करके नहीं आए, मम्मी चिमनी की जरूरत नहीं है, आप चिमनी ऑफ कर दो. तो अल्टीमेटली हम बच्चों के अंदर जो इम्पार्ट करना चाहते हैं, वो हम इम्पार्ट अपने आसपास तभी कर पाएंगे जब लेट देम हैव दोस थिंग्स. कहीं पे भी लिटरली करके देखिएगा. 10 से 12 साल के बच्चे को आप करेंगे, वो एक एक चीज की वैल्यू करेगा, वो पैसे खर्च करना अनयूजुअली छोड़ देगा. एक छोटा सा वीडियो है, 1 मिनट सर, काइंडली प्लीज. बस इसके बाद करते हैं सर.
नमस्ते, ठीक हो? क्या हुआ? सामान तो काफी बिका हुआ है, पैसे गले में नहीं है। हाँ भैया, वो आपका लड़का आया था, तो मैं 5,000 ले गई। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। पापा, हाँ, एक मेरे को 10,000 रुपये देना। क्या करेगा? मनाली जाना है, मेरे को टूर जा रहा है। अच्छा, कल भी तो 5,000 रुपये ले गया था। पापा वो दोस्तों के साथ पार्टी में गया था ना, तो वहाँ पे खर्च हो गए। चल 10,000 तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। बताओ। तुझे 1,000 रुपये की सेल करके दिखानी होगी यहाँ। अरे पापा, 1,000 ही तो है, अभी कर दूंगा सेल। कोई बात नहीं, आ जाऊंगा। अभी आया। ठीक है, आ जाऊंगा। ठीक है, 1,000 रुपये कमा के दिखाने आते हैं। पापा 1,000 ही तो है, अभी कमा के दिखा दूंगा। चलो कर देते हैं, राउंड चेक कर लो। ठीक। भैया, हाँ जी भैया। एक फेस वॉश दिखा दो अच्छा सा। मैं दिखाता हूँ। बढ़िया सा दिखाना भैया, जिससे फेस पे ग्लो आए अच्छा सा। ये भैया बहुत बढ़िया फेस है। ये नहीं भैया, कुछ अच्छा सा दिखाओ ना, जिससे बढ़िया ग्लो आए फेस पे। कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे हैं हमारे पास। ये देखो, इससे ग्लो आएगा आपके फेस पे ना। नहीं भैया, ये नहीं, चीप मत दिखाओ यार, कोई अच्छा सा दिखाओ यार। एवरग्रीन का ये भैया बहुत बढ़िया है। इससे भी चीप दिखा दिया आपने तो यार, कोई अच्छा सा है तो बताओ यार। भैया अच्छा ही तो दिखा रहे हो, सारा ये अच्छा ही रख रखे हैं मैंने। नहीं है बढ़िया, इससे अच्छा है कोई आपके पास? लो फिर ये ले लो, ये बहुत अच्छा है। ये लेडीज यूज करती है भैया, ये हमारे लिए है क्या? अरे भैया, ये आजकल दोनों यूज करते हैं, टू इन वन आ रहे हैं। नहीं है ये बढ़िया, आपके पास है कोई अच्छा? नहीं भैया, मेरे पास तो यही है, आपको लेना तो लो। मतलब बढ़िया सामान रखते हैं ये दुकान पे? ये भैया सारा बढ़िया ही है सामान है। और कैसे रखे हैं सामान? बोलने की क्या तमीज है भैया? कैसे बोलते हैं कस्टमर के साथ? ऐसे चलाओगे दुकान आप? ये तमीज है, एक तो सामान अच्छा नहीं दिखा रहा, ऊपर से बात भी करने की तमीज नहीं है, ऐसे बोलते हैं? भैया मैं सामान सही दिखाया, वो आपको आप ही कह रहे हो ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। जब मैं दिखाने लगा सारा सामान, तो जैसा मेरे को चाहिए वैसा दिखाना, मेरे टेस्ट का सामान दिखा। ये क्या दिखा रहा है? यही है भैया मेरे पास। पता नहीं मालिक भी कैसे कैसे लड़के रख लेते हैं, जिनको ना बोलने की तमीज है ना कोई नॉलेज है सामान की। यही है कैसे बंदे। ठीक है भैया, जब अरे कैसे बंदे हैं। आज आपको हेलो मैम। हाँ जी भैया। मेरे वाइफ के लिए वो दिखा दो, आज मैं करेगा। वही तो आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। जी भैया, क्या दिखाने भैया? भैया मेरे वाइफ के लिए 2 आज में कड़े दिखा दो। दिखाता हूँ, ये देखिए भैया, कड़े दिखाना। ये क्या दिखा रहा है मुझे? मैंने कड़े मांगे, चूड़ी दिखाना मुझे, कड़े दो, जल्दी निकालो। आ जाओ, ये भैया आपको काम करता नहीं आता? मांग मैं क्या रहा हूँ, आप दिखा पूछ रहे हो। कड़े मांग रहा हूँ, चूड़ी दिखा रहा हूँ। कोई नहीं, एक मिनट। और 2 8 का साइज नहीं है हमारे पास। ये क्या है? कड़े है, चूड़ी है। दुकान खोल के बैठे हो, पता कुछ है नहीं। भैया हमारे पास नहीं है। तो आपको पता ही नहीं है, दुकान आपने खोल दी है, कुछ आता ही जाता है? नहीं आता भैया, नहीं है हमारे पास। ये क्या बात नहीं आता है? कितने की सेल कर लिया अब तक? पापा कुछ भी नहीं हुआ तब तक। कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए पापा। 5 घंटे हो गए, 1 रुपये भी नहीं कमाया आपने। अगर मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ तो आप कितनी देर में खर्च कर दोगे? पापा 1 घंटा लगता है मेरे को। 1 घंटे में खर्च कर देते हो?
तो आपके तो समझ में आ गया होगा पैसा कमाना कितना मुश्किल है। हाँ बाबा, बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। बहुत मुश्किल है। पता क्या है, ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं माँ बाप से पैसे लो, इन्होंने तो मिनटों में कमा लिया होगा, इनके पास तो पैसों का ढेर लगा होगा। लेकिन कितनी मुश्किल से कमाया है बच्चे ये नहीं सोचते। सारा दिन बैठते हैं, ग्राहकों के साथ उलझते हैं, फिर कहीं जाके हमारे यहाँ 2-4 हज़ार रुपये लगते हैं, उसमें से कुछ पैसे बचत होती है हमारी, जिनको आप है ना एकदम आते हो, ले जाते हो, खर्च कर देते हो। कभी नहीं सोचते माँ बाप कितनी मुश्किल से कमा रहे हैं, कितनी मुश्किल से नहीं कमा रहे। मानते इस बात को? हाँ बाबा। कभी तुम्हारा मनाली जाना, कभी तुम्हारा शिमला जाना, कभी गोवा जाना, क्यों नहीं समझ में आता तुम लोगों को कि भी जो है ऐसा पापा ने बहुत मुश्किल से कमाया हुआ। मानते इस बात? हाँ बाबा, हम लोग पता चल गया आप बहुत मेहनत करते हो और मैं एक सेकंड में पैसे उड़ा देता हूँ सर। ये तुम्हारी बात नहीं, ज़्यादातर बच्चों की सोच है ये, पापा के पास बहुत पैसा है, ढेर मार रखा उन्होंने। कहाँ से ढेर मारेंगे पापा? कहाँ से लाएंगे? पेड़ थोड़ी लगा हुआ पैसों का। बच्चे आते हैं, ले जाते हैं कभी माँ से कभी बाप से और खर्च कर देते हैं मिनटों में, वो भी बिना फालतू की चीज़ों पे। चलो, कितने पैसे चाहिए आपको? पापा अब नहीं चाहिए मेरे, नहीं पापा। पापा आपसे मैंने पूरी मेहनत करूँगा, रोज दुकान पर आया करूँगा। बेटा, जब तुम कमाने लग जाओगे ना खुद और अपनी कमाई को खर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि खर्च नहीं, थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। आपने कमाया कितना है, खर्च कितना कर रहे हो, सारा हिसाब लगा के चलोगे आप। अभी तो पापा कमा रहे हैं ना, इसलिए आप हिसाब नहीं लगाते। पापा फालतू के खर्चे बंद करके और मैं कल से अपनी दुकान पर आया करूँगा, पूरी मेहनत करूँगा। पक्का? पक्का। चलो ठीक। Just in between, मैं आपको, तुम ठीक मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, मुझे दिखाओगे कुछ करके, तो अपने पैसों में जितना चाहे खर्च कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तुम्हें भी पता चलेगा कि किस तरीके से खर्च करना है। ठीक है? चलो, थोड़ा सा हो जाता है बेटा, बट अल्टीमेटली द थिंग कम्स कि हम लोग कॉन्सेंट्रेट कहाँ कर पा रहे हैं, है ना? तो एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे अभी हम लोग, है ना? बहुत छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटी है ये, है ना? छोटे बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं, है ना? और हम लोग भी कर सकते हैं। अभी जो सर ने एक्टिविटी दी वो भी हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, बहुत छोटा सा। गिनती सबको आती है ना? 1 2 3 4 गिनती सबको आती है ना? 1 2 3 4 69 72 71 72 73 आता है ना? तो विल सी लिटिल बिट, है ना? आगे हम लोग को गिनती ही करनी है ना? अब गिनती कैसे करनी है ये आगे देखेंगे कि कौन कितनी गिनती तक पहुंच पाता है। ठीक है? गिनती थोड़ा सा इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे करना है ना? लिसन केयरफुली, यू ऑल विल गेट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये गिनती ऐसे होगी कि पहला 1 बोलेगा तो दूसरा 2 बोलेगा। 1 2 3 4 गेटिंग, है ना? और बहुत फास्ट फॉरवर्ड में करना है। गेटिंग? देखते हैं गिनती कहाँ तक पहुंचती है। 100 तक तो पहुंच जाएगी ना? 100 तक पहुंच जाएगी इजीली। अभी देखिएगा, यहाँ सब लोग ऐसा नहीं होता कि विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। गेटिंग एवरीवन? कैसे करना है? माय इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर टू ऑल? बस ऐसे करना है, 1 के बाद 2 आएगा। हाँ, 1 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है? बहुत तेज करना है। एवरीवन इज रेडी? यहाँ से स्टार्ट करें। 1 2 3 उनके यहाँ से 1 के बाद 2 आएगा। सुनिएगा, जो शुरू करेंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, जो ब्रेक करेंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। ठीक है? नहीं, फिर से 1 से शुरू हो गया, गिनती कहाँ तक जानी है ये देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
नहीं ये कंट्रोल सेट नहीं होगा, लो कंट्रोल सेट, बस यही आपका ये साइड इफेक्ट है लंच का. नेक्स्ट टाइम आई आस्क द वेन्यू डायरेक्टर, डोंट गिव लंच. I want to reach अरे 10 तक तो आता है ना, 10 तक आता है ना, 10 तक तो सबको आता है ना, तो 10 तक तो कम से कम पहुंचो, 5 तक नहीं पहुंचा. ओके, कहाँ से स्टार्ट करना है? क्या? इतना टाइम नहीं बाबा. एक मिनट फिर से, ठीक है? ये स्टार्ट. अरे ऐसे कोई सहायता नहीं लेती, आप कोलैबोरेशन का काम नहीं है, इसे नहीं करें. बस आप ही हैं, आप ही का इंतजार है. 1 के बाद 2 चलिए, जैसे 1 से शुरू होगा, लेकिन 100 तक तो जाएगी ना.
बाद 6 आवाज से शुरू करिए हाँ यू आर Nine. 11.
ये सुनना ही तो है, यही तो ये लिटरली इंग्लिश है क्या? नहीं एक से एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोलिए अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं खड़े होकर बोलिए अमिताभ बच्चन का डायलॉग पूरी दुनिया जानती है अमिताभ बच्चन को बोलिए हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से शुरू होते अरे ऐसे नहीं होता है यहीं से लाइन शुरू होगी बोलिए अमिताभ बच्चन का डायलॉग कोई भी बोलिए अमिताभ बच्चन का डायलॉग एक पिक्चर का नाम बोलिए अरे रिश्ते में तो तुम्हारे बाप रिश्ते में तुम्हारा वन से शुरू करिए 1 3 5 7 एक अमिताभ बच्चन का गाना सुनाइए सुनाइए अमिताभ बच्चन पे फिल्म आ गया गाना अभी तो गा रहे गाइए गाइए जल्दी गाइए अमिताभ बच्चन का गाना गाना है चलिए अच्छा ठीक है गाना बनाइए कौन सा रंगवर से दिए चुनरवाला चलिए अब हिंदी शुरू करिए 1 3 5 7 अरे तो लुक में भी आ रहा है अमिताभ बच्चन डायलॉग रिश्ते में तो तुम्हारे बाप करते अरे एक वही है देखिए अमिताभ बच्चन हेयर स्टाइल शाहरुख खान वाली है ना और आदत है अमिताभ बच्चन हाँ
अमिताभ बच्चन के लिए एक तालियां बजा दें। और एक दो बार जो अमिताभ बच्चन हुए उनके लिए भी तालियां बजा दें। और जो हर बार हुए उनके लिए भी बजा दें। अच्छा, अमिताभ बच्चन की आवाज में कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ मैम प्लीज बोलिए। फिल्म मोहब्बत में सर ने जैसे बताया कि परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ये इस स्कूल के 3 स्तंभ है। ठीक उसी तरह से सीबीएसई के भी 3 स्तंभ है। पहला सीबीएसई ट्रेनिंग, दूसरा इन हाउस ट्रेनिंग एंड तीसरा रिपोर्ट सबमिशन। थैंक यू ऑल। Any other teachers? कोई और? अच्छा, एक काम कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सा वो कर सकते हैं, पढ़ाई क्या इसको आगे और आसपास अमिताभ बच्चन मिल जाएंगे हैं? लेकिन इस बार शर्त होगी, जो स्किप करेगा वो गाना गाएगा। उन्हें करना है तो बढ़िया। अमिताभ बच्चन का डायलॉग जिसको हिंदी नहीं आता वो भी खराब करता है। चलिए आप सर अपनी एक्टिविटी है ना। मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी लंच के बाद, उससे पहले मैंने आपको दिया था और एक अभी आपको सबमिट किया गया है। I have given 2 activities, a series of activities. And first one, it was based on theme oriented. This activity is basically based on theme. Just I elaborate this activity and want to conclude this activity. First of all, theme. It means that we can opt or choose anything which is useful, like wastage of food, save electricity, conservation of resources, value of food, development of moral values, respect to elders. This would be a theme. Time required, it is based on appropriately like 3 minutes, 5 minutes, according to it. Life skills enhanced. Suppose you have opted conservation of resources. Just you think, life skill enhanced. Want to inculcate to the values of resources, to save how it could be saved for future generation. Third one, it could be that for sustainable approach, sustainable development. Yes sir, two seats is already given. Materials required. It is not for making a particular product. Basically, here the term materials, it means that what are the things you want to input in this activity. Conservation of resources. What are the materials? You can think in your surroundings like water, electricity or anything which is useful for us. Mode. The mode is generalization or socialization to develop in such a way that it could be beneficial for us. Process. We can take a situation that in just now, in the lunch break, we have observed that in basin point, water is already there. The tap was already on and water is running out. So it is a situation. The values
we have seen, gone through the food point, but someone, only counted teachers who have observed that point and they close the gap. That is one of the situation. Wasting the food, it could be a part of it. So it is related to day-to-day life. You can take the best example like food of restaurant versus the food which is cooked in kitchen. Many a time we have seen that some elders also take the food and just the food gone into the dustbin, which is not good. In parties or in some receptions, many these foods are wasted, which is not good. According to National Food Security Act 2013, it inculcates that we should try to preserve it. The food which is gone through the dustbin, it could feed those people who is very needy. A movie which is recently launched, it was ABCD, anybody can dance. Volume 1 and Volume 2 is already there. In this movie, it has been seen that the person who is out street dancer, according to appropriate when he danced, then whatever the fund is collected, it was served for those people who are street dwellers or beggars, and those also who want to already visited some other foreign countries and want to come back their own country, they have no money for making a passport like that. So this could be a part of benevolence activity by which some needy people could return to their own country. So these are the values. It could be seen in our day-to-day life. I want to say that our education or our qualification is respond on that time when our behavior is beneficial for us or to those who are very needy. Another is key messages. Which type of messages I want to serve towards it? I have given the example of resources, sustainable development. So key message is that to conserve the resource. How to preserve the resource by which it could be beneficial for us. According to UNO, a meeting was there in Rio de Janeiro, and the concept was given Agenda 21. In this agenda, 21 important points are there, including pollution-free country or pollution-free town. So it could be you can choose according to your own choice. Next is connecting with the real world. It is just like when we have gone through such kind of activities, how it could be beneficial for our day-to-day life. And finally, other co-scholastic areas that could be utilized for enhancing the same life skills. Suppose, other than this skill, you can opt social skill. Or how to cope up with the stress, it could be a part of it. 8 skills are there. You can take anyone. So it is a part of lesson plan. If you want to keep it, so I have no problem at all. And I have already given the activity 7, 3A. You have to opt only yes or no. Go through the activities or questions. Just do it within 3 minutes. If you have completed, then please pass it to me. So these activities have key messages. I just give you the central idea of these activities.
the first activity before tea break, it was submitted activity 3B. It was the handout. It was all about the stress. Like some questions are there, 3 common situations in which you feel stressed. When you stress, what are the thoughts? When I am stressed, my feelings are, which type of feelings at that moment? Stress affects my health in the following ways. And last one, when I am stressed, what I normally do to make myself feel better. Actually, the theme of these activities, especially this activity, that how to cope up with the stress. We know that at that moment we do some regular exercise, some aerobics, some music also, which heals us. So these are the output or the outcomes of the stress. If we feel stress, then we want those things which we feel a stressless life. Stress is a part of life. We can't ignore it. So when it occurs, we should try to focus the positive aspect. What would be the positive aspect? If you want to learn or listen music, then go through it. Exercise is also a part of it. Take some healthy food, especially because we are doing manual work. In this case, some healthy diets must be there, including rich ingredients and some other activities like yoga, some laughing exercise like that. So it is a beneficial point. Another exercise, whatever given, the 3B, in which the theme is there, a particular situation is there, you have to write the observation, what you have felt. This activity, the purpose of this activity is that how you plan your life before entering the classroom, or if you are facing a particular situation, take some time to find out yourself, who are you and how you can come back. What is your plan according to the situation? How you come back on this particular point of time. It is just like a plan, just as like lesson plan, which is important for planning a topic. In the same way, this activity especially gives you a thought process, which is very important for us. No doubt, every day is a challenge and every moment gives a lesson. That's why it is called present. And it is totally surprised, based on surprise. So why should not we make a beautiful plan for coming moment? Third activity, the central idea of this activity is that you have to prepare for any upcoming activities. Suppose in your classroom, when some students quarrel with themselves, some regarding parents-teachers meeting, different situations we are facing at that moment. So this is a situation that how we can make the plan better. In the family life, we are facing different types of challenges. So it helps on that point of view. So these activities are already researched according to the CBSE, and it also develops some ideas. So we must try these skills and include in the activity as well.
this empathy, है ना? So we need to understand first, because we have continuously heard about sympathy. What is empathy? Once you all have seen one video also, that shoe polishing one. You all have gone through that video. It also shows that what one is feeling for other. Like we all are having maid and workers around us. But you know, sometimes we ask students, children around us कि बेटा रिस्पेक्ट करनी है उनकी, उनके पास अच्छे से बात करना है, सारी चीजें करनी है. You all are supposed to value those things. But they continuously don't listen to us. हम कहते हैं तो वो मानते हैं, समझते हैं. But अगर literally if we want our children, our students to understand and value them, तो एक दिन मैं आप सभी से कहूँगा, just one day ask them to do the work what your mates do, isn't it? तो वो गंदा करने से पहले वहाँ पे ये जरूर सोचेंगे कि आंटी को साफ करने में कितनी मेहनत लगती है, या अंकल को साफ करने में कितनी मेहनत लगती है, या मेरी मदर को काम करने में कितनी मेहनत लगती है. All these things are about the empathy to understand the pain of others. We move ahead. In this, like emotional skills we are talking about. Emotional skills refer to the ability to recognize and express, regulate your emotions. देखिए, it is like we feel sometimes that we are emotionally strong, but sometimes we only pretend to be strong. तो pretend करना and होना, that is other thing, two things are there. So ultimately we need to regulate our emotions also. That with the examples I have told you, if someone will become a district magistrate and he'll say like this कि मैं वैल्यू मिटा दूंगा, तो I think so that particular is emotional with that period of time. और सबसे बड़ी गलती हमारे साथ कभी ऐसी होती है कि जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, मीन्स वी आर वेरी मच हैप्पी फॉर एनीथिंग. ऑन दैट पीरियड ऑफ टाइम हमें कुछ बोलने से बचना चाहिए. और जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हों तो भी हमें बोलने से बचना चाहिए ऑन दैट पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज व्हेनेवर, लाइक ऑलवेज, और पता है क्या होता है, समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ दीज थिंग्स. सम पीपल आर अराउंड यू, यू नो, पीपल यूज्ड टू टीज देम. उनको ऐसा बोल दो, अभी देखना वो गर्म हो गया, ऐसा करेंगे. तो इफ व्हाट यू आर गोइंग टू से, that also if people are going to do or think about it, so it's not like that. आप कैसा behave करेंगे on that particular situation, ये आप decide करें. तो ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस होता है कि आप ये समझ पा रहे हैं कि आप situations में कैसे हैंडल करेंगे. I'm just telling you, it's about personal relationship also. आप आर्गुमेंट में जब भी आते हैं तो उसके एक वर्ड बोलने पे आप 5 बोल जाते हैं, और बहुत पुरानी बात निकाल के लाके डाल देते हैं. आर्गुमेंट्स में हमेशा ऐसा होता है. अगर मैंने आपको बताया पहले भी कि इन सब में अगर कहीं पे भी आपके शांत रहने से आपका रिलेशनशिप
रिलेशनशिप बच रहा है, किसी भी रिलेशन, I'm talking about personal relationship also and I'm talking about professional relationship also, होता है हम हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं आती। लाइक पीपल आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट वी थिंक, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, या आप ही सोचते हैं, और वो अपना सोचते हैं कि हमें ये अच्छा लगता है कि आप ये करके दो, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा तरीका होता है कि टेक अ पॉज ऑफ 100 सेकेंड। इमोशंस जो होते हैं ना, पानी के अंदर भी बहुत सारी गंदगी अगर होती है, बहुत तेज वो मूवमेंट हो रहा होता है, तो यू कैन नॉट एबल टू सी व्हाट इज बिलो दैट, बट थोड़ी देर वो अगर स्थिर हो जाए तो आप देख पाएंगे क्लियरली कि क्या चीजें हैं वहां पे, है ना। तो इमोशंस को मैनेज करें और बच्चों को भी इसके काबिल बनाएं। और कई बार क्या होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग बात करते हैं, है ना, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिन पे कई बार के हम कर जाते हैं और हमें फिर पछताना ही पड़ता है। आप देखिएगा कहीं पे भी गुस्से का अंत पछताने से ही होता है। कहीं पे भी आपने गुस्से में किसी को भी कुछ बोला हो, कोई भी डिसीजन लिया हो, तो उसका अंत पछताना ही होता है। तो ये अपने बच्चों के अंदर भी हम लोग को इम्पार्ट करना है ना, कि बेटा इतना गुस्सा नहीं होना है ना। लेट द थिंग्स एंड टेक द थिंग्स एज इट इज कमिंग टू अस। यू कैन नॉट कस्टमाइज द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यू, कि वो मुझसे ऐसा बोले, उसने ऐसा क्यों बोला। आधे से ज्यादा परेशानी की वजह तो यही है, उसने ऐसा क्यों बोला, अरे उसका सेंटेंस, ही इज गोइंग टू फॉर्म दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, अब वो भी आप डिसाइड कर लोगे, तो इट इज नॉट गुड। इसलिए यही सारी चीजें हैं, हम लोग बात करते हैं हमेशा इमोशनली स्ट्रांग रहने की। कहाँ बोलना है, 2.5 साल की उम्र में बच्चा बोलना शुरू कर देता है, लेकिन 60 साल का भी आदमी ये नहीं जानता है कि क्या बोलना है। होता है, यू हैव ऑब्जर्व, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कब शांत रहना है ना। बोलना और क्या बोलना, कैसे बोलना, इस सब में बहुत अंतर है ना। तो इट इज अबाउट मैनेजिंग द इमोशंस। वन इज सपोज्ड टू मैनेज ऑलवेज हिज और हर इमोशंस। Here are some pointers. Let it flip. एक बार आप लोग इस सब चीजों को बोलेंगे एंड इसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। प्लीज कौन, प्लीज मैम, Here are some pointers to get you started. Take a look at the impact of your emotions. Intense emotions aren't all bad. Aim your regulation, not repression. Identify what you're feeling. Accept your emotions, all of them. Keep a mood journal. Take a deep breath. Know when to express yourself. Give yourself some space. It is really happening with us कि हम लोग कई बार बहुत जल्दी में जवाब देने के रहते हैं, और उस जवाब देने की जल्दी में बहुत सारी चीजें खराब हो जाती। और ना करने का एक और तरीका है, डिले द डिसीजन। You know, whenever you visit, I don't think so you all have faced this kind of situation or not. कहीं पे भी HR आपका रिज्यूमे लेते हैं तो we'll tell you about that. They have denied any companies if they have taken your resume and asked you, we'll get back to you soon. अगर वो soon नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि this is a way sometimes बहुत सारी चीजों को नहीं करना होता है। ये प्रोफेशनली भी यूज किया जाता है, पर्सनली भी यूज किया जाता है। जैसे आप लोग भी घर में यूज करते हैं, मम्मी यूज करती है, पापा से पूछ के बताएंगे। बेटा आपके पेरेंट्स भी यूज करते रहे होंगे कि रुकिए पापा से पूछ के बताएंगे, तो वो डिले हो रहा है, तो एक तरह का वो भी डिनाई करना होता है। कई बार ऐसा होता है, मैं नहीं कहता सब केसेस में होता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें हैं कुछ। तो EQ पे वर्क करना इट इज रियली इम्पोर्टेंट। और
जब हम EQ पे वर्क कर लेंगे ना, तो we'll be able to have good interpersonal relationship. We'll have good communication skills. Communication skills to not to only say something, it's about to listen also. If you are not giving ample time someone to speak in front of you, it means you are speaking just only. So that is not considered as a good communication. So always be a good listener, always, and respond to that particular things. It is, and we have to impart this in our students. Whatever we are talking about here, that is in response to how we are going to make them words. बच्चों को कैसे सिखाएंगे ये चीजें, इस क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं. ये कुछ, these are also some kind of tips जब हम emotions को अपने manage करें, है ना? So many things are there. We have talked about these things also. To take a break. और ये भी बीत जाएगा, है ना? Visualize, breathe, nurture, self-compassion, and write something. Here, it's about the emotions. You all can see what you do, what you think, and how you feel. Always, you know, the things which are around us, वो हमारे body languages में भी दिखती है, कहीं पे भी. Body languages literally आप लोग देखेंगे कौन कितना stressed है. If you are close to that particular, even in voice also you can recognize. Even it happens with mothers especially. आप अपनी mother से और अपने father से मुझे नहीं लगता है कि बहुत देर तक आपको छुपा पाएंगे कि आप stressed हैं या किस mood में हैं या upset हैं. ये चीजें होती हैं आपके आसपास. कैसे कोप करना है ना? ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं कि हम लोग इमोशंस से कैसे कोप करें. समटाइम्स होता है ना कि वी आर हैविंग वेरी नियर एंड डियर वर्ड्स अराउंड अस. हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं और कोई एक सेंटेंस बोल देता है और हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है. वो हम जानते हैं, है ना? तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा पता है बहुत सारी सुसाइड की टेंडेंसी पता है क्यों हो रही है. सुसाइड की टेंडेंसी इसलिए आ रही है बहुत ज्यादा. साइकोलॉजिकल स्टडीज में मैं पढ़ रहा था. क्या होता है ना कि जो आप भी अपने साथ अभी महसूस करेंगे, मैं बताऊंगा. आपके जो स्कूल फ्रेंड होते हैं ना, उसके बाद कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, उसके बाद आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स होते हैं जहां पे आप काम करते हैं, वैसी जगहों पर बहुत सारे लोग होते हैं. बट सबसे जो क्लोज वंस होते हैं वो आपके स्कूल वाले फ्रेंड्स होते हैं. उनके साथ आपका सब कुछ बताने का, सारी चीजें, क्योंकि आपने सेम टाइम पे टीनेजर्स का जो टाइम है ना, प्यूबर्टी की एज, ये सब आप लोगों ने उनके साथ बिताई है. बहुत सारी चीजें आपने डिस्कस की. भले कहीं दुनिया आ जाती है, कहीं नहीं आती. अपने इमोशंस को अगर किसी के साथ आप अच्छे से शेयर कर ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल कम टू द कंक्लूजन. तो दोस्त ना होना, अब जो वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है, सुसाइड की टेंडेंसी आना, ये सब इसी वजह से आ रही है कि लोगों उनके पास उनसे बात नहीं होती है जो उनके बहुत करीबी होते हैं, जिनसे वो सारी चीज शेयर कर पाते हैं. EQ बढ़ाने के कुछ तरीके ये आर्टिकल है. I have just compiled with that. Can anyone please read it for us? Please, who can? कौन पढ़ देगा इसको please? आज ही please. EQ बढ़ाने के 5 पावरफुल तरीके. पहला, अपने इमोशंस पर ध्यान देना शुरू करें. जब भी आप किसी इमोशन में हो तो उसे पहचानने की शुरुआत करें और अपने आप से बातचीत करते हुए उसके लिए एक नाम की तलाश करें, जैसे गुस्सा, जिज्ञासा, बोरियत, खुशी, उदासी, डर, प्यार, घृणा, गर्व, शर्म, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, इंसल्ट आदि. सबक खुद को पहचानें.
दूसरा, अपने व्यवहार पर ध्यान दें। इमोशंस पर ध्यान देने के साथ इस बात पर भी ध्यान देना शुरू करें कि किसी विशेष स्थिति में आप कैसे व्यवहार करते हैं, किन चीजों से आपको गुस्सा आता है, कौन सी बात आपको खुशी देती है इत्यादि। इससे सब सेल्फ अवेयरनेस वी हैव टॉक्ड अबाउट ना। हाँ, है ना? इससे हमें सबक मिलता है सिचुएशंस रिएक्शन स्टडी करें। तीसरा, अपने खुद के ओपिनियन को चैलेंज करें। एकांत में बैठकर विचार करें कि किसी मुद्दे पर आपके विचार या ओपिनियन क्या है और वैसे ओपिनियन आपने क्यों बनाए हैं, दूसरे और क्या ओपिनियन हो सकते हैं। इस तरह का चिंतन मनन ही आपके जीवन को अमीर बनाता है। सबक, अपने आप को चैलेंज करें। I'll ask someone else too because then कुछ और lines हैं. Who can? Please. हिंदी टीचर्स? हाँ सर आइए. चौथा, दूसरों से फीडबैक लें। अपने व्यवहार के बारे में अपने परिवारजनों, दोस्तों, सहकर्मियों इत्यादि से फीडबैक लें और उनसे पूछें कि उन्हें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा इत्यादि। अपने व्यवहार पर कार्य करें। सबक, दूसरों से सत्य जानें। पांचवा, लिटरेचर या साहित्य पढ़ें। किसी भी भाषा में लिखा साहित्य आपकी पर्सनैलिटी को निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है। कई सारे कैरेक्टर्स वाले उपन्यास, नॉवेल, स्टोरीज आदि को पढ़ने से आप अपने से अलग लोगों के प्रति ओपन माइंडेड हो जाते हैं। नफरत कम होने लगती है और समझ बढ़ती है। उसी मैच्योरिटी को EQ कहते हैं। सब खूब पढ़ें, दुनिया के अलग रंग देखें। तो आज का करियर फंडा यह है कि दूसरों के इमोशंस को समझना, सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना या नहीं करना और मुस्कुरा के चुप रह जाना, ये हाई EQ की निशानी है। करके दिखाएंगे। लिटरली ऐसा होता है। लिटरली ये लास्ट वाली लाइन एक बार फिर से सब लोग पढ़ेंगे। ये जो ये है ना सबक, पढ़े। अच्छा, वो बचपन में अच्छा लगता था ना कि मैं इसका बदला लूंगा और बच्चे ऐसा करते हैं। अराउंड मेनी स्टूडेंट्स आते हैं कि अपना बदला लूंगा। और पिक्चर में भी यही होता था कि लाला में उसकी माँ के कंगन गिरवी रखते थे। हमने पिक्चर भी वैसी देखी थी और लाला से वो माँ के कंगन छुड़ा के लाते हैं, है ना। हमारी मूवी में भी ऐसा ही होता था। थोड़ा सा और इसके बारे में है। Ultimately, these life skills what we have discussed, it is key to success. मतलब अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करेंगे तो दो चीजें हैं, वन इज IQ एंड वन इज EQ। ये दोनों चीजें अगर एक इंसान के अंदर होती है तो ये आदमी सक्सेस को अचीव करने के लिए आसान होगा। ये कुछ लाइफ स्किल जो है CBSE ने कुछ बुक्स हैं, ये CBSE की साइट पे है, ये मैनुअल है जो क्लास 6 के लिए दूसरी है और क्लास 7 के लिए ऐसे डिफरेंट कुछ मैनुअल्स हैं लाइफ स्किल्स के बारे में। शूटिंग हो रहा है हेलीकॉप्टर, आप कैमरा अपग्रेडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी और कुछ देख पा रहे हैं। इमेज बहुत कुछ कह रही है। इमेज क्या कह रही है
बस ये। क्या कह रही है बस? जॉब के प्रोस्पेक्ट में कुछ कह रही है क्या इमेज? हाँ, फर्स्ट वन वाज द रिस्की स्टेट। Anyone else? हाँ जी। Instead of manpower, technology is used. और कुछ? Manpower converted into AI technology. हाँ, AI में भी आ गया। और कुछ? बस। मैम क्या? कोई टेक्नोलॉजी बता रही है, टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी और लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, दिख नहीं रहे। इसमें दो लोग होंगे। आप इमेज में देखिए, एक हेलीकॉप्टर चला रहा पायलट भी होगा और एक कैमरा पकड़े हुए इंसान भी है ना? है ना? तो ये दो लोगों की जॉब जो है वो 2009 तक थी, 19 में खत्म हो गई। Isn't it? मतलब it is all about the updations. Nowadays technology, artificial intelligence is taking place. ये सारी चीजें अगर आप अपने अंदर नई स्किल्स नहीं एक्वायर करेंगे तो you all will not be able to future ready. फ्यूचर रेडी होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को अपडेट करते रहें इन एनी टर्म्स। Yes, you all are having assessment, can you do that? Thank you, sir. Recently, I have given you the assessment questionnaire. You all are requested to fill it properly and submit in appropriate time.
साढ़े 4 हो गया आधे घंटा कर दिए
जाना है 10 रुपया फाइन है देंगे You should do it as soon as possible. It is going to distribute the feedback form, and you all are free to write the opinion from us. If you have some points or if you want to comment, you can use the fact sheet. आप सभी टीचर्स अगर अपना कमेंट्स हम लोगों के लिए देना चाहते हैं तो आप पीछे वाली शीट जो व्हाइट है उसमें आप दे सकते हैं। और सभी टीचर्स ये फीडबैक फॉर्म जितनी जल्दी हो उसे भरकर सबमिट करें। The name of the topic is life skill. The name of RP is Navneet Kumar Singh and Manindu Kumar Mishra. These are the names of RPs. Resource person's name is No, it is not mandatory to write somewhere. If you want to write backside something about that, you can write. Not mandatory. If you have completed, then a last activity is waiting for you. There is no any paper activity. It is just fresh of mind. First, there will be confusion. First, MCQ or this one, the feedback. Not a sequence like that. Do whatever you want first. In collection, sir, while collecting. The feedback he has to collect and that MCQ is checked by other one. You check and you go on. Feedback. We just submit the feedback. Feedback is different and questionnaire is different. Two separate copies is already submitted to you. आप फीडबैक में अपना टेक अवे थोड़ा सा लिख सकते हो तो प्लीज लिखें, हम लोग को अच्छा लगेगा. बैक साइड ऑफ दैट
कोर्स कर सकते हैं, कितना 5.5 घंटे का कंप्लीट हुआ 5 घंटा तो 5 घंटा 5 दिन 25 मिनट और मैनेज के लिए बीच में स्किप किए थे क्या? Don't take so much time because an activity is already waiting for you. If you have completed the feedback form, please give it to me. Feedback form. Only
name of the story. It is based on your knowledge. आप अपने पसंद से किसी स्टोरी का नाम लिख सकते हैं. नेम ऑफ द कैरेक्टर्स, उस स्टोरी में किस कैरेक्टर के बारे में बताया गया है वो आपको लिखना है. लाइफ स्किल्स डिस्प्ले, उस स्टोरी से अभी जो लाइफ स्किल्स के बारे में बताया गया कौन सी स्किल्स वो डिस्प्ले करता है. नो सर. The standard time for this activity is 5 minutes. We have given to both activities. Because we have continuously heard about sympathy. What is empathy? Once you all have seen one video also, that shoe polishing one. You all have gone through that video. It also shows that what one is feeling for other. Like we all are having maid and workers around us. But you know, sometimes we ask students, children around us, कि बेटा रिस्पेक्ट करनी है उनकी, उनको बहुत अच्छे से बात करना है, सारी चीजें करनी है. You all are supposed to value those things. But they continuously don't listen to us. हम कहते हैं तो वो मानते हैं, समझते हैं. But अगर literally if we want our children, our students to understand and value them, तो एक दिन मैं आप सभी से कहूँगा, just one day ask them to do the work what your mates do, isn't it? तो वो गंदा करने से पहले वहाँ पे ये जरूर सोचेंगे कि आंटी को साफ करने में कितनी मेहनत लगती है, या अंकल को साफ करने में कितनी मेहनत लगती है, या
मेरी मदर को काम करने में कितनी मेहनत लगती है। ऑल दीज थिंग्स आर अबाउट द एम्पैथी टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। We'll move ahead. In this, like emotional skills we are talking about. Emotional skills refer to the ability to recognize and express, regulate your emotions. देखिए, it is like we feel sometimes that we are emotionally strong, but sometimes we only pretend to be strong. तो pretend करना and होना, that is other thing, two things are there. So ultimately we need to regulate our emotions also. That with the examples I have told you, if someone will become a district magistrate and he say like this कि मैं गरीबी मिटा दूंगा, तो I think so that particular is emotional with that period of time. और सबसे बड़ी गलती हमारे साथ कभी ऐसी होती है कि जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, मीन्स वी आर वेरी मच हैप्पी फॉर एनीथिंग। ऑन दैट पीरियड ऑफ टाइम हमें कुछ बोलने से बचना चाहिए, और जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हों तो भी हमें बोलने से बचना चाहिए ऑन दैट पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज व्हेनेवर लाइक ऑलवेज, और पता है क्या होता है, समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ दीज थिंग्स। सम पीपल आर अराउंड यू, यू नो, पीपल यूज्ड टू टीज देम। उनको ऐसा बोल दो, अभी देखना वो गर्म हो गया, ऐसा करेंगे। तो इफ व्हाट यू आर गोइंग टू से, that also if people are going to do or think about it, so it's not like that. आप कैसा behave करेंगे on that particular situation, ये आप decide करें। तो ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस होता है कि आप ये समझ पा रहे हैं कि आप situations में कैसे हैंडल करेंगे। I'm just telling you, it's about personal relationship also. आप आर्गुमेंट में जब भी आते हैं तो उसके एक वर्ड बोलने पे आप 5 बोल जाते हैं, और बहुत पुरानी बात निकाल के लाके डाल देते हैं। आर्गुमेंट्स में हमेशा ऐसा होता है। अगर मैंने आपको बताया पहले भी कि इन सब में अगर कहीं पे भी आपके शांत रहने से आपका रिलेशनशिप बच रहा है, किसी भी रिलेशनशिप, I'm talking about personal relationship also and I'm talking about professional relationship also, होता है हम हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं आती। लाइक पीपल आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट वी थिंक, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, या आप ही सोचते हैं, और वो अपना सोचते हैं कि हमें ये अच्छा लगता है कि आप ये करके दो, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा तरीका होता है कि टेक अ पॉज ऑफ 100 सेकेंड। इमोशंस जो होते हैं ना, पानी के अंदर भी बहुत सारी गंदगी अगर होती है, बहुत तेज वो मूवमेंट हो रहा होता है, तो यू विल नॉट एबल टू सी व्हाट इज बिलो दैट। बट थोड़ी देर वो अगर स्थिर हो जाए तो आप देख पाएंगे क्लियरली कि क्या चीजें हैं वहां पे, है ना। तो इमोशंस को मैनेज करें और बच्चों को भी इसके काबिल बनाएं। और कई बार क्या होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग बात करते हैं, है ना, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिन पे कई बार के हम कर जाते हैं और हमें फिर पछताना ही पड़ता है। आप देखिएगा कहीं पे भी गुस्से का अंत पछताने से ही होता है। कहीं पे भी आपने गुस्से में किसी को भी कुछ बोला हो, कोई भी डिसीजन लिया हो, तो उसका अंत पछताना ही होता है। तो ये अपने बच्चों के अंदर भी हम लोग को इम्पार्ट करना है ना, कि बेटा इतना गुस्सा नहीं होना है ना। लेट द थिंग्स एंड टेक द थिंग्स एज इट इज कमिंग टू अस। यू कैन नॉट कस्टमाइज द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यू, कि वो मुझसे ऐसा बोले, उसने ऐसा क्यों बोला। आधे से ज्यादा परेशानी की वजह तो यही है, उसने ऐसा क्यों बोला। अरे उसका सेंटेंस
he is going to form that particular sentence. अब वो भी आप डिसाइड कर लोगे तो इट इज नॉट गुड। इसलिए यही सारी चीजें हैं, हम लोग बात करते हैं हमेशा इमोशनली स्ट्रांग रहने की। कहाँ बोलना है, 2.5 साल की उम्र में बच्चा बोलना शुरू कर देता है, लेकिन 60 साल का भी आदमी ये नहीं जानता है कि क्या बोलना है। होता है, यू हैव ऑब्जर्व, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कब शांत रहना है ना। बोलना और क्या बोलना, कैसे बोलना, इस सब में बहुत अंतर है ना। तो इट इज अबाउट मैनेजिंग द इमोशंस। वन इज सपोज टू मैनेज ऑलवेज हिज और हर इमोशंस। हियर आर सम पॉइंटर्स, लेट इज फ्लिप। एक बार आप लोग इस सब चीजों को बोलेंगे एंड इसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। प्लीज कौन, प्लीज मैम Here are some pointers to get you started. Take a look at the impact of your emotions. Intense emotions aren't all bad. Aim your regulation, not repression. Identify what you're feeling. Accept your emotions, all of them. Keep a mood journal. Keep a mood journal. Take a deep breath. Know when to express yourself. Give yourself some space. It is really happening with us कि हम लोग कई बार बहुत जल्दी में जवाब देने के रहते हैं, और उस जवाब देने की जल्दी में बहुत सारी चीजें खराब हो जाती। और ना करने का एक और तरीका है, डिले का डिस्ट्रिक्ट। You know, whenever you visit, I don't think so you all have faced this kind of situation or not. कहीं पे भी एचआर आपका रिज्यूमे लेते हैं तो विल टेल यू अबाउट दैट। They have denied any companies if they have taken a resume and asked you, we'll get back to you soon. अगर वो सुन नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि they are, this is a way sometimes, बहुत सारी चीजों को नहीं करना होता है। ये प्रोफेशनली भी यूज किया जाता है, पर्सनली भी यूज किया जाता है। जैसे आप लोग भी घर में यूज करते हैं, मम्मी यूज करती है, पापा से पूछ के बताएंगे बेटा, आपके पेरेंट्स भी यूज करते रहे होंगे कि रुकिए पापा से पूछ के बताएंगे, तो वो डिले हो रहा है, तो एक तरह का वो भी डिनाई करना होता है कहीं ना कई बार ऐसा होता है। मैं नहीं कहता सब केसेस में होता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें हैं कुछ। तो EQ पे वर्क करना इट इज रियली इंपॉर्टेंट, और जब हम EQ पे वर्क कर लेंगे ना तो we'll be able to have good interpersonal relationship. We'll have good communication skills. Communication skills to not to only say something, it's about to listen also. If you're not giving ample time someone to speak in front of you, it means you are speaking just only. So that is not considered as a good communication. So always be a good listener, always, and respond to that particular things. It is, and we have to impart this in our students. Whatever we are talking about here, that is in respond to how we are going to make them words. बच्चों को कैसे सिखाएंगे ये चीजें, इस क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं। ये कुछ, these are also some kind of tips जब हम इमोशंस को अपने मैनेज करें, है ना। So many things are there, we have talked about these things also, to take a break, और ये भी बीत जाएगा, है ना। Visualize, breathe, nurture, self-compassion and write something. Here, it's about the emotions. You all can see what you do, what you think, and how you feel. Always, you know, the things which are around us, वो हमारे body languages में भी दिखती है, कहीं पे भी। Body languages literally आप लोग देखेंगे कौन कितना स्ट्रेस है,
if you are close to that particular, even in voice also you can recognize, even it happens with mothers especially. आप अपनी मदर से और अपने फादर से मुझे नहीं लगता है कि बहुत देर तक आपको छुपा पाएंगे कि आप स्ट्रेस्ड हैं या किस मूड में हैं या अपसेट हैं। ये चीजें होती हैं आपके आसपास। कैसे कोप करना है ना, ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं कि हम लोग इमोशंस से कैसे कोप करें। समटाइम्स होता है ना कि वी आर हैविंग वेरी नियर एंड डियर वर्ड्स अराउंड अस। हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं और कोई एक सेंटेंस बोल देता है और हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, वो हम जानते हैं, है ना। तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा पता है बहुत सारी सुसाइड की टेंडेंसी पता है क्यों हो रही है। सुसाइड की टेंडेंसी इसलिए आ रही है बहुत ज्यादा, साइकोलॉजिकल स्टडीज में मैं पढ़ रहा था। क्या होता है ना कि जो आप भी अपने साथ अभी महसूस करेंगे, मैं बताऊंगा, आपके जो स्कूल फ्रेंड होते हैं ना, उसके बाद कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, उसके बाद आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स होते हैं जहां पे आप काम करते हैं, वैसी जगहों पर बहुत सारे लोग होते हैं। बट सबसे जो क्लोज वंस होते हैं वो आपके स्कूल वाले फ्रेंड्स होते हैं। उनके साथ आपका सब कुछ बताने का, सारी चीजें, क्योंकि आपने सेम टाइम पे टीनेजर्स का जो टाइम है ना, प्यूबर्टी की एज, ये सब आप लोगों ने उनके साथ बिताई है, बहुत सारी चीजें आपने डिस्कस की। भले कहीं दुनिया आ जाती है, कहीं नहीं आती। अपने इमोशंस को अगर किसी के साथ आप अच्छे से शेयर कर ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल कम टू द कंक्लूजन। तो दोस्त ना होना, अब जो वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है, सोसाइटी की टेंडेंसी आना, ये सब इसी वजह से आ रही है कि लोगों उनके पास उनसे बात नहीं होती है जो उनके बहुत करीबी होते हैं, जिनसे वो सारी चीज शेयर कर रहा है। EQ बढ़ाने के कुछ तरीके के आर्टिकल है, I just compiled with that. Can anyone please read it for us? Please, who can? कौन पढ़ देगा इसको प्लीज? आज ही प्लीज। EQ बढ़ाने के 5 पावरफुल तरीके। पहला, अपने इमोशंस पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी आप किसी इमोशन में हो तो उसे पहचानने की शुरुआत करें और अपने आप से बातचीत करते हुए उसके लिए एक नाम की तलाश करें, जैसे गुस्सा, जिज्ञासा, बोरियत, खुशी, उदासी, डर, प्यार, घृणा, गर्व, शर्म, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, इंसल्ट आदि। सबक खुद को पहचाने। दूसरा, अपने व्यवहार पर ध्यान दें। इमोशंस पर ध्यान देने के साथ इस बात पर भी ध्यान देना शुरू करें कि किसी विशेष स्थिति में आप कैसे व्यवहार करते हैं, किन चीजों से आपको गुस्सा आता है, कौन सी बात आपको खुशी देती है, इत्यादि। इससे सब सेल्फ अवेयरनेस वी हैव टॉक्ड अबाउट ना। हाँ, इससे हमें सबक मिलता है, सिचुएशंस, रिएक्शन स्टडी करें। तीसरा, अपने खुद के ओपिनियन को चैलेंज करें। एकांत में बैठकर विचार करें कि किसी मुद्दे पर आपके विचार या ओपिनियन क्या है और वैसे ओपिनियन आपने क्यों बनाए हैं, दूसरे और क्या ओपिनियन हो सकते हैं। इस तरह का चिंतन मनन ही आपके जीवन को अमीर बनाता है। सबक, अपने आप को चैलेंज करें। I'll ask someone else too because हैं कुछ और lines हैं। Who can? Please. हिंदी टीचर्स? हाँ सर आइए। चौथा, दूसरों से फीडबैक लें। अपने व्यवहार के बारे में अपने परिवारजनों, दोस्तों, सहकर्मियों इत्यादि से फीडबैक लें और उनसे पूछें कि उन्हें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा इत्यादि। अपने व्यवहार पर कार्य करें। सबक, दूसरों से सत्य जानें। 5वां,
लिटरेचर या साहित्य पढ़ें। किसी भी भाषा में लिखा साहित्य आपकी पर्सनैलिटी को निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है। कई सारे कैरेक्टर्स वाले उपन्यास, नॉवेल, स्टोरीज आदि को पढ़ने से आप अपने से अलग लोगों के प्रति ओपन माइंडेड हो जाते हैं। नफरत कम होने लगती है और समझ बढ़ती है। उसी मैच्योरिटी को EQ कहते हैं। समझ खूब पढ़ें, दुनिया के अलग रंग देखें। तो आज का करियर फंडा यह है कि दूसरों के इमोशंस को समझना, सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना या नहीं करना और मुस्कुरा के चुप रह जाना, ये हाई EQ की निशानी है। करके दिखाएंगे। लिटरली ऐसा होता है। लिटरली ये लास्ट वाली लाइन एक बार फिर से सब लोग पढ़ेंगे। ये है ना सबक पढ़े। अच्छा, वो बचपन में अच्छा लगता था ना कि मैं इसका बदला लूंगा और बच्चे ऐसा करते हैं। मेरी स्टूडेंट्स आते हैं कि अपना बदला लूंगा। और पिक्चर में भी यही होता था कि लाला में उसकी माँ के कंगन गिरवी रखते थे। हमने पिक्चर भी वैसे देखी है और लाला से वो माँ के कंगन छुड़ा के लाते हैं, है ना। हमारी मूवी में भी ऐसा ही होता था। थोड़ा सा और इसके बारे में है। Ultimately, these life skills what we have discussed, it is key to success. मतलब अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करेंगे तो दो चीजें हैं, वन इज IQ एंड वन इज EQ। ये दोनों चीजें अगर एक इंसान के अंदर होती है तो ये आदमी सक्सेस को अचीव करने के लिए आसान होगा। ये कुछ लाइफ स्किल जो है CBSE ने कुछ बुक्स हैं, ये CBSE की साइट पे है, ये मैनुअल है जो क्लास 6 के लिए दूसरी है और क्लास 7 के लिए ऐसे डिफरेंट कुछ मैनुअल्स हैं लाइफ स्किल्स के बारे में। ये डिफरेंट क्लासेस के लिए अलग अलग मैनुअल्स हैं दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द CBSE। दैट्स ऑल इन द PPT। सर एक मिनट बस सर बताते हैं। इमेज देख पा रहे हैं? इसको देख के जो समझ पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं आप? पहले जो शूटिंग हो रहा है हेलीकॉप्टर, आप कैमरा अपग्रेडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी और कुछ देख पा रहे हैं? इमेज बहुत कुछ कह रही है। इमेज क्या कह रही है बस ये क्या कह रही है बस जॉब के प्रोस्पेक्ट में कुछ कह रही है क्या इमेज? हाँ, फर्स्ट वन वाज अ रिस्की स्टेट।
Anyone else? Anji. Instead of manpower, technology is used. All good? Manpower converted into AI technology. AI में भी आ गया. All good? बस. मैम क्या? कोई टेक्नोलॉजी बता रही है आपने काफी ज्यादा अच्छी और लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं सब्जेक्ट में. Ma'am, please come or say any participant from your group. Don't take much more time. Please come here. It is, I'm requesting to the group member or group leader to send a participant. Please come. Ma'am, please. Yes, please come, ma'am. Thank you. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Excellent, ma'am. Very nice. Any other? Next one. Please come. You can. As a part of life skill. So please. क्या हुआ मैडम? जो मिला चीफ जो मिला Please be silent. La 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 la. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे. तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे. मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा. क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया.
गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। Excellent, sir. Next. Please come, ma'am, our teacher. And don't take much more time. Yes. Yes, if you require, I can sign. हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम ही गार्गी अनुसुईया और हम ही चाणक्य बने। हम ही गार्गी अनुसुईया और हम ही चाणक्य बने। हम ही विश्वामित्र बने और हम ही गौरव श्रेष्ठ बने। हम किसी से कम तो नहीं, इतिहास बदल देंगे। हम किसी से कम तो नहीं, इतिहास बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो चाहे नारायण। गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो चाहे नारायण। यही सिखाते गुरु ग्रंथ, बाइबिल, कुरान और रामायण। जला जंग की दीप अंधेरी राह बदल देंगे। जला जंग का दीप अंधेरी रात बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। Well done, sir. But just I am noting a point. Whatever I have given to you, the sheet, some different activities are there. So please go through it and please come here. First of all, give a best clap for yourself. The clap is for the participants, those who have participated. Another clap that is for your performance. Please do it. Thank you. And please come next participant. Yes, ma'am. My activity name is a role play when you feel very sad when you have not submitted your file on time. और ऐसा मेरे साथ होता है, हुआ भी है। प्रिंसिपल का नोटिस आया है कि सबको सबमिट करना है फर्स्ट वीक में लेसन प्लान, ठीक है। मैं स्टाफ रूम में हूँ। मैडम आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? शोभा मैम आप लोग कहाँ जा रहे हैं? फाइल सबमिट करने, लेसन प्लान सबमिट करना चाह रहे हैं। मुझे तो नहीं पता। हाँ करना पड़ता है फर्स्ट वीक में, आपको नहीं पता? अरे मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, मैं तो भूल गई। तो फिर सिस्टर गुस्सा होंगी। अरे मैं जल्दी से अभी लिख देती हूँ, आज तो 6 है ना, 7 डेज होते हैं ना, 7 डेज का एक वीक होता है, आज तो 6 है, मैं लिख लेती हूँ। लिखे जा रहे। ओह गॉड गड़बड़ हो गया मैडम, एकदम है क्या? जल्दी से एकदम लगा रही हूँ, गलत हो गया, फिर क्या करूँ? कट किया, अब क्या करूँ मैडम, क्या करूँ? कोई बात नहीं मैडम, आप सिस्टर से बोल दीजिएगा। मैडम ने बोला कोई बात नहीं, आप बोल दीजिएगा, कल जमा कर देंगे। फिर
बोलने की तो हिम्मत नहीं हुई, नहीं है। स्ट्रेस में, पूरे स्ट्रेस में क्या करें, बहुत गुस्सा हो गया। और ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैंने ज्वाइन किया, उसी मंथ हुआ था। और ज्यादा डर लग रहा, नई ज्वाइनिंग है, क्या होगा। आफ्टर ऑल एक दिन बाद गए, जमा किया सिस्टर के पास, फिर उन्होंने बुलाया तो बोले मैडम ये आपका फर्स्ट मंथ है, इसीलिए मैं कंसीडर कर रही हूँ, अदरवाइज ये आपको फर्स्ट वीक में हर हालत में जमा करना है। और मैं स्ट्रेस में उस दिन मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था जब घर गई तो ऐसा होता है जब भी स्ट्रेस में होता है। और जब आप क्या फाइल जमा नहीं कर पाते टाइम पर, कोई भी रिटर्न वर्क होता है तो ज्यादा टेंशन इसलिए होती है क्योंकि वो रिटर्न वर्क है और वो उस टाइम पर जमा आपको करना है, क्योंकि आगे की कार्रवाई, आगे की प्रोसेसिंग उसी से स्टार्ट होगी। मैं ऐसे रोल प्ले कर पाई। थैंक यू। नहीं मैम, स्ट्रेस पे खाना पीना नहीं छोड़ना है। Thank you, ma'am. This is a role play. We know that it's a part of our life. Role play is the best method because everybody possesses a best quality. Whether, suppose you can take the example of music. If beatings is there, your body vibrates according to the rhythm of music. That is a psychological nature. In the same way, everybody possesses a good quality of an actor. So, it's the best method to impart the knowledge. Next one, I'm inviting you, please come here as soon as possible. Thank you, ma'am. Any Amitabh Bachchans can also come. I have got the topic 5 positive things attitude of MS Dhoni. MS Dhoni, as we all know, he is born in Ranchi in 1981. From childhood he was very much interested in sports, especially in cricket. He was from a middle class family, and then most of his leisure time he used to spend in the playground. And then slowly he joined the group, and then he became player in different places. As he grew up, responsibility made him to work in a railway, but yet he had the passion towards cricket. And finally he joins, and he has become so famous in cricket that he is known as best captain. Captain too. Yes. So 5 qualities. Yes. And in his time, his team also has won, and he is the pride of India. Yes. Thank you, ma'am. And now we are on the verge of the completion of this training program. We know that we have gathered here to maintain the quorum of this CBSE program. Finally, the session is going to end with a photography session, so you all are requested to be ready for that session. And this program designed for your inculcating the values of real life, what we have faced or what we have gathered in the form of different types of skills. And on the behalf of it, some traits, methodologies and methods are there. We have to utilize in these all things in our day-to-day life. Not only it is important for the classroom, but also in our social or professional life. So, in this way, I am very thankful to this St. Joseph family that have organized this beautiful program on the behalf of it, on the CBSE. Thank you. Have a good day. Now we move ahead for the photograph, group photograph. We'll go outside. छोड़ दीजिए, हो गया।
Okay.